कौम की सोच। This program is brought to you by अपना फोन निकालें और डायल करें 11133987 लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, हैप्पीनेस लिव्स हियर। हर मुश्किल में आपका बैकअप सिर्फ उसाका बैटरीज। अब रहो यंग एंड ब्राइट हमेशा विद निसा कोलेजन बूस्टर। वेलकम बैक एवरीबॉडी आफ्टर द ब्रेक। अभी कुछ हम बात करने लगे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की कि क्या हलचल इस वक्त जारी है मुल्की सियासत में। इसमें जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी है बिलावल भुट्टो जरदारी, वो अब ये कहते हैं कि जनरल ज़िया की वजह से पंजाब पर मुसल्लत लोग हमसे पूछते हैं कि हम लाहौर क्यों आए हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्होंने जो है वो रेस किया और फिर उन्होंने कहा कि इन्हें उनके घर में घुसकर मारेंगे। इन्हें 127 लाहौर में वर्कर कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे वो, और उसमें उन्होंने ये कहा कि लाहौर किसी बिजनेसमैन का है ना किसी खिलाड़ी का, लाहौर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का है। हम इलेक्शन लड़ने के लिए कहीं और नहीं अवाम की तरफ देख रहे हैं। लाहौर से अपना रिश्ता जोड़ने के लिए वापस आया हूं। और उन्होंने फिर ये भी कहा कि 90 की तकसीम और फिर नफरत की सियासत को हम हमेशा के लिए दफन कर चुके हैं, हम उसको रिजेक्ट करते हैं। और ये उन्होंने अपने पिछले जो उनके खिताब हमारे सामने आए उन्होंने यही कहा। बिलावल साहब को अगर याद आता 16 माह पहले इनका साथ देने से पहले अगर इनको याद आता तो शायद पीपल्स पार्टी की भी अभी पोजीशन बहुत ज्यादा बेहतर होती लाहौर के अंदर। मतलब वो कारपेट बिछा के, तो कारपेट से क्या इस्तकबाल होता है वैसे, लेकिन मैं शायद उस कारपेट के ऊपर उस जगह के अवाम भी होते जो कि उनका इस्तकबाल कर रहे होते अगर वो ये सोचते पहले। अवाम के पास अगर जा रहे हैं ना तो अवाम फिर उनको कहते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल वो एंटी PMLN अगर कोई नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं तो उसमें फिर लोग एकदम से उनको पूछते हैं कि फिर आप PDM में क्यों एक साथ आए थे। तो अगर PDM बनाने से पहले ये सोच लिया होता कि हम बाद में जाके अपनी सियासत अलग करेंगे तो फिर शायद थोड़ा बेहतर होता। और इसमें मुनीब या वो घुस के मारेंगे या फिर वो जिस मर्जी तरीके से मारेंगे, लेकिन पहले सोचना चाहिए था कि आपने क्या मारना है। 16 महीने की आपने हुकूमत चलाई है, आपने एक हुकूमत को ओवरथ्रो भी किया है। और बिलावल भुट्टो जरदारी का ये कहना था कि अवाम 8 फरवरी को तीर पर ठप्पा लगाएं, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। फिर लाहौर में मुफ्त इलाज की भी उन्होंने कहा कि हम सहूलियात फराहम करेंगे। लाहौर वालों को लंदन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो अमेजिंग हो जाएगा। और पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई अगर तो तनख्वाहें दुगनी कर देंगे। वही जो 10 पॉइंट्स उन्होंने पहले भी जिनका जिक्र किया था। और फिर पीपल्स पार्टी 3 नस्लों से गुर्बत और बेरोजगारी का मुकाबला करती आ रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का ये कहना था कि कहाँ लिखा है कि एक ही शख्स को पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार और फिर चौथी बार भी वजीर आजम बनाया जाए, वजीर आजम मुंतखब किया जाए। ये समझते हैं कि हमें मार मार कर डरा सकते हैं, तो ये उनकी गलत फहमी है। तो ये कहते हैं कि हम क्यों आए हैं। मैं ये पूछता हूं कि ये क्यों आए हैं। ये जनरल ज़ियाउल हक की वजह से शहर में मुसल्लत हुए। और ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स और आप कह सकते हैं बोल्ड किस्म के स्टेटमेंट्स सामने हैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी। अब इस पर मजीद बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल मीर साहब। उन्हें खुशामदीद कहते हैं। फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। में सर सुबह ये बता दें कि जिस तरीके से नून लीग परेशान है कि बिलावल साहब लाहौर क्यों आए हैं, तो आप लोग परेशान नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो कराची क्यों आए हैं? देखिए, शहबाज शरीफ साहब कराची पहले भी शिकस्त खा के वापस आए थे जख्म लेके। तो बिलावल साहब लाहौर इसलिए आए हैं कि जिस हल्के से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो मॉडल टाउन उस हल्के में पड़ता है। और 161 से मैं उनका MPA का कैंडिडेट हूँ उनके नीचे। ओरिजिनली आई वाज द कैंडिडेट फॉर NA 127। तो मॉडल टाउन में जिस हल्के के अंदर मॉडल टाउन वाक़या है, अगर आप उनकी छत के ऊपर से नवाज शरीफ साहब के खानदान की किसी भी उन 8 घरों में से किसी भी छत के ऊपर चढ़ के देखें तो पीछे तो गरीब बस्ती है बहार कॉलोनी की, वहाँ पे ना तो साफ पानी है, ना वहाँ पे सेवरेज सिस्टम है, ना वहाँ पे कोई ड्रेनेज सिस्टम है, ना सेहत की सहूलत है और ना ही कोई किसी किस्म। आपको मैं इनवाइट करता हूँ कि आप मेरे साथ बहार कॉलोनी और उसके कैंची चुंगी अमर सद्दू। बल्कि मुझे याद आया, मुझे फैसल साहब याद आया, लास्ट टाइम हमारी बातचीत हो रही थी तो हमने सिंध का टूर प्लान किया था, उसके बाद मैं बीमार हो गया। सर वो पेंडिंग है। अभी आप प्लान करें टूर, ठीक है। और जो शख्स 4 दफा जिसका जो खानदान वजीर आजम रहा हो
اور وہ چھت کے اوپر سے دیکھتا ہو کہ بلکتے بچے گندا پانی پی رہے ہیں. 33 سال سے وہ دیکھ رہے ہیں یہ, اور ان کی پوری کابینہ وہاں سے کتنے یہ سنگ دل لوگ ہیں کہ جو شخص اپنے ہمسائے میں بسنے والی بوڑھی اور جوان خواتین کو بیسک جو فیسلٹیز ہے وہ نہیں دے سکتا. گھٹنے پانی وہاں پہ ہوتا ہے جب برسات ہوتی ہے. وہ شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ملک کی وہ تقدیر بدلے گا. ان سے یہ سوال ان سے پوچھنے کا یہ ہے کہ یہ موٹر وے اور خربوں روپے کی اورنج ٹرین اور اربوں روپے کی یہ میٹرو بس بناتے ہیں, جس میں کہ اربوں روپے کے کمیشن کھا کے یہ ایون فیلڈ بناتے ہیں, یہ وہاں پہ پائپ کیوں نہیں ڈالتے؟ پانی کا, صاف پانی کا پائپ کیوں نہیں ڈالتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی کا پائپ چند ہزار روپے کا ہوتا ہے اور اس میں اس کے ٹھیکے میں ان کو کمیشن کوئی نہیں ملتا. یہ ضیاء الحق کے زمانے میں یہ نواز شریف صاحب گوال منڈی میں ایس پی کے ٹاؤٹ ہوا کرتے تھے, جو بتاتے تھے کہ گوال منڈی میں پیپلز پارٹی کا کون سا ورکر کہاں پہ رہتا ہے. وہاں سے اس کو جنرل جیلانی تک ایکسیس ہوئی. اگر ضیاء الحق کی اس کو جاگ نہ لگی ہوتی تو آج یہ کہیں تھوڑے کوٹ رہا ہوتا, اپنے کسی بیٹھا ہوتا. تو یہ اس وقت بھی ضیاء الحق کے کندھوں پر سوار ہو کر آیا تھا, اور پھر اس کے بعد یہ دوبارہ بھگوڑا ہوا. 10 سال اس نے باہر عیاشی کی, اس کے بعد واپس آیا. اب پھر یہ جیل کے اندر سے جس شخص کو رہا کروا کے اب یہ ایئرپورٹ پہ اترا ہے اور بغیر کسی بجائے کہ جیل میں جاتا, آج یہ دوبارہ ایک کہہ رہا ہے جی کہ میں وزیر اعظم بنوں گا. تو اس کو جو یہ دوبارہ کندھوں پہ سوار ہو کے جو کہہ رہا ہے جی ساڈی گل ہو گئی ہے, اس کو عوام سے بات کرنی چاہیے, کیونکہ پیپلز پارٹی کی لاہور میں عوام سے بات ہو رہی ہے, اس کی کہیں اور بات ہو رہی ہے. جہاں اس کی بات ہو رہی ہے, جن کے کندھوں پر یہ چڑھ کر آ رہا ہے, اس کو کندھوں سے گھسیٹ کے نیچے پٹکیں گے. اور ماڈل ٹاؤن میں جس طرح بلاول صاحب نے کہا, ماڈل ٹاؤن کے 84H کے اندر گھس کے ماریں گے ان کو, وہاں پہ ابرتناک شکست دیں گے اس حلقے میں, اور ہمیشہ کے لیے اس کو لاہور ایئرپورٹ سے روانہ کریں گے 8 فروری کو, تاکہ اس کا قلعہ جو لندن ہے لاہور ٹھیک ہو گیا. تو سر اس کے لیے پھر کیا اسٹریٹجی ڈیزائن کی ہے, اور خاص طور پہ پنجاب میں انتخابی مہم سے لے کر پاکستان پیپلز پارٹی نے دوبارہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ نہیں, ہمارے ساتھ ہی میرے خیال سے لائن ڈراپ ہو گئی ہے, شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے, دوبارہ کنیکٹ پہ ہو رہا ہے, اور انٹرسٹنگ ہے, گھر میں گھس کے ماریں گے. ہمارے پاس ایک شاٹ ہے جی, وہ پلے کرتے ہیں, شہباز شریف صاحب کا ہے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی ہے, کل کا ان کی اسٹیٹمنٹ ہے, وہ ذرا سنتے ہیں بلاول صاحب کی اسٹیٹمنٹ. کسی کاروباری شخص کا لاہور ہے, نہ کسی بزنس فیملی کا لاہور ہے, نہ یہ کسی کھلاڑی کا لاہور ہے, یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا لاہور. ہمیں نہ پٹواریوں کا ضرورت ہے, نہ کسی اور کا ضرورت ہے, میں صرف اور صرف آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں آئے ہیں, ہم پوچھتے ہیں کہ وہ کیوں آئے تھے. وہ تو ضیاء الحق کی وجہ سے پنجاب پہ مسلط ہوئے, وہ جنرل حمید گل کی وجہ سے پنجاب پہ مسلط ہوئے, وہ کبھی جنرل فیض سے تو کبھی کسی اور کی وجہ سے شہر پہ مسلط ہوئے. تمام مہنگے کے مہنگے ترین بیماریاں ہیں, ان کا مفت علاج کے ادارے کھڑے کیے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم اسی شہر کا ہر in the intra-party elections. That is my point number 1 I'll be arguing on. Point number 2, Your Lordship, is that under Article 17(2) of the Constitution, the right to form political parties is guaranteed, and over the years the Supreme Court
has robustly interpreted Article 17(2) to not just forming but also operating as a political party. Contesting elections with a unified symbol falls squarely within this right. And denying an electoral symbol. Just slow down. Contesting elections with a unified symbol falls squarely. Unified symbol falls with a unified symbol falls squarely within this right. Denying an electoral symbol. The third point of the same one. Just ending, closing it now. This right. G. Denying an electoral symbol based on alleged irregularities in intra-party elections is a violation of Article 17(2) an unreasonable restriction, and hence void. The third ground, Your Lordship, connected with this is that the interpretation of the provisions of the Election Act proposed by the ECP would amount to a violation of Article 17(2) and hence is incorrect. My third point is, Your Lordship, fourth one, that the Constitution states that the Election Commission is not a court of law. And if its orders are contrary to facts or arbitrary and even unreasonable, then they are subject to judicial review. The fifth point is, Your Lordship, then my argument will be based on is that ECP has acted in a discriminatory manner. Has acted in a discriminatory manner in violation of Article 25, and its mala fide is apparent on the face, mala fide in law and facts is apparent.
My next point will be, Your Lordship, that since the fundamental question involves the civil rights of a political party as well as the individuals, it can only be decided by following the provisions of Article 10A through a fair trial. ECP, not being a court of law, cannot give a fair trial within the meaning of Article 10A. And in fact, no such trial took place. And last thing I'll be arguing is, Lordship, that none of the members of the PTI have filed or challenged the elections. They can only dispute this matter before a civil court because PTI is a political party which is a private association of citizens. And the ECP has no suo motu jurisdiction to become a complainant and adjudicator in one. So these are my grounds that I'll be. And lastly, I will say that on merits, I followed the constitution of PTI and held the intra-party elections. This is going to be the parameters of my arguments, Your Lordship. Now, Your Lordship, we'll see. Your Lordship will see that the election, the brief facts that I'll be discussing only to start with are as follows. ECP, in fact, I'll start by saying that PTI held its elections on 8th of June 2022. Your Lordship may call them the first election. And ECP vide its order dated 23rd of October 23 directed that elections be held within 90 days. They said these elections are void and you should hold new elections in 20 days. Why they said that?
may not be relevant to this case, but I'll briefly inform the court. They said this because, according to them, the council that had made the amendment under which the elections were held, the council was not valid. It was not functional, according to them. What do you mean by council? The executive council of the PTI. PTI. So we had 20 days, and at the same time, your lordship remembers, round about that time, your lordship had decided that the elections will be held on 8th of February. When was that? Through a judgment that your lordship. What was the date? I'll just find out the date. I'll just find out the date. And so there was time constraint. We had 20 days, and we were very scared, I may add, that if we don't hold the elections, then Election Commission of Pakistan may take action against the party and keep it out of the politics and the elections. So we decided that while we will be challenging the vires of that order, we should also comply. And so, your lordship, we held the elections, the second intra-party elections on 2nd of October 2023. Second of October or December? 2nd of December, sorry. 2nd of December. These elections, your lordship, were called in question. We filed the forms 65, which is the requirement. We filed all the documents. But then 14 persons who alleged that they were members filed applications before the Election Commission. And in those applications, they said that these elections should be declared void and there should be re-election. This was their prayer. There should be re-election. Complaints are on record? They are on record. Your lordship, the ECP also raised simultaneously some technical points. These technical points related to dates, signatures, forms. That the signature is not right, please put a signature here. The date is not right, please put a date there. A notice was served on us that please come in. There's a hearing on the basis of these 14 applications. A hearing took place, and our basic stance was that these are not members. Did you respond in writing or verbally? Verbally. When was the hearing? It is mentioned in that order, it was 18th. 18th of? December. So, your lordship, on the date that the hearing was finished, the Election Commission handed over 32 questions to us, that these are our questions. Where are those? Those are also on record. Page? A page, I think it's page. I'll just come to those pages in a minute, but I'm just giving a brief. Now, your lordship, the 32 questions were also answered in writing by us. And then the Election Commission of Pakistan passed this order dated 22nd/12/2023, in which two things happened. Number one, the election, intra-party election, was declared void. It was set aside by ECP. And then on this basis, the ECP went on to do a second thing, which is
that it ordered that the symbol will not be given to PTI. Now, Your Lordship, this order in 22nd 12/2023 has been read before this Honorable Court. But I'd like to summarize what I think is the reading of that. Number one, the impugned order has decided that the intra-party election was held. This is important. Was held on 2nd of October 2023. December, sorry, I keep saying October. December 2023. So, it was held, they say. They're not denying that it was not held. Number two, they have not pointed out anything in the manner and conduct of the election itself. No irregularity or defect per se in the manner and conduct of that election has been pointed out. Number three, they have accepted that Form 65 and all the documents as required by Section 209 have been duly provided. These three things are important for my arguments. IP was held, they have not pointed out anything, so I don't need to go into many aspects of the election itself. And no documentary dispute. But what they have done, Your Lordship, is given a very circular reasoning, which I call a circular reasoning fallacy. A circular reasoning fallacy, which is actually an absurd reasoning. They have said that your intra-party election is okay, but the General Secretary who appointed the Chief Federal Commission, that is the person who conducted the election, was not properly appointed. And because the Federal Commission was not properly appointed, therefore the intra-party election is irregular. And because it is irregular, we do not accept this election. And because we do not accept the election, we will not give you the symbol. Huge jump, Your Lordship. Huge jump. Taking away the symbol because of an irregularity in the appointment of a General Secretary who appointed a Federal Commission. If I may interrupt you, yesterday Mr. Makhdoom Ali Khan was arguing on the technical aspect, Secretary General and all that, and I may repeat for your benefit that the more fundamental question is whether there is democracy in the party, which can only be reflected by an election, valid elections being held within the party. And if that is so, then everything follows. Then you get the symbol, whatever the requirements are. And if that is not, then you run into trouble. So
that is at least, if I'm speaking, I speak for myself, my focus will be, if you're talking about democracy, then there must be democracy within political parties as well. So the whole conduct of the elections, not the fine aspects of the elections, here as irregularity or there irregularity, but the fundamental point of an elections may not have complied with all the rules and regulations of the PTI's constitution, which is not really the concern of the courts, nor should be of the Election Commission of Pakistan. But the fundamental question cannot be ignored, that members had been granted a fair opportunity to file nomination papers, to contest the election, and there was a semblance of regularity. That much, overcome that much. I've got that point. And by simply saying 14 persons came as complainants and said, we are not being allowed to participate in the elections, to simply discard them by saying they are not members of PTI will not be sufficient, when at least for one of them, Mr. Akbar S. Ahmed, it has been admitted that he was a founding member of the party. Merely because you don't like what a person says does not mean that his membership ceases. Unless you can show he resigned a political party, joined another political party, or went through some disciplinary procedure and was thrown out from the political party. So I don't know about the other candidates, we've not heard much about them, but don't just simply say they were not members of PTI. How would I know you are a member of PTI? You saying so, and they saying so, there must be some parameters within which one can objectively determine this fact. Absolutely. So if it is not added to this, and please hear this is also very important, you used the word mala fide in fact and in law. Various allegations, we don't try to be influenced by anything that is said on the media or social media, but your stance is that there is mala fide of fact and law before the court of law, the Supreme Court. Now, you must show such mala fide, because a point which was raised yesterday by Mr. Makhdoom Ali Khan was the fact that, okay, now I'm not in government, now they are hounding me. He said, no, we had raised this point when you were in government. PTI was in government. ECP was a constitutional body and had called upon you to conduct your elections. This has gone back very far back in time when the PTI was in government. So surely, unless you are saying the ECP was so independent a body that even it was proceeding against those in government then, either you maintain that stance, that will undermine your stance that ECP has suddenly, the same persons in the ECP have suddenly turned subservient to whoever you want to allege. So, if it was suddenly been brought up, they've been pursuing this matter for quite a while. And before that, either you take the plea that the law of election, and mind you, Election Act has not been challenged, any provision thereof. I will not. So whether we will not comment on its constitutionality because it has not been challenged. It may be challenged tomorrow, and we don't want to, in these related proceedings. I'm not challenging them. So certain provisions were pointed out, then a person will just produce a piece of paper, I've held elections. And would that constitute elections? I'm not going into the nitty-gritty of the elections, mind you. I want to know the general, every election everybody complains. I mean, it's rare in Pakistan that nobody complains, but you see the general broader picture. So you understood what I mean? I have bilkul understood. And I'm going to address that. I worked on it last night, and I will address both those questions.
So, but for the present moment, Can we start with the facts first? Then we come, if we can just start with Lordship, it will members. destroy my scheme of arguments. Okay, fine. Okay. Fair enough. पेज 90 के ऊपर आप जैसे चलें फिर आप चलें. फेडरल इलेक्शन कमीशन का आपका शेड्यूल है पेज 90 पेपर बुक नंबर 1 में. जी. तो ये आप जरा देखिए ना, इसके अंदर जो नॉमिनेशन और इलेक्शन कराने का तरीक़ेकार पेज 90. जी. हमने जो पेज 90 आपके नियाजुल्लाह खान नियाजी साहब ने 29/11/2023 को इशू किया. जी. अगर आप इसमें देखें, नोटिस इनवाइटिंग नॉमिनेशन पेपर्स फ्रॉम पीटीआई मेंबर. जी सर. ये वही है 29/11 हो गया जी 29 को. फिर नॉमिनेशन फॉर्म्स टू बी रिसीव्ड बाय रिटर्निंग ऑफिसर एट इस्लामाबाद जस्ट आफ्टर 2 days 1/12/2023. करेक्ट सर. अपील अगेंस्ट ऑब्जेक्शन और रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म वो भी पहली तारीख ही, सेम डे ही नॉमिनेशन फॉर्म रिसीव किए जाएंगे, सेम डेट ही वो अपीलें फाइल हो जाएंगी. फिर डिस्प्ले ऑफ नेम ऑफ कंटेस्टिंग पैनल वो भी 1/12 ही है. फिर पोलिंग डे एट पेशावर खैबर पख्तूनख्वा, इसमें देयर इज नो वेन्यू मेंशन फॉर द इलेक्शंस, दैट इज ये भी 2/12/2023 को ही होगी. फिर डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट बाय सीईसी वो भी 2/12 को ही होगी. और नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट जो है वो 3/12 को होगी. जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यस्टरडे ऑल्सो कि जो आपका प्रोसीजर है इसके अंदर वो नॉमिनेशन फॉर्म कहाँ से लेने थे, where was the venue mentioned in this, how to collect the form, nomination form, where the nomination form is to be submitted, because I also asked the question that how many members you have. I think it is more than 8,50,000. जी. तो इसके अंदर जो बात चीफ साहब भी आपसे कह रहे हैं कि वो ट्रांसपेरेंसी इलेक्शंस के अंदर थी, कौन लड़ सकता था कौन नहीं लड़ सकता था, by simply saying अब आपकी 15 कंप्लेंट वहाँ गई हैं ईसीपी में. जी. ECP में सो मोटो नहीं है ये एक्शन. Somebody has filed complaints and the action was taken on the complaint not by ECP सो मोटो. आपके अपने सर्टिफिकेट 65 पे नहीं आई है, ये 15 कंप्लेंट फाइल हो गई वहाँ पे. तो अब उन्होंने देखा है इन सब चीजों को, तो उस पे हम ये पूछना आपसे चाह रहे थे ना कि ये किस तरह का प्रोसीजर था. बिल्कुल, मुझे आई अंडरस्टूड द पॉइंट. आपका जो पॉइंट है, क्योंकि जब आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं तो आपकी पार्टी में भी तो लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए ना. जब वो मेंबर्स को भी तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, करना चाहता है इलेक्शन. जैसे चीफ साहब ने डेमोक्रेसी की बात की, तो मैं ये बात भी आप उसमें ऐड कर रहा हूँ कि उनको भी तो मौका मिलना चाहिए ना. मैं जीते हारे वो उनकी नसीब में इलेक्ट होते नहीं होते हैं. और फिर सारा दारोमदार आपके अपने पीटीआई के कॉन्स्टिट्यूशन पे है. उसमें आपने इतना ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर बनाया हुआ है कि वो दैट्स वेरी गुड कि आप उसमें सारी चीजें, बट इफ यू फॉलो दैट वुड बी ए बेस्ट ट्रांसपेरेंट इलेक्शन ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी. अब वो बीच में लैकिंग नजर आ रही है, इसलिए ये सारे सवालात उठ रहे हैं. बिल्कुल ठीक है सर. मैं आई गॉट दैट. You may ignore the with respect to Mr. Makhdoom Ali Khan, he may get upset, but you may ignore the minor points. I mean, we are more focused on this, so I'm just telling you our mind, and we want to save time also. I appreciate, because you know every election we will find some this particular form not submitted, that thing not done. Okay. We will be charitable there. ठीक जी ठीक. So your lordship, my coming back to my point, so एक order है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया जिसमें उन्होंने कहा कि होल्ड हुआ था. They have not pointed out anything in the manner, but I will still satisfy the court जो आपने पूछा, लेकिन they have not pointed this out. They have simply said the appointment of the general secretary and the appointment of the federal commission. So they have not questioned कि आपने एक दिन में क्यों किया या 2 दिन में क्यों किया या अनकंटेस्टेड क्यों था वगैरह वगैरह. So that is important to note कि as far as the election commission is concerned, they have no cavil with this. Your lordship has raised a question which I'll be answering with documents shortly, but for the time being the order does not say it. Now your lordship, they have done 2 things: taken away the not just declared this election void, but also jumped and taken away the symbol. So एक चीज है कि आपका इलेक्शन वो तो हमने नोट कर लिया जी. आप प्लीज प्रोसीड. Now what is a symbol, sir? I know, we know what a symbol is जी. No, but a symbol, your lordship, is a fundamental right. I want to point out that
When you say this, you'll have to back it up. I will back it up. We are not denying the importance of symbols. If you want to know, we realize the checkered history of Pakistan and how political parties have been hounded. So I think it started with the elections of the Pakistan People's Party, which let me just उससे पहले भी जा सकते हैं, बहुत पहले जा सकते हैं. At least when I was I mean we can go to Ayub Khan and all that, वहाँ से भी जा सकते हैं. But जब पॉलिटिकल पार्टी वाज़े तौर पे आ गई, अयूब खान का वो तो खैर आप वहाँ जाना चाहें वहाँ चले जाते हैं, मगर in recent memories and those political parties which exist today, let's put it this way, the first brunt was received by the Pakistan People's Party. The sword was, I think, the symbol. तलवार. फिर वो पहले non-party election ये वो वगैरह हो गया. फिर the second brunt, then the parliamentarians and various other things. Then the second brunt was the Pakistan Muslim League. But be aware of the fact who was in government then. Today, was there a Supreme Court which had taken PCO oaths, judges, any act will not be challenged. So we must bear in mind those were far, far, far more difficult times. Yes. There's no comparison. Maybe you can say, yes, it continues today. You may say so. But today, your opponents are not in government. They're not. We use the word casually, establishment. Why don't we use the word honestly, army? There does not apparently appear to be any interference. You may allege there is, but you know the overt kind of stuff, unless you point out, matters are coming, the elections are not being held. It was your own petition we argued, which we pressed it in 12 days. We got the date, you were happy, everybody was happy when. So access to courts is there. It's not that nobody allowed you to file. Making allegations on the media or outside unnecessarily undermines constitutional institution, which does not mean you should not make these allegations if they are true. Now, the very same election commission has issued you the notice to hold elections as far back when you were in government. Can we start from there? What was the malafide then? Please read that notice, the first one, because that, from a timeline point of view, that will be very important. Because if we have to gauge whether suddenly the euphemism that is used, establishment, is weighing heavy on the election commission and doing something, we will certainly hear this. But then, how did they know then? When the very same establishment, surely it was not your allegation then that they were siding with the Election Commission of Pakistan. So if you're going to make it dramatic and political, then give the whole context or keep it legal. So if you're going to use, I mean, I respect every constitutional body. You said malafide in fact and law. Did we appoint them? You all appoint these people. We don't appoint them. So when you just throw an allegation is not acceptable because you don't serve Pakistan then. We need these institutions. We can make them better. If they're not doing their job, force them to do the job. That's our job. But we cannot take on their responsibilities because you'll be the first to complain. We will not take on the responsibilities of Parliament. As I've repeatedly stated, you will be the first to complain. Who is he? I'm the parliamentarian. I'll make the law. I want to. We'll judge the law, whether it's constitutional or not, and that's it. बिल्कुल सही। जरा से आप ये मैलिफिडे का जो आप एंगल अगर ले रहे हैं तो इसको सब्सटैंशिएट कीजिए। मैं जिस तरह लूंगा, changes the prism completely. Right. If they are malafide, then we look at them at very suspect eyes, or you take away this allegation. I'm not saying take it away. It's your call. I'll be totally non-political in my arguments. Your lordship, as always, I've not
there's no point in bringing, although it's relevant to a political party, this case, but I will keep it very legal. And on the mala fide in fact in law, I will be more relying on procedural mala fide than anything else. I will not go into... Are you withdrawing the allegation of mala fide in fact? Because it's very important. You have to answer this. When I use the word mala fide in fact, maybe I was wrong in saying in terms of... You can withdraw it if you want to. You don't withdraw it if you don't want to. I'm not even going there into that arena. I am basically going to argue that there's a procedural clear cut on the record. I'm noting that you are withdrawing your... you're not saying mala fide. I'm not saying mala fide in fact. Please proceed. In that sense, you are always fair. Please proceed. Now, Your Lordship, so I was starting by saying that symbol is a fundamental right of a political party under Article 17, Sub-Article 2. And I'm not saying that Your Lordship said back it up. I will back it up with a judgment which is known as the famous symbols case. Benazir Bhutto case? I think both parties are relying on the same judgment. They are not. They are relying on the other Benazir Bhutto judgment of 88. I am relying on the 89 judgment. So, citation please. It is PLD 89 Supreme Court. 1989 Supreme Court. 66. It is 66. 12 judges sat on this case, and it's basically all about symbol. Relevant page? I will just read that relevant page. But before that, Your Lordship, let us look at the effect of no symbol. No, एक second. देखिए, at least the fundamental question is, if elections are proper, I for one don't think that you should be deprived of the symbol. So when you're citing Benazir Bhutto, was it a question of inter-party elections or no? No, it was a question that a symbol was, the symbol was being taken away. You can't just deprive someone of their symbols. But here it is connected with the party elections. My point because certification, suppose there is a particular time within which you have to file a certificate. You don't comply with the time. I don't think it's such a relevant thing that a person should be deprived of their fundamental rights or even normal rights. So when we read this judgment, we'll have to consider the fact that it was not a question where the political party had not held elections. Yes, who can deny the importance of a symbol? But my reason for reading this judgment will be separate, different. My reason for reading this judgment would be to show to this honorable court that a symbol is not just a right of a political party. Symbol is a right of the illiterate millions of people of Pakistan who rely on the symbol for the purposes of exercising their right of vote. They rely on a political party symbol for the purposes of... Zafar, I think maybe it's too fine a point or what. I don't disagree with you at all. But... So I will... No, but पूरी बात सुन लें. मगर मैं कुछ और कह रहा हूँ. जी. एक नाम होता है ना. Political party is a name, but at the end of the day, political party कौन होते हैं? जो लोग उसको कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है? कल कोई जासूस घुस जाए किसी पॉलिटिकल पार्टी में, उसको एक कागज का टुकड़ा पेश कर दें कि जी हम ये पॉलिटिकल पार्टी बन गए. आपकी पार्टी का नहीं कह रहा, कोई और पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है? वो उसी के मेंबर आए कि जी इलेक्शन नहीं हुआ, ये कैसे आ गए? तो पॉलिटिकल पार्टी की जब बात आप कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी तो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, एक नजरिया को रिफ्लेक्ट करती है, एक कुछ लोगों की समझ को रिफ्लेक्ट करती है. हम ये देखना चाहते हैं कि वो तरीकेकार हुआ या नहीं हुआ, और वो एक ही तरीके से हो सकता है इलेक्शन. अगर इलेक्शन या तो आप कहें कि जी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन करे या ना करे, ये हमारी मर्जी, एक वो अलग मौक़िफ़ है, और ये इसको गायबी करने इलेक्शन को. मगर ये नहीं कह सकते हैं आप कि जी हम कागज का टुकड़ा पेश करें और इलेक्शन हो गए. आप हमें कम से कम मोटी मोटी उसकी जो इलेक्शन में जो बातें होती वो तो हमें दिखा दें कि जी हमने मौका दिया सबको,
हमारे पास लोग आए, इतने लोगों ने नॉमिनेशन पेपर फाइल किया, इतने वोट इनको पड़े और इतने वोट इनको, हम ये बैठ करके गिनेंगे नहीं वोट्स, मगर कुछ तो आप हमें पेश कर देना। अभी हमारे सामने जो मसला आ रहा है, कम से कम इनका जो एलिगेशन है कि जी ये कागज का टुकड़ा है, ना आपने बताया कि किस जगह इलेक्शन हो रहे हैं। आपने पिशावर का तो जिक्र किया, मगर फिर आपने कोई और जगह जाके कर लिए, चमकनी में, मुझे नहीं पता है, मगर वो पिशावर नहीं है, कोई और जगह है। तो ये जरा बातें जब हम केस लॉ पे एकदम चले जाएंगे ना, तो जरा सा अगर इस पे आप फोकस करें, क्योंकि मेरे ख्याल में इलेक्शन हो गए, फिर आपको जहमत करने की जरूरत नहीं होगी सिंबल पे जाने के लिए। वो आपका मेरे ख्याल में सब्जेक्ट टू व्हाट दे से एक वो नेचुरल इम्प्लीकेशन या राइट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर, मैं अभी आपको उस पे आऊंगा। मैं सिंपली जो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आई अंडरस्टैंड योर लॉर्डशिप्स कंसर्न अबाउट द इलेक्शन, I will satisfy that. ECP की order में भी they have certain violations ना, not only violation of the appointment. There are certain violations. Not if you want to see page 613 of the paper book, it is in fact page 10 of the order of the ECP. You can read certain paragraphs in which certain violations have been mentioned. Let us read that order, because I want to be very clear. ECP is not saying that. I've read it. नहीं उसका नहीं है, वो टोटल कह रहे हैं ना, वो नहीं, इस तरह नहीं हो सकता सर। They are actually they have taken a very serious point on this. And ये पढ़िए, पहले आप ये पढ़ लीजिए पैराग्राफ 22 पेज बताइए प्लीज। पेज 612 के ऊपर पेपर बुक नंबर 1 नहीं सॉरी पेपर बुक नंबर 3 पेपर बुक ये पेपर। Your Lordship want me to read at which para? 22 से आप आगे चलेंगे तो according to the available record, the General Secretary of PTI is Mr. Asad Umar, and nothing in document is available that PTI or any other competent wing of PTI has ever elected Mr. Umar Ayub as Secretary General of PTI. We also fail to find here in PTI Constitution any provision that Chairman of PTI may extend tenure of any office bearers, while the tenure of Chairman itself has expired on 13/6/23. So after target date 13/6/23, Chairman possesses no authority to exercise such power either to control or to extend the tenure of any office bearers. Such eventuality is well defined in the procedures provided under Clause 4 of Article 5 of PTI Constitution, which reads as under. In case of the Chairman's position falling vacant due to any reason, the SG shall take additional charge of the office. In the interim, and elections for the Chairman's office shall be held within 30 days of position falling vacant. So far 22 is just about appointments. Clause 1 of Article 5 General Provisions of PTI Constitution widely speaks about collective decision making, which reads as under. All decisions shall be taken by the corresponding governing body, executive committee, and other such bodies by a majority of vote. Minimum quorum required for validity shall be 75% for smaller bodies, committees, and 50% for the larger committees, councils of the total membership. Agenda items shall be distributed by the Secretary along with invitation notice wherever possible. Clause 1.3 of Article 5 General Provisions of PTI Constitution describes that governing body can take provisional decisions in policy matters where there is enough room to believe that an executive committee meeting could not be convened in time. Again, nothing to do with the election. Thereafter, as mentioned here and above, it was mandatory for the PTI in terms of Clause 1.4 of Article 5 that on expiry of 18 months thereafter, the adoption of the PTI Constitution 2015, which has been adopted on 1/5/2019, to appoint the chief organizer who had to use all the powers and functions of the chairman, well mentioned there in Clause 4.2 of Article 5 of the PTI Constitution, already reproduced here and above. Para 26. Going through the above mentioned Clause 4 of Article 5 of the PTI Constitution, the PTI General Council, as per record supplied here to the Commission, adopted and approved the Constitution 2019 on 1/5/2019, and thereafter 18 months constitutionally the PTI is deemed to be run by chief organizer till the announcement of intra-party election of the federal EC.
by the federal EC. However, it would be the chief organizer to nominate various members and constitute various committees in interim period. Thereafter, 18 months of adoption of PTI Constitution 2019 and first intra-party election scheduled on 13/6/21. As the chairman of PTI never opted to hold intra-party election till 10/6/22, just 3 days before the target date of the intra-party election provided thereunder, Section 208 of the Election Act 2017, however, as the said election was not found to be held in accordance with PTI Constitution 2019, declared void by this commission. As discussed here and above, the conduct of election cannot be substituted by this court. Therefore, if it is found that the ECP had the jurisdiction in the matter, then in such circumstances, this court had no mandate to interfere in said finding. एक तरफ तो ये पेशावर हाई कोर्ट के जजमेंट से जो इंट्यून है, बिल्कुल सर, वो मैं जानता हूँ कि हम फैक्चुअल में नहीं करेंगे। हाँ, वो उन्होंने कहा, इसमें आके उन्होंने कहा कि पहले हमने ये देखना है, जो हर अदालत पूछती है कि सबसे पहले ये देखना है कि जिस इंस्टीट्यूशन ने ऑर्डर पास किया उनको कानून ने ये ताकत दी कि नहीं। कमीशन का कोई रोल ही नहीं है ना, फिर तो मतलब ये नहीं है, प्रोब नहीं कर सकते। आई विल शो दैट। फिर कैसे रोल नहीं है, फिर वो फिर इंटर इलेक्शन का जो सिलेक्शन है जिक्र है, दैट इज व्हाट आई विल शो जिक्र है कि ये इलेक्शन कराना है आपने वक्त पे और जो भी करना है और आपने माना भी है, तो पहले फिर सिंपल बात है जी, सिंपल बात है। एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ जी। देयर इज अ पाकिस्तान पीनल कोड जो कहता है कि अगर आपने कत्ल नहीं करना, अगर किया तो आपको सजा होगी, बट दैट डजंट मीन दैट इलेक्शन कमीशन कैन look into that and say कि सजा होनी चाहिए या नहीं. It is the criminal code that has the jurisdiction. So every statement in the law needs a jurisdiction. Section 208 में तो इलेक्शन इसमें लिखा है, वो आते हैं सर, वो शुरू ही होता है कि इलेक्शन कराएंगे आप. Let me come to my first point then. हाँ, मैं सिंबल केस को भी छोड़ देता हूँ एक सेकंड के लिए. ये सिंबल केस तो है ही नहीं हमारे सामने. बेसिकली हमारे सामने तो पिशावर देखिए, अगर आपने मेरे हिसाब से अगर आपने इलेक्शन हो गए, सिंबल ऑटोमेटिक फॉलो करेगा मेरे हिसाब से. हमारे क्योंकि वो टेक्निकल चीज है, फिर क्यों आपका सिंबल होता है, एक अलग इशू होगा ना कि जी किसी को लगना चाहिए, उसने भी अप्लाई किया, हमें भी अप्लाई किया, वो एक अलग बहस पड़ जाती है. मीडिया पर्सपेक्टिव के अंदर जो आप ये सिंबल की बात कर रहे हो ना, वी हैव नथिंग टू डू विद दिस सिंबल. सिंबल तो लिया हमसे. पिशावर का जजमेंट देख रहे हैं यहाँ पे और ईसीपी की. देखिए, लेकिन ईसीपी ने सिंबल लिया ना. नहीं, ईसीपी का पहला खत पढ़िए, उन्होंने आपको कहा इलेक्शन करवाएं. इलेक्शन हमने कराए, मुतवातर एक ही बात है नहीं, और उसमें आपको धमकी भी दी, अगर आप नहीं कराएंगे तो हम आपका सिंबल ले. क्वेश्चन इज, कैन दे टेक द सिंबल फॉर नॉन इलेक्शन? नो. Even if I don't hold election. No, but you have accepted that letter of ECP. आपने उनको कहा letter does not confer jurisdiction, sir. No, देखिए ना, इतनी तो बात ना करें ना. इलेक्शन कमीशन ने आपको, जब आपकी हुकूमत थी, ठीक है, तो वो आप ये बातें, मीडिया वाली बातें अलग हैं, कोर्ट वाली बातें अलग हैं. उस वक्त आपको खत लिखा, बराए करम इलेक्शन करा लें. आप वक्त गुजर गया, आपने इलेक्शन अभी तक नहीं कराए, ना अपने आइन के मुताबिक और ना पाकिस्तान के कानून के मुताबिक. अगर आप नहीं कराएंगे तो हम आपका इलेक्शन सिंबल ले लेंगे. उन्होंने आपको धमकी, नतीजा भी बता दिया कि हम ये करेंगे. ठीक है, आपने कहा जी हजूर मुझे कोविड आ गया, मुझे 1 साल का मौका दे दें. आपने ये नहीं कहा आप कौन है मेरा सिंबल लेने वाले. आपने हमें धमकी कैसे दे दी? बेशक इलेक्शन कराना अलग इशू है, हर धमकी का जवाब नहीं देना चाहिए बिला वजह, तो वो एक अलग इशू है. ठीक है, फिर इलेक्शन आपने किया, फिर उन्होंने कहा कि आप सही तौर पे नहीं करा रहे इलेक्शन. आप चले गए लाहौर, तो फिर चले गया पेशावर. तो ये देखें, बुनियाद से शुरू करें ना. इलेक्शन कमीशन ने क्यों आपको क्यों तंग कर रही है? फिर हमने उनसे पूछा कि ये सिर्फ आप ही को तंग कर रही है. देखिए, वो एक अलग केस बन जाता है, वो होता है डिस्क्रिमिनेशन का. उन्होंने कहा नहीं जी, हमने तो 13 पार्टीज को और वो कर दिया. हमारे पास एक केस आया था, APM क्या है, वो भी देख लेते हैं सर. वो भी उनको डिस्क्रिमिनेशन आऊंगा, वो भी ग्राउंड है, मेरी डिस्क्रिमिनेशन भी है. तो इधर से आगाज करें शुरू से. हाँ, मैं शुरू से कर रहा हूँ सर. फर्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि ECP हैज नो जुरिसडिक्शन एट ऑल. ये तो कहने से तो नहीं होगा, कानून का लेट अस स्टार्ट सर. लेट अस स्टार्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक, सबसे बड़ी चीज है आइन. बिल्कुल, इस पे कोई दो राय नहीं. राइट सर, शुक्र है. सो लेट अस स्टार्ट विद सर द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड इसमें जो पहला रेलेवेंट प्रोविजन है इज आर्टिकल 218. ECP को बनाया गया आइन के तहत फॉर सर्टेन पर्पस, एंड
and जो relevant उसकी 2183 में ड्यूटीज दी गई 2183 में जी और ये कहा गया कि it shall be the duty of the election commission to organize and conduct the election and to make such arrangements as are necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly and in accordance with law, and that corrupt practices are guarded against. So नहीं देखिए एक बात, ये स्टेज अभी आया नहीं है, ये वो इलेक्शन की बात हो रही है, जनरल इलेक्शन की. बिल्कुल. ये जो बात है ये आता है 219E में. ठीक है. So ये अभी स्टेज वो इलेक्शन वाली बात नहीं कर रहे हैं, वो तो कैसे करते हैं हम देखेंगे उसको और देखते जा भी रहे हैं. ये आ गया 218E के जुमरे में आ रहा है कि such other functions as may be specified by an act of parliament. So your lordship वो पार्लियामेंट का एक्ट है कि आप अपने अंदर जमहूरियत लाएं और ये बात है, इतनी बात है बस. So your lordship agree with me that 218 has nothing to do with intra-party election. 219E. 2183 doesn't. Constitution doesn't, right? I think that it is interconnected, but that's not really before us. So 2183 does not deal with intra-party. That's my submission. Now my second submission is that 219, all of it does not deal. E also does not deal with intra-party election. All it says law that the election. All it says is exactly. वो ये कहता है 219 के 218 और 219 में इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है. 219E ये कहता है कि आप कानून में जो ताकत देंगे, अगर आप ये बात करेंगे ये आपका मौकिफ खराब करेगा. ओके. फिर अगर आप कहते हैं आइन में कहाँ लिखा है सिंबल दिया जाएगा, देखिए वो फिर आपको एक्ट से मिलता है. ये ना करें कि आप ऐसा आर्गुमेंट करें जो आपके दूसरे आर्गुमेंट को खराब कर दे. अच्छा मुझे आइन में दिखा दें कहाँ लिखा है इलेक्शन सिंबल मिलेगा पार्टी को. वही मैं दिखाने जा रहा था सर. बताइए. मैं अभी पढ़ने जा रहा था जजमेंट, वो फिर आपने वो इंटरप्रिटेशन पे आएगा. हाँ, लेकिन उन्होंने कहा है कि इट इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 17. पहले वाले लॉ में भी थे ना इंटर पार्टी इलेक्शन. आर्टिकल 17 का पार्ट था. बस उस पे मैं आता हूँ, बट माय पॉइंट इज दिस. आई थिंक वी आर नॉट एट डिफरेंट वेवलेंथ्स है. आई थिंक पॉइंट हम दोनों एक ही बात कर रहे हैं. 219E के तहत आप jurisdiction दे सकते हैं by law. ठीक. That is what I'm saying. I think that is what your lordship's observation was. ठीक है. ये सारी बातें सिंबल ये चीजें ये आएंगी एक्ट के जरिए आ रही हैं. So कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं पावर दी, ये कहा है कि आप लॉ के तहत पावर दे सकते हैं. Now come to the law. So Election Act 2017 was made under this provision. And 2017 का सेक्शन का मैं इलेक्शन एक्ट का पहले सबसे हम पढ़ते हैं सिर्फ 209 जी. ये सर्टिफिकेट का प्रोविजन जी पढ़ दीजिए. 209. A political party shall, within 7 days from the completion of the intra-party elections, submit a certificate signed by an office bearer authorized by the party head to the commission to the effect that elections were held in accordance with the constitution of the political party, and this act to elect the office bearers at the federal, provincial and local levels wherever applicable. Elections Act. I'll read it again, sir. Now, this certificate is made a conditional section. Yes. Law. Yes. Conditional. Conditional. Unless the elections are conducted according to the constitution, the rules of that political party. What does that political party says? My submission. एक बार फिर आपको बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लिए चलेंगे, जहां पर PTI के पार्टी इंतखाबात से मुतालिक समाअत जारी है. बिल्कुल ही फेल कर दे, करे ही ना इलेक्शन, नॉट इरेगुलरिटी बट करे ही ना. शो कॉज विल बी इशू. उसको बीच में इंटरप्रेट ना करें, पूरा पढ़ लें. सेक्शन कौन सा पढ़ रहे हैं आप? सॉरी जी 5 20 subsection 5 of 208. Where a political party fails to conduct intra-party elections as per given time frame in the constitution, a show cause notice shall be issued to such political party
and if the party fails to comply with, then the Commission shall impose fine which may extend to 200,000 rupees but shall not be less than 100,000 rupees. So 208 non-compliance, my submission would be they covered. आपका मतलब ये है कि अगर आपने कोई सर्टिफिकेट दे दिया, रिपोर्ट दे दी कि हमने इलेक्शन कर लिया, तो इलेक्शन कमीशन हैज नो राइट टू सी टू द मैटर कि वो प्रॉपरली हुआ है कि नहीं, या इलेक्शन एट ऑल हुआ भी है कि नहीं. अगर देना होता, आपने ना किया वो इलेक्शन और आप एक पेपर दे दे कि हमने कर लिया. अगर ये होता, अगर ये पार्लियामेंट ने पावर देनी होती कि वो इलेक्शन उसके सर्टिफिकेट के पीछे जा सके. साहब अगर आप इसको पढ़ें दोबारा गौर से 5 को जी विद इन टाइम जी, ये तो दिस इज अ रैप ऑन द नकल्स कि जी आप चले, आपने 3 साल में कराना थे, आपने 3 साल 3 महीने में कर, उन्हें 2 लाख की पेनल्टी लगा दी. ठीक है, यहाँ वो कुछ और है, वो कह रहे हैं आपने इलेक्शन कराया ही नहीं है. फेज टू कंडक्ट सर, हाँ विद इन टाइम. देखिए वेयर फेज टू कंडक्ट इंटर पार्टी एज पर गिवन टाइम फ्रेम इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन. ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन आइन कह रहा है 3 साल का. आपने 3.5 साल लगाया, हमको 2 लाख रुपए फाइन लगा देते हैं. आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मगर अगर आप देखिए ना, आप कहें तो फिर आप कह रहे हैं कि अगर मैं 2 लाख रुपए दे करके इलेक्शन कभी ना कराऊं, ये इंटरप्रिटेशन नहीं निकलता है. तो मैं एक सिनेरियो बनाता हूं सर कि अभी 208 में कम से कम ये नहीं मुझे नजर आया कहीं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कैन एग्जामिन कि एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टी का दुरुस्त हुआ है कि नहीं. ये मुझे 208 में मुझे नहीं नजर आ रहा. तो आगे आ रहे हैं ना जी, चले आगे देखते हैं. 208 में नहीं आ रहा. आप 209 पढ़िए पहले. अब 209 पढ़िए, क्योंकि वो 2 लाख वाला स्टेज तो पार कर गए ना. अब आपने तो इलेक्शन करा दिया, अब जब भी तो आपने सर्टिफिकेट दिया है, तो वो 2 लाख वाली तो बात खत्म है ना. तो वो 208 वाली बात खत्म है. बिल्कुल इलेक्शन पे तो खत्म हो गई. दैट इज माय पॉइंट. 208 वाली बात खत्म है. उन्हें फाइन नहीं लगाया आप पे, नहीं लगाया. 1 साल दे दिया, मैंने इलेक्शन करा दिया. So 208 is gone. Maybe 208 is not relevant. Political party in government. Sir, 208 is not relevant. That is what I am saying. ठीक है जी. अब आप 209 पे आ जाते हैं. A political party shall, within 7 days from completion of intra-party elections, submit a certificate signed by an office bearer authorized by the party head to the Commission to the effect that elections were held in accordance with the constitution of the political party, and this act to elect the office bearers at the federal, provincial and local levels wherever applicable. अब ये इसमें बहुत कुछ है जी. ये अब ये क्या कहता है 1 में जो है 209 में बहुत कुछ है इसमें. ठीक है, बिल्कुल है. उसमें क्या कहता है सर? उसमें ये कहता है कि पॉलिटिकल पार्टी ने 7 दिन के अंदर एक सर्टिफिकेट देना है. उस सर्टिफिकेट के अंदर लिखा होना चाहिए कि मैंने इलेक्शंस कराए हैं उनके कानून के मुताबिक, और मैंने आपने कानून के मुताबिक ये सर्टिफिकेट देना है. फॉर्म 65 ये सर्टिफिकेट देना. पहली बात बताएं, पार्टी हेड कौन है आपकी पार्टी का? जो इलेक्ट हुआ सर वो नहीं 209 वाला पार्टी हेड कौन है? द चेयरमैन. नाम क्या ये तो इलेक्ट हुआ बाद में ना, ये जो तो बात की बात है ना, उसमें आया है. जो इलेक्ट होगा ना, इनका भी तो इलेक्शन क्वेश्चन में आ गया है. लेकिन ये जो नहीं देखिए, जो स्कीम है, यू आर बेगिंग द क्वेश्चन. अगर ये पुराने पार्टी हेड होते, ठीक है, इमरान खान साहब दे देते सर्टिफिकेट तो एक अलग बात है. ये खुद तो नहीं दे सकते अपने लिए सर्टिफिकेट कि मैं पार्टी हेड हूँ. स्कीम यही है सर. स्कीम ये है कि जब इलेक्शन हो जाए तो जो भी पार्टी हेड बनता है, हर चीज आती है इलेक्शन पे जी, जब भी हो जाए वो पार्टी हेड ने देना. ये भी ऑब्जेक्शन इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया. अगर वो कहते हैं इमरान खान साहब का सिग्नेचर चाहिए, वो भी आ जाता सर्टिफिकेट में. जब इलेक्शन हो रहा था उस वक्त कौन था? Who was heading that party? इमरान खान साहब. अच्छा, असली क्वेश्चन तो इनकी खुद का इलेक्शन में आ गया है ना. लेकिन मेरा पॉइंट वो नहीं है सर. मैं वो आपकी बात नहीं, आपकी पॉइंट हो या ना हो, मैं अगर देखिए, अगर मेरा पॉइंट, अगर आप अपने मेंबरान को हक के इलेक्शन नहीं दे, बाबू हरा दें उसको ना. एक जमहूरियत इसी को कहते हैं ना. मैं तो भी सिर्फ इस पॉइंट पे आया हूँ सर. इसका भी जवाब हमारे ज़हन में जो बात है बिल्कुल मैं नोट कर रहा हूं. लेकिन अभी जो मेरा पॉइंट है इज रेलेवेंट टू सेइंग कि 1 में इलेक्शन कमीशन को कम से कम कोई इख्तियार नहीं दिया कि वो
इलेक्शन को तो देखिए, मैं आपकी बात में समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर इलेक्शन कमीशन को नहीं दिया तो फिर सुप्रीम कोर्ट को दिया है, किसको दिया है इख्तियार? ये सर मैं वो भी बात, आप कहें ये कानून बेमकसद कानून वो इसको दिया है कि अगर ये कोई मेंबर्स में डिस्प्यूट हो जाए, एक मेंबर आके कहता है कि जनाब मेरी इलेक्शन नहीं हुआ, जुरिसडिक्शन की बात बता देना, किसको दिया है? सर कोर्ट को प्लेनरी जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट दिखा कहीं लिखा हुआ ऐसी बात? वो सिर्फ लिखने की जरूरत ही नहीं है, प्लेनरी जुरिसडिक्शन के अंदर बड़ा वाजे लिखा हुआ है ना। मैं उस पर भी आता हूँ, पहले एक एक करके कर रहे हैं। बेसिकली उन्होंने एक्शन 215 के तहत लिया है। चले उस पर आते हैं, लेकिन 209 में नहीं लिखा। आपका कहना ये है कि आधा जुरिसडिक्शन ईसीपी के पास है, जहां तक डिले हुआ तो उन्हें लगा दी 2 लाख की पेनल्टी। आप एक से पूरी बात समझे ना, और जो बाकी जुरिसडिक्शन है वो कहीं और है। ये तो बहुत ही इलॉजिकल सी बात है ना। या तो आप बिल्कुल ही ना तस्लीम कर रहे ईसीबी का जुरिसडिक्शन, फिर वो आप पे 2 लाख रुपए का जुर्माना भी नहीं निकाल सकता है। एक तरफ तो आप तस्लीम कर रहे हैं उसका जुरिसडिक्शन, दूसरी तरफ उसका जुरिसडिक्शन आप डिनाई कर रहे हैं। फिर अगर ये बात है तो वो 2 लाख का जुर्माना कैसे लगा रहा है? या फिर आधा जुरिसडिक्शन वो लेगा हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, और बाकी आधा जुरिसडिक्शन। कानून जो है वो तो बड़ा वाजे है, और मैं नहीं कह रहा ये कानून पिछले 100 साल से है, और वो कानून ये है सर, वो कानून ये है कि अगर आपने किसी भी इंस्टीट्यूशन को कोई जुरिसडिक्शन देनी है, कोई इख्तियार देना है, कोई ताकत देनी है, तो फिर एक्सप्रेसली उसको करेंगे, इम्प्लीकेशन से नहीं मिलेगा। You are not coming to section 215. I will say 209 पढ़ रहा हूँ अभी मैं। And we are bound by the law because सही है, वो exactly 209 आपसे डिमांड ये करता है कि the election shall be conducted according to the party's constitution. Correct. But तो now election को कमीशन को तो इख्तियार the constitution of your own party कि ये उसके मुताबिक हुए कि नहीं। फैसला किसने करना है मैडम? ये सर्टिफिकेट आपको तब मिलेगा जब आप 209 के तमाम ये कंडीशन। सर्टिफिकेट तो मैंने देना है, ये सर्टिफिकेट पार्टी हेड ने देना है, ये पार्टी ने देना है, इट इज नॉट टू बी गिवन बाय द इलेक्शन। ये ऐसी बात होगी, ये ऐसी बात होगी, पाकिस्तान और इंग्लैंड का टेस्ट मैच है, खेलेंगे तो नहीं, रेफरी का सर्टिफिकेट आ गया, पाकिस्तान जीत गया। नहीं ये पाकिस्तान इंग्लैंड आप ऐसी बात कर रहे हैं, हमें समझ तो आए बात को। तो मैं तो इसे, मेरा पॉइंट सिंपल है, आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सबमिशन, बट माय पॉइंट ऑन दिस, आई विल रीड 215। मेरा सबमिशन लिख लीजिए, आप नोट कर लें। कर लेंगे ना। 2091 में इलेक्शन कमीशन को जुरिसडिक्शन नहीं, just understanding the law whether ECP has jurisdiction or not. You are asking that they have no jurisdiction. 2091 में नहीं है। I just ठीक है, 209 की नॉन कंप्लायंस 215 में मेंशन है ना। If you will read 215, पढ़ लेते हैं ना, पढ़ लेते हैं, खत्म तो कर लूं 209 खत्म कर लेते हैं पहले, 209 वो खत्म कर लेते हैं ना। The certificate under subsection 1 shall contain the following information: A, the date of the last intra-party elections. B, कौम की सोच। This program is brought to you by अपना फोन निकालें और डायल करें 11333987। लॉर एंटरटेनमेंट सिटी, हैप्पीनेस लिव्स हियर। हर मुश्किल में आपका बैकअप सिर्फ उसाका बैटरीज। अब रहो यंग एंड ब्राइट हमेशा with Nisa Collagen Booster. वेलकम बैक एवरीबॉडी आफ्टर द ब्रेक। अभी कुछ हम बात करने लगे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की कि क्या हलचल इस वक्त जारी है मुल्की सियासत में। इसमें जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी है बिलावल भुट्टो जरदारी, वो अब ये कहते हैं कि जनरल ज़िया की वजह से पंजाब पर मुसल्लत लोग हमसे पूछते हैं कि हम लाहौर क्यों आए हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्होंने जो है वो रेस किया, और फिर उन्होंने कहा कि इन्हें उनके घर में घुसकर मारेंगे। इन्हें 127 लाहौर में वर्कर कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे वो, और उसमें उन्होंने ये कहा कि लाहौर किसी बिजनेसमैन का है ना किसी खिलाड़ी का, लाहौर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का है। हम इलेक्शन लड़ने के लिए कहीं और नहीं अवाम की तरफ देख रहे हैं। लाहौर से अपना रिश्ता जोड़ने के लिए वापस आया हूं। और उन्होंने फिर ये भी कहा कि 90 की तकसीम और फिर नफरत की सियासत को हम हमेशा के लिए दफन कर चुके हैं, हम उसको रिजेक्ट करते हैं। और ये उन्होंने अपने पिछले जो उनके खिताब हमारे सामने आए उन्होंने यही कहा। बिलावल साहब को अगर याद आता 16 माह पहले
ان کا ساتھ دینے سے پہلے اگر ان کو یاد آتا تو شاید پیپلز پارٹی کی بھی ابھی پوزیشن بہت زیادہ بہتر ہوتی لاہور کے اندر. کارپیٹ بچھا کے, تو کارپیٹ سے کیا استقبال ہوتا ہے ویسے, لیکن میں شاید اس کارپیٹ کے اوپر اس جگہ کے عوام بھی ہوتے جو کہ ان کا استقبال کر رہے ہوتے, اگر وہ یہ سوچتے پہلے. عوام کے پاس اگر جا رہے ہیں نا تو عوام پھر ان کو کہتے ہیں, اگر فار ایگزامپل وہ اینٹائی پی ایم ایل این اگر کوئی نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں تو اس پہ پھر لوگ ایک دم سے ان کو پوچھتے ہیں کہ پھر آپ پی ڈی ایم میں کیوں ایک ساتھ آئے تھے. تو اگر پی ڈی ایم بنانے سے پہلے یہ سوچ لیا ہوتا کہ ہم بعد میں جا کے اپنی سیاست الگ کریں گے تو پھر شاید تھوڑا بہتر ہوتا. اور اس میں منیب یا وہ گھس کے ماریں گے یا پھر وہ جس مرضی طریقے سے ماریں گے, لیکن پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ آپ نے کیا مارنا ہے. 16 مہینے کی آپ نے حکومت چلائی ہے, آپ نے ایک حکومت کو اوور تھرو بھی کیا ہے, اور بلاول بھٹو زرداری کا یہ کہنا تھا کہ عوام 8 فروری کو تیر پہ ٹھپا لگائیں, 300 یونٹ تک بجلی مفت دیں گے. پھر لاہور میں مفت علاج کی بھی انہوں نے کہا کہ ہم سہولیات فراہم کریں گے, لاہور والوں کو لندن جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ تو امیزنگ ہو جائے گا. اور پیپلز پارٹی کی حکومت آئی اگر تو تنخواہیں دگنی کر دیں گے, وہی جو 10 پوائنٹس انہوں نے پہلے بھی جن کا ذکر کیا تھا. اور پھر پیپلز پارٹی 3 نسلوں سے غربت اور بے روزگاری کا مقابلہ کرتی آ رہی ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی کا یہ کہنا تھا کہ کہاں لکھا ہے کہ ایک ہی شخص کو پہلی بار, دوسری بار, تیسری بار اور پھر چوتھی بار بھی وزیر اعظم بنایا جائے, وزیر اعظم منتخب کیا جائے. یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مار مار کر ڈرا سکتے ہیں, تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں آئے ہیں. میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ کیوں آئے ہیں. یہ جنرل ضیاء الحق کی وجہ سے شہر میں مسلط ہوئے, اور یہ سارے بہت امپورٹنٹ سٹیٹمنٹس اور آپ کہہ سکتے ہیں بولڈ قسم کے سٹیٹمنٹس سامنے ہیں چیئرمین پیپلز پارٹی. اب اس پہ مزید بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما فیصل میر صاحب, انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. فیصل صاحب السلام علیکم, گڈ مارننگ. وعلیکم السلام, ویری گڈ مارننگ. گڈ مارننگ. ویری گڈ مارننگ سر, ویری گڈ مارننگ. میں سر صبح یہ بتا دیں کہ جس طریقے سے نون لیگ پریشان ہے کہ بلاول صاحب لاہور کیوں آئے ہیں, تو آپ لوگ پریشان نہیں ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ کراچی کیوں آئے ہیں؟ دیکھیں, شہباز شریف صاحب کراچی پہلے بھی شکست کھا کے واپس آئے تھے زخم لے کے. تو بلاول صاحب لاہور اس لیے آئے ہیں کہ جس حلقے سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں وہ ماڈل ٹاؤن اس حلقے میں پڑتا ہے, اور 161 سے میں ان کا ایم پی اے کا کینڈیڈیٹ ہوں کے نیچے. اوریجنلی آئی واز دا کینڈیڈیٹ فار NA 127. تو ماڈل ٹاؤن میں جس حلقے کے اندر ماڈل ٹاؤن واقع ہے, اگر آپ ان کی چھت کے اوپر سے نواز شریف صاحب کے خاندان کی کسی بھی ان 8 گھروں میں سے کسی بھی چھت کے اوپر چڑھ کے دیکھیں تو پیچھے تو غریب بستی ہے بہار کالونی کی, وہاں پہ نہ تو صاف پانی ہے, نہ وہاں پہ سیوریج سسٹم ہے, نہ وہاں پہ کوئی ڈرینیج سسٹم ہے, نہ صحت کی سہولت ہے, اور نہ ہی کوئی کسی قسم. آپ کو میں انوائٹ کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ بہار کالونی اور اس کے کینچی چنگی امر سدو. بلکہ مجھے فیصل صاحب یاد آیا, لاسٹ ٹائم ہماری بات چیت ہو رہی تھی تو ہم نے سندھ کا ٹور پلان کیا تھا, اس کے بعد میں بیمار ہو گیا. سر وہ پینڈنگ ہے. ابھی آپ پلان کریں ٹور, ٹھیک ہے. اور جو شخص 4 دفعہ جس کا جو خاندان وزیر اعظم رہا ہو اور وہ چھت کے اوپر سے دیکھتا ہو کہ بلکتے بچے گندا پانی پی رہے ہیں, 33 سال سے وہ دیکھ رہے ہیں یہ, اور ان کی پوری کابینہ وہاں سے کتنے یہ سنگ دل لوگ ہیں کہ جو شخص اپنے ہمسائے میں بسنے والی بوڑھی اور جوان خواتین کو بیسک جو فیسلٹیز ہے وہ نہیں دے سکتا. گھٹنے پانی وہاں پہ ہوتا ہے جب برسات ہوتی ہے. وہ شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ملک کی وہ تقدیر بدلے گا. ان سے یہ سوال ان سے پوچھنے کا یہ ہے کہ یہ موٹر وے اور خربوں روپے کی اورنج ٹرین اور اربوں روپے کی یہ میٹرو بس بناتے ہیں, جس میں کہ اربوں روپے کے کمیشن کھا کے یہ ایونٹ فیلڈ بناتے ہیں, یہ وہاں پہ پائپ کیوں نہیں ڈالتے, پانی کا صاف پانی کا پائپ کیوں نہیں ڈالتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی کا پائپ چند 1000 روپے کا ہوتا ہے, اور اس میں اس کے ٹھیکے میں ان کو کمیشن کوئی نہیں ملتا. یہ ضیاء الحق کے زمانے میں یہ نواز شریف صاحب گوال منڈی میں ایس پی کے ٹاؤٹ ہوا کرتے تھے, جو بتاتے تھے کہ گوال منڈی میں پیپلز پارٹی کا کون سا ورکر کہاں پہ رہتا ہے. وہاں سے اس کو جنرل جیلانی تک ایکسیس ہوئی. اگر ضیاء الحق کی اس کو جاگ نہ لگی ہوتی تو آج یہ کہیں ہتھوڑے کوٹ رہا ہوتا, اپنے کسی بیٹھا ہوتا. تو یہ اس وقت بھی ضیاء الحق کے کندھوں پر سوار ہو کر آیا تھا, اور پھر اس کے بعد یہ دوبارہ بھگوڑا ہوا. 10 سال اس نے باہر عیاشی کی, اس کے بعد واپس آیا. اب پھر یہ جیل کے اندر سے جس شخص کو
رہا کروا کے اب یہ ایئرپورٹ پہ اترا ہے اور بغیر کسی بجائے کہ جیل میں جاتا آج یہ دوبارہ ایک کہہ رہا ہے جی کہ میں وزیر اعظم بنوں گا. تو اس کو جو یہ دوبارہ کندھوں پہ سوار ہو کے جو کہہ رہا ہے جی ساڈی گل ہو گئی ہے, اس کو عوام سے بات کرنی چاہیے, کیونکہ پیپلز پارٹی کی لاہور میں عوام سے بات ہو رہی ہے, اس کی کہیں اور بات ہو رہی ہے. جہاں اس کی بات ہو رہی ہے, جن کے کندھوں پر یہ چڑھ کر آ رہا ہے, اس کو کندھوں سے گھسیٹ کے نیچے پٹکیں گے. اور ماڈل ٹاؤن میں جس طرح بلاول صاحب نے کہا, ماڈل ٹاؤن کے 84H کے اندر گھس کے ماریں گے ان کو, وہاں پہ ابرتناک شکست دیں گے اس حلقے میں, اور ہمیشہ کے لیے اس کو لاہور ایئرپورٹ سے روانہ کریں گے 8 فروری کو, تاکہ اس کا قلعہ جو لندن ہے لاہور. ٹھیک ہو گیا. تو سر اس کے لیے پھر کیا اسٹریٹجی ڈیزائن کی ہے, اور خاص طور پہ پنجاب میں انتخابی مہم سے لے کر پاکستان پیپلز پارٹی نے دوبارہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ نہیں, ہمارے ساتھ ہی میرے خیال سے لائن ڈراپ ہو گئی ہے شاید, لائن ڈراپ ہو گئی ہے, دوبارہ کنیکٹ پہ ہو رہا ہے اور انٹرسٹنگ ہے. گھر میں گھس کے ماریں گے. ہمارے پاس ایک ساٹ ہے جی, وہ پلے کرتے ہیں, شہباز شریف صاحب کا ہے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی ہے, کل کا ان کی اسٹیٹمنٹ ہے, وہ ذرا سنتے ہیں بلاول صاحب کی اسٹیٹمنٹ. کسی کاروباری شخص کا لاہور ہے, نہ کسی بزنس فیملی کا لاہور ہے, نہ یہ کسی کھلاڑی کا لاہور ہے, یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا لاہور. ہمیں نہ پٹواریوں کا ضرورت ہے, نہ کسی اور کا ضرورت ہے, میں صرف اور صرف آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں آئے ہیں, ہم پوچھتے ہیں کہ وہ کیوں آئے تھے. وہ تو ضیاء الحق کی وجہ سے پنجاب پہ مسلط ہوئے, وہ جنرل حمید گل کی وجہ سے پنجاب پہ مسلط ہوئے, وہ کبھی جنرل فیض سے تو کبھی کسی اور کی وجہ سے شہر پہ مسلط ہوئے. تمام مہنگے کے مہنگے ترین بیماریاں ہیں, ان کا مفت علاج کے ادارے کھڑے کیے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم اسی شہر کا ہر in the intra-party elections. That is my point number one I'll be arguing on. Point number two, Your Lordship, is that under Article 17(2) of the Constitution, the right to form political parties is guaranteed, and over the years the Supreme Court has robustly interpreted Article 17(2) to not just forming but also operating as a political party. Contesting elections with a unified symbol falls squarely within this right. And denying an electoral symbol. Just slow down. Contesting elections with a unified symbol falls squarely. Unified symbol falls with a unified symbol falls squarely within this right. Denying
an electoral symbol. The third point is the same. Same one. Just ending, closing it now. This, right. G. Denying an electoral symbol based on alleged irregularities in intra-party elections is a violation of Article 17(2) and an unreasonable restriction, and hence void. The third ground, Your Lordship, connected with this is that the interpretation of the provisions of the Election Act proposed by the ECP would amount to a violation of Article 17(2) and hence is incorrect. My third point is, Your Lordship, fourth one, that the Constitution states that the Election Commission is not a court of law. And if its orders are contrary to facts or arbitrary and even unreasonable, then they are subject to judicial review. The fifth point is, Your Lordship, that my argument will be based on is that ECP has acted in a discriminatory manner. Has acted in a discriminatory manner in violation of Article 25, and its mala fide is apparent on the face. Mala fide in law and facts is apparent. My next point will be, Your Lordship, that since the fundamental question involves the civil rights of a political party as well as the individuals, it can only be decided by following the provisions of Article 10A through a fair trial. ECP, not being a court of law, cannot give a fair trial within the meaning of Article 10A. And in fact, no such trial took place.
And last thing I'll be arguing is, Lordship, that none of the members of the PTI have filed or challenged the elections. They can only dispute this matter before a civil court because PTI is a political party which is a private association of citizens. And the ECP has no suo motu jurisdiction to become a complainant and adjudicator in one. So these are my grounds that I'll be. And lastly, I will say that on merits, I followed the constitution of PTI and held the intra-party elections. This is going to be the parameters of my arguments, Your Lordship. Now, Your Lordship, we'll see. Your Lordship will see that the election, the brief facts that I'll be discussing only to start with are as follows. ECP, in fact, I'll start by saying that PTI held its elections on 8th of June 2022. Your Lordship may call them the first election. And ECP vide its order dated 23rd of October 23 directed that elections be held within 90 days. They said these elections are void and you should hold new elections in 20 days. Why they said that may not be relevant to this case, but I'll briefly inform the court. They said this because, according to them, the council that had made the amendment under which the elections were held, the council was not valid. It was not functional, according to them. What do you mean by council? The executive council of the PTI. PTI. So we had 20 days, and at the same time, Your Lordship remembers, round about that time, Your Lordship had decided that the elections will be held on 8th of February. When was that? Through a judgment that Your Lordship. What was the date? I'll just find out the date. I'll just find out the date. And so there was time constraint. We had 20 days and we were very scared, I may add, that if we don't hold the elections, then Election Commission of Pakistan may take action against the party and keep it out of the politics and the elections. So we decided that while we will be challenging the vires of that order, we should also comply. And so
Your Lordship, we held the elections, the second intra-party elections on 2nd of October 2023. Second of October or December? 2nd of December, sorry. 2nd of December. These elections, Your Lordship, were called in question. We filed the forms 65, which is the requirement. We filed all the documents. But then 14 persons who alleged that they were members filed applications before the Election Commission. And in those applications, they said that these elections should be declared void and there should be re-election. This was their prayer. There should be re-election. Complaints are on record? They are on record. Your Lordship, the ECP also raised simultaneously some technical points. These technical points related to dates, signatures, forms. That the signature is not right, please put a signature here. The date is not right, please put a date there. A notice was served on us that please come in. There is a hearing on the basis of these 14 applications. A hearing took place, and our basic stance was that these are not members. Did you respond in writing or verbally? Verbally. When was the hearing? It is mentioned in that order, it was 18th. 18th of? December. So, Your Lordship, on the date that the hearing was finished, the Election Commission handed over 32 questions to us, that these are our questions. Where are those? Those are also on record. Page? A page, I think it's page. I'll just come to those pages in a minute, but I'm just giving a brief. Now, Your Lordship, the 32 questions were also answered in writing by us. And then the Election Commission of Pakistan passed this order dated 22nd 12/2023, in which two things happened. Number one, the election, intra-party election, was declared void. It was set aside by ECP. And then on this basis, the ECP went on to do a second thing, which is that it ordered that the symbol will not be given to PTI. Now, Your Lordship, this order in 22nd 12/2023 has been read before this Honorable Court. But I'd like to summarize what I think is the reading of that. Number one, the impugned order has decided that the intra-party election was held. This is important. Was held on 2nd of October 2023. December, sorry, I keep saying October. December 2023. So it was held, they say. They're not denying that it was not held. Number two, they have not pointed out anything in the manner and conduct of the election itself. No irregularity or defect per se in the manner
and conduct of that election has been pointed out. Number 3, they have accepted that Form 65 के बाद ऑर्डर पास करेंगे, वो तो 2000 वो पावर ये सिर्फ द डिस्प्यूट, वही तो सारा इशू इतनी देर से, वही तो हम बात कर रहे हैं आपसे, ये में वो उसको हम चैलेंज कर रहे हैं आप, या किसी ने क्या चैलेंज किया है, वो एक अलग इशू है। सर वो मेरा पहला पॉइंट हो गया, वो उसमें मैंने सबमिशंस कर दी हो गया, बट यू आर अगेन रिवर्टिंग बैक। नो आई एम नॉट, दिस इज सेकंड थर्ड पॉइंट सर, ये 200 दिस इज नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर मी। इट सेज व्हाट माय पॉइंट इज दिस, टाइम है 215 सबसेक्शन 5 में उनके पास पावर है शो कॉज देना, उसके बाद आपकी हियरिंग। सर दैट इज फॉर नॉट गिविंग अ डॉक्यूमेंट का तो इशू या नहीं है, कोर्ट ऑफ लॉ अगर नहीं है, आपने उसको चैलेंज किया पेशावर हाई कोर्ट में उस सेक्शन को। सर मुझे नहीं करने की जरूरत, मैं तो कह रहा हूँ 215 है ही। चलिए जजमेंट बताएं, इसका रेलेवेंट पोर्शन बता दें क्या है। 221 के आप 1675 जी, इसका रेलेवेंट बेसिकली सर इसका सिर्फ प्रिंसिपल एक है। हाँ बता दें। प्रिंसिपल सिर्फ ये है, मैं खाली ये कोट इसलिए कर रहा हूँ, आई डोंट नीड टू रीड देम, इज दैट ECP is not a court of law. And my point is that a dispute regarding intra-party elections is a civil dispute. If we agree with you, naturally it's not a court of law. Correct. But it is a constitutional body granted certain powers directly under the Constitution, and the Constitution envisage grant of further powers to it under statute. So whether you want to call it whatever you want to call it, so it's a constitutional body. So I am saying statute is not giving that power. वो मेरी साइड वाली a court of law can be abolished जी by law. जी Statutory body cannot be abolished. Difference between jurisdiction, abolishment, jurisdiction and power की बात कर रहा हूँ. So my point is this कि the intra-party election is a civil dispute. Article 219 Constitution का इसमें power delegate होते हैं, such other functions as may be specified by an act of Majlis Shura Parliament. जी ये आपने पढ़ लिया. Election Act 2017 बना है वो. सर वो मेरा अब आपका जो सिविल कोर्ट है ना जी, वो आइन नहीं इस्टेब्लिश करता है, वो आइन रिकग्नाइज करता है अंडर आर्टिकल 175 है. आई एग्री. तो वो मगर इन आईनी इदारा है, ये हमारी तरह है, सुप्रीम कोर्ट हम भी आईनी इदारा है, इलेक्शन कमीशन भी आईनी इदारा है, ठीक है, ये हम इनके ऊपर नहीं, हम इनके बराबर हैं, मगर अगर ये गलत काम करेंगे वो अलग बात है. तो इसको आप कोर्ट ऑफ लॉ तो इसके नीचे आएगा, आईनी इदारे से नीचे आएगा ना कोर्ट ऑफ लॉ, सिविल कोर्ट ऑफ लॉ. I don't think so. Not a constitutional court of law. नीचे नहीं आएगा, it will have its own jurisdiction, they'll have their own jurisdiction. नहीं but so अपनी अपनी jurisdiction में they are kings. Suppose कल एक legislation आता है, हाँ जी, वो सिविल जैसे वो कहते हैं 50,000 से 1 लाख jurisdiction करते रहते हैं ना जी, चेंज करते रहते हैं जी, मतलब कोई चीज एक्ट ECP के पावर कम नहीं कर सकता है. To the extent of general election. Act. To the extent of general election. लेकिन जो भी आइन में दर्ज है, जो भी आइन में दर्ज, आइन के खिलाफ तो कोई लॉ नहीं हो सकता. तो मगर देखिए सिविल कोर्ट के ऊपर नीचे हो सकते हैं जी, उसकी जुरिस्डिक्शन को हो सकती है मतलब नीचे. बहुत सारे कह सकते हैं कि ये एक कोर्ट को अबॉलिश भी कर सकते हैं. करेक्ट. सिविल अपील, अच्छा रिवीजन नहीं होगी, डायरेक्ट अपील होगी, सेकंड अपील होगी, बाय लॉ नहीं होगी. देखिए तो ये सारे चीजें कर सकते हैं, लेकिन बाय लॉ आप ECP को नहीं छू सकते हैं. करेक्ट. लेकिन फिलहाल हमारा पोजीशन ये है पाकिस्तान के कानून की, जो मैं समझता हूं वो ये है कि जब आपका कोई सिविल डिस्प्यूट होगा तो एक प्लेनरी जुरिस्डिक्शन है ऑफ द सिविल कोर्ट्स कि जो सिविल डिस्प्यूट्स हैं दे विल गो देयर. सो यू डोंट हैव टू स्पेसिफाई. हमने अगले दिन बहुत वक्त निकाला इस पे, प्लीनरी जुरिस्डिक्शन ऑन डिस्क्वालिफिकेशन 62(1)(f का भी हम सोचे थे कोर्ट ऑफ लॉ से मुराद क्या है. बहुत हमने लंबे चौड़े इस पे बहस सुन चुके हैं. सही, तो वो आपको दोहराने की जरूरत नहीं है. So I'll be very short on that. My point is this only कि dispute. और साहब that is all right. हमने इनको कहा था अटॉर्नी जनरल को, ठीक है सब कुछ या नहीं. Your Honor, there were yes no 4 डालों में लोग आए, निकाह पोछते. अभी मेरे घर सिचुएशन क्या है? It's a very serious. जब वो अभी आप चौधरी साहब को बुलाए, चौधरी साहब Your Honor, हमें यहाँ नहीं करना है, प्लीज गो एंड सॉर्ट इट आउट राइट नाउ. और साहब नहीं आप यहाँ ना बात करें. जी क्या
My Lord, I have spoken with the IG, I have spoken with the Secretary Interior, I have taken in loop the Attorney General as well. मैं जैसे ही कोई information मिलती है वो they are finding out कि क्या हुआ क्या है, whatever it is, वो अभी आके तो मैं फिर बताता हूँ जी कोर्ट को. नहीं, we want it fixed. My Lord, we want it fixed. My Lord, it will be. Gaur Sahab, if you want to accompany him, you can go. Your Honor, we are hearing this. नहीं देखिए ना, फिर आप ये आप अगर मैं आपके सामने नहीं बताऊंगा इस कोर्ट का भाई, अभी हमने कहा ना, if they don't Your Honor, then we'll see. We do not have a trust. Just bear with me for a second. आप मेरी बात अली जफर साहब, Your Honor, सिर्फ आप प्लीज देखिए, वो we don't want to detract. Your Honor, मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ. To fair trial को, which says for the determination of his civil rights and obligations or in any criminal charge against him, a person shall be entitled to a fair trial and due process. My submission is that since ECP is not a court of law, in order to determine this controversy, if there's members, let us say, dispute bhi ho jaye, so in order to determine the controversy, it cannot assume a jurisdiction of a trial court. A member has to go to the court and get a decision from the trial court itself. And इस केस में कोई proper trial हुई भी नहीं. ये तो summary matter में, summary proceedings में court ने, election commission ने फैसला कर दिया. They just decided their hearing हुई, questions पूछे और ने कहा जी we are not satisfied with your appointments. अगर ऐसी बात थी तो ठीक है, हमें भी evidence लाने दें, उनको भी लाने दें, and एक proper trial करें if they have the jurisdiction. Assuming that they do. My first point is they don't have the jurisdiction, but assuming that they do, कम से कम मुझे इतना बड़ी penalty दे रहे हैं, मुझे फिर आप प्रूव करने दें कि मैंने ये किया है इलेक्शन या नहीं किया. Can't be done on just one person standing up and saying कि मैं नॉमिनेशन पेपर लेने आया था, मुझे नहीं मिले, जबकि उसने पैनल भी नहीं लेके आया कोई बंदा. जी सर, my next point was raised regarding the territorial jurisdiction of the Peshawar High Court. Your Lordship, territorial jurisdiction pe a lot of judgments have come by now and the law is very well ये वजाहत कर दीजिए कि वो जो पिटीशन आपने फाइल की जिसका 5 मेंबर बेंच बन गई जी लाहौर में जी, वो एक और पिटीशन भी उसके साथ मुंसलिक हो गई जी, एग्जैक्ट वही इशू था इलेक्शन का, तो वो आपने या तो उसको विड्रॉ करते कुछ करते, आप उसको अबैंडन करके पेशावर कैसे चलेगा, ये इसका जवाब देते. जी मैंने सुना था आपने कल इसकी ऑब्जर्वेशन की थी. सवाल पूछा. हाँ जी सर, इसमें पोजीशन ये है कि पहली बात तो ये है कि जो सेकंड पिटीशन है जो आइडेंटिकल इसी इम्प्यून्ड ऑर्डर को चैलेंज किया गया है और उस पे जस्टिस जवाद ने कहा है कि ये एक ऑर्डर भी दिया और उसके बाद उसकी ICA हुई, दैट हैज नथिंग टू डू विद PTI और एनी ऑफ द
people here. وہ کسی نے فائل کر دی ہوگی لاہور ہائی کورٹ میں, لیکن لاہور آپ نے ڈسون بھی تو نہیں کیا ان لوگوں کو, آپ مانتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں کہ وہ آپ ہی کے لوگ ہیں. وہاں پہ گجرانوالہ کے صدر ہے جی. ہوگا سر, ہوگا, بٹ کوشچن از دیٹ آئی ہیو نو کنٹرول اوور سو مینی پیپل. بالکل اس سے تعلقی کا اظہار کریں گے, وہ تو اس کے ٹائٹل میں لکھا ہے گجرانوالہ کا صدر ہے وہ پی ٹی آئی. میں تو خود پٹیشن کو آپ کہہ رہے ہیں وہ کسی انڈیویجول نے فائل کر دی ہوگی, انڈیویجول نے فائل کی, پی ٹی آئی کی نہیں ہے یہ بات. ڈونٹ اس کو آپ ڈسون کر رہے ہیں, وہ تو اس نے لکھا ہے. تو ہم یہ آپ کی پشاور والی پٹیشن کو کیوں نہ تصور کریں کہ وہ بھی انڈیویجول نے فائل کر دیا. وہ تو پی ٹی آئی لکھا ہے, اس نے بھی لکھا ہے. نہیں, اینی وے وہ اس میں سر ہوا یہ کہ میں اس کی بات نہیں کر رہا تھا, میں وہ دوسری میں پہلے 5 ممبر کی بات کر رہا ہوں. اب وہ جسٹس جواد خواجہ صاحب نے ایک بڑا اچھا آرڈر پاس کیا, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ چونکہ خواجہ صاحب یا جواد حسن صاحب, جسٹس جواد حسن صاحب, انہوں نے کہا کہ آپ نے وہ یہ 215 کو چیلنج نہیں کیا ہے. وہ تو کہا انہوں نے, آپ نے نہیں, وہ جو بھی پٹیشنر تھا, لیکن انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ میٹر چونکہ پینڈنگ ہے پشاور ہائی کورٹ میں, اور پشاور ہائی کورٹ وہ بھی بات کی ٹیکن کاگنیسنس, تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈیل ود اٹ. اوپینین بھی دے دیا اپنا دے دیا, وہ ٹھیک ہے, ان کو دیکھیں یا ایک چیز کرنا چاہیے تھی دوسری, ٹھیک ہے, تو انہیں دونوں چیزیں کر دی. بٹ بیسکلی میں اس کو ذرا پازیٹیو دیکھتا ہوں, اور میں کہتا ہوں چلے اس کو نظر انداز کریں 2 منٹ کے لیے, مگر وہ دوسری جو 2 پٹیشن اس کی بات تھی. جو پہلا آرڈر تھا, جو پہلا آرڈر پاس کیا تھا, وہ پاس کیا تھا الیکشن کمیشن نے, جس میں یہ کہا تھا کہ آپ 20 دن کے اندر پہلا الیکشن ہمارا کلعدم قرار دے دیا انہوں نے. جی, ہم نے جس طرح میں نے کہا فیصلہ کیا کہ ہم یہ تو الیکشن کرا لیتے ہیں, کم از کم ان کو سیٹسفائی کر دیتے ہیں, بٹ وی ول چیلنج دس آن دا لیگل گراؤنڈز ان لاہور, اس لیے بیکاز وہاں ایک فل بینچ بنا ہوا ہے ڈیلنگ. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کیوں چیلنج کیا آپ نے لاہور میں, جب وہ انڈر چیلنج تھا لاہور میں, جی وہی لسٹ, وہی ایشو آف پشاور کیسے لے گئے ڈیورنگ دا سبسسٹنس آف دا پشاور. وہ لسٹ نہیں لے کے گئے. دیٹ از ویئر دا رانگ امپریشن واز میڈ. دیٹ لسٹ واز نیور ٹیکن بائی اس. دیٹ واز دا فرسٹ آرڈر وی چیلنجڈ. اس کے بعد ہم نے پشاور میں جب یہ کیا دس پرٹیکولر الیکشن, سیکنڈ الیکشن, تو ای سی پی نے ہمیں یہ نوٹس دے دیا کہ آپ کا یہ الیکشن بھی ہم شاید نہ مانیں. سو ہم نے اس کو روکنے کے لیے ہم چلے گئے پشاور ہائی کورٹ. نہیں تو لاہور میں کیا کمی تھی سر؟ کوئی کمی نہیں تھی, کوئی کمی نہیں ہے, بٹ کنکرنٹ جوریسڈکشن چلا رہا ہے نا پرانا, کوئی نیا ایشو تو انہوں نے نہیں کھڑا کر دیا. بٹ اٹ واز ناؤ ریلیونٹ اونلی ٹو دس پرٹیکولر, کہ یہ اس میں کیا ان کو غلطی نظر آئی. پہلے کی غلطی تو چلے ہم بھگتیں گے یا اس کو کریں گے بحث, اس میں کیا غلطی لگائی ہم نے. وی وینٹ ٹو دا پشاور ہائی کورٹ. پشاور ہائی کورٹ نے کیا کہا, وائی, بیکاز دیٹ واز اے کنکرنٹ فائنڈنگ اینڈ اٹ واز بائی چوائس. It was by choice. We wanted to go there, so we went. Plus, how can you do that? So 3 of the petitioners, ایک تو پشاور میں تھا, اور 3 of the petitioners جو تھے وہ وہاں کے ہی ہیں, کے پی کے کے. So اگر بلوچستان کے ہوتے تو آپ بلوچستان چلے جاتے. I don't know what I would have done, لیکن basically that was the reason. As I'm saying. اب ہوا یہ سر کہ جب ہم گئے پشاور ہائی کورٹ, تو پشاور ہائی کورٹ نے کہا نہیں, میں یہ الیکشن کمیشن کو نہیں روکتا, آپ الیکشن کمیشن کو کہہ دیں کہ آپ فیصلہ کریں, دین وی ول لک ایٹ اٹ. سو ہائی کورٹ نے وہ ڈسپوز آف کر دی پٹیشن. جب الیکشن کمیشن کے بعد واپس گئے, انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا. سو وی وینٹ بیک ٹو دا ہائی کورٹ اگین. بٹ Lahore is still pending. We checked with the people. They said yesterday it was fixed, both the petitions, before a 5-member bench. جی اٹ واز, اور بلکہ آپ کے آئی تھنک آفس نے غلط بتایا آپ کو شاید, کہ اٹ واز آئی ہو ساٹ دا انجرمنٹ. I had actually gone from Peshawar to Lahore to attend those cases, لیکن ہوا یہ کہ وہ بینچ خود ہی ڈسچارج ہو گیا. سو پینڈنگ تو ہے نا, پینڈنگ ہے. وی انٹینڈ ٹو withdraw that because it has become infructuous, but that جب لگتا ہے تو we will do that, but it is not something that is connected directly with this as we speak. So وہ ایک, just telling you, according to Mr. Makhdoom Ali Khan, the same matter directly in issue is sub judice before Lahore High Court,
اینڈ یہ ان کا کنٹینشن ICA میں تھا. نہیں وہ ادر کیس, not this one. نہیں, ہم WP اس کی بات کر رہے ہیں. یہ WP I think I don't know why. نمبر بتاتا ہوں آپ کو, 8117122023 which was clubbed with WP 332 of 2018. Sir, if my learned اس میں کیا ایشو ہے, آپ تھے, آپ اس میں کاؤنسلر, if my learned friend نہیں, اس میں کیا ایشو کیا ہے ان دو میں؟ سر اس میں ایک میں ایشو یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے توشہ خانہ کیس میں, وہ تو الگ ہو گیا جی. اب WP 1171 کا بتائیے. ایک ہے جس کے اندر عمران خان صاحب کو انہوں نے کہا ہے کہ یو ول ناٹ, نوٹس دیا کہ یو ول ناٹ بی اے پارٹی ہیڈ, اینڈ آپ کیونکہ پارٹی ہیڈ نہیں ہیں تو یو کین ناٹ فنکشن اور کیری آن. جو آرڈر پیش کیا آپ نے دیکھے نہیں, وہ الیکشن کے بارے میں جی. اور ایک ہے سر 3-4 ہے نا, ایک ہے انٹرا پارٹی الیکشن جو کہ ہے پہلا جو آرڈر تھا 23 والا, جس کے اندر یہ لکھا تھا کہ آپ کا پہلا الیکشن ہم کل عدم قرار دیتے ہیں. وہ والی وہ تو ہے, اس کو اسی کی بات کر رہے ہیں سر. وہ آئیڈینٹیکل نہیں ہے اس کے. دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دا پریویس الیکشن. That is not relatable to this particular election or these allegations. Naturally, it could not be related to this elections, nor these allegations, because this election took place subsequently. Correct. But the chain goes back to the same. تو chain کی آپ بات کہہ سکتے ہیں کہ وہ اگر آپ اس طرح دیکھیں, but it does not stop you from going to any other. Okay. The only question is whether the Peshawar court had the territorial jurisdiction. Mr. Mahdum Ali Khan candidly conceded that it does, provided there was, you had not invoked the jurisdiction of the Lahore High Court and the matter was pending there. That's his contention, right or wrong? My contention is very simple answer to that whenever there is a concurrent jurisdiction between 3 or 4 courts, the litigant has an option to choose any one of them. Having chosen, you have to stick with it. Yes, and it is for the court to determine کہ you want to continue. جیسا جواد صاحب نے کہا کہ I don't want to continue with this case because it is already pending before Peshawar High Court. Propriety demands I should not do it. They can decide that. There's no quibble with that proposition. That is fine, provided it's the same case. Provided it is the same case between the same parties, of course. But اس کی کاپی ہے ریٹ پیٹیشن WP کیا نمبر ہے اس کا؟ ہاں لڑائی نہیں ہے شاید نمبر دیکھ. آگے سر اب آ گیا جی کوشچن. So I will leave I will not then, if your lordship wants, I'll tell the judgments of the territorial jurisdiction because وہ ایک sequence میں ہیں. But if that's been conceded کہ territorial jurisdiction Peshawar High Court کی تھی, تو then I don't want to waste the honorable court's time. No, he is not conceding. He is contesting. He is saying if there was no case Lahore, fine, go to Peshawar. But when the case you chose Lahore, now stick to Lahore. That's what he's saying. That's what he's saying, but as far as the territorial jurisdiction of the تھی کہ نہیں تھی, independent of the independent تو نہیں کر رہے نا, وہ یہ بات یہ کہہ رہے ہیں. So my submission is this on that point. I am giving the judgments only to your lordships, and it started with PLD 68 Supreme Court 387 on the point of territorial jurisdiction. On this point, when two courts have concurrent jurisdiction, you invoke one, can you go to another one? That's one بتائیں. وہی ہے, میں اسی سے شروع کر رہا ہوں. PLD 68 Supreme Court 387 and then 2009. کوئی آپ پیج تو پڑھیں نا اس کا. سر میں I don't want to read this because آپ پڑھ لیں گے, وقت نہیں ملے گا نا پڑھنے کا. یا تو آپ ابینڈن کریں یا ہمیں کوئی پیج بتائیں. اب پورا ہم ججمنٹ کہاں بیٹھ کے پڑھیں گے؟ چلیے ٹھیک ہے سر, پڑھ لیتے ہیں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں. میں تو I was just trying to say that this is not a point that I am going to insist too much on. وہ جملہ بتا دیں نا, وہ والا کدھر لکھا ہے کہ دو کورٹ میں جوریسڈکشن انووک کر لیں, پھر بھی آپ دوسرا کر سکتے ہیں. جی جی
How much longer time? Sir, I'm going to try and end. I'm trying to end fast because our time with the symbol issue is. मैं आपको पुश इसीलिए कर रहा हूँ. मैं तो सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ कि 15-20 मिनट ठहर जाएं. क्या करें? क्या करें? नहीं. मैं तो trying to finish this faster so that I can actually try and get a judgment so that we can decide which way we have to go. Because time factor is, I've been told, is very important. So your lordship will see that if your lordship looks at page 7 at PLD, ये वाला तो खत्म कर लेना 68. मैं आपको शॉर्ट टू कीप द टाइम शॉर्ट. नहीं हम फिर नहीं पढ़ेंगे ये. आप ना पढ़े सर बेशक, फिर छोड़ दे. मैं आपको जो रेलेवेंट है मैं बोलूंगा. बात है तो वो पढ़ लेना. ठीक है सर. मैं आई थिंक 209 CLD 1498 अगर आप खोलें. कौन सी? PLD 2009 CLD 1498. ये LPG एसोसिएशन केस है. ये तो लाहौर हाई कोर्ट का है. इस केस को सुप्रीम कोर्ट का है जजमेंट जी. इसी को सुप्रीम कोर्ट ने फिर और हर कोर्ट ने उसके बाद फॉलो किया. सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है, दैट ऑल्सो योर लॉर्डशिप विल सी, बट आई जस्ट वांटेड टू रीड वन लाइन. को ये LPG केस है फेमस, उसको फॉलो किया जाता है. किस पॉइंट पे? ये पॉइंट ऐसे टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन पे. नहीं वो उसपे आप जनरल प्रिंसिपल हमें ना दीजिए ना जी. वो तो हम आपसे एग्री कर रहे हैं. आपको जो सिर्फ सिंपल जो उन्होंने उनका ऑब्जेक्शन मैंने आपके खिदमत में पेश कर दिया कि उसका जवाब दे दीजिए. मेरा जवाब तो सिंपल ऐसे कि that does not. आपका ये कहना है कि अगर मैं कर भी दूं इनिशिएटेड लिटिगेशन फिर भी मैं जा सकता हूं. इस पे कोई मुझे प्रेसिडेंट दे दीजिए. मैं ये कह रहा हूं सर कि मेरा प्रोपोजिशन सुन लीजिए, बिकॉज आई थिंक मे बी आई एम नॉट दैट क्लियर. My proposition is if there are two concurrent jurisdictions of high courts and Pakistan का system ऐसा है कि हमारी provinces हैं. ठीक. To me each high court is a supreme court of that province. ठीक. Now if there are two high courts with concurrent jurisdiction, both will have a right. We agree with you. Okay. Number two, if I have filed a case, if a person has filed a case in one high court and on the same subject matter without any difference, a second case is filed in the second high court, propriety demands that the second high court should say that the first high court is dealing with this matter and I don't want to deal with it and send it back. No, propriety of the petitioner demands that he restricts himself to the court that he elected to go in first. No, but maybe say suppose एक हाई कोर्ट में आपने पिटीशन फाइल कर दी, ठीक है, आपको स्टे चाहिए जी. अब ये इलेक्शन नहीं, एक आम बात कर रहे हैं जी. उधर से आपको स्टे नहीं मिलता है, कोई एक्साइज ड्यूटी लग गई, कोई कस्टम्स ड्यूटी लग गई, कुछ भी हो गई, तो आपने कहा चलो यार मैं फला हाई कोर्ट चलता हूँ, वहां मैं स्टे ले लेता हूँ जी. ये हम आपको इजाजत नहीं देंगे ऐसे असूल. वो तो सिर्फ देखें, या तो आप उसको डिसमिस करवाएं, विड्रॉ करवाएं, जो भी. आई डोंट नो, आई एम नॉट गोइंग टू प्रोवाइड अ सॉल्यूशन, बट आई एम सेइंग जब आपने एक चीज का इंतखाब कर लिया फिर आप उस पे उधर से हट नहीं सकते हैं. सर बिल्कुल सही. अगर तो एक हो सकता है कि दो अलग अलग लोग, एक शख्स ने वही लेवी बलूचिस्तान में चैलेंज कर ली, उसने सिंध में कर ली, तीसरे ने लाहौर में कर ली, मगर वही शख्स तीनों जगह नहीं कर सकता है. लेकिन सर क्वेश्चन इज रियली कि इट हैज टू बी द सेम कॉज ऑफ एक्शन. It is very straight. I'm being very clear here. In your case, what is the cause of action? Cause of action in the first case is my first election. Election is the cause of action. नहीं सर, election तो इतना हर election होता है सर. If I am supposing मेरे nomination papers जो हैं same nomination paper on the same ground have been rejected in Mianwali or in Islamabad or in Lahore, I will file 3 petitions on the same issue but on different cause of actions. Yes. Right? And there could be a conflict ultimately in 3 judgments. But you can't go to Peshawar. Supposing I'm Peshawar से लड़ा हूँ मैं, तो I'll go there. या अगर उसके सूबे में आता है तो उधर जाएगा. तो मैं कह रहा हूँ कि territorial jurisdiction है, then question will be cause of action. Cause of action कौन सा वाला? ECP का
ایلیگیشن ہوتا کہ آپ نے باقی تو سارے الیکشن صحیح کروا لیے مگر یہ خیبر پختونخوا والا جو پروونشل الیکشن ہے یہ صحیح نہیں کیا, پھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں. یا ان کا ایلیگیشن ہوتا کہ جی وہ لاہور والا آپ نے صحیح نہیں کرایا, وہ لاہور میں پٹیشن ہے. مگر اگر سپوز ای سی پی کل آپ کو نوٹس دی, آپ کا بالکل الیکشن بہت زبردست ہوا مگر آپ کا جو پروونشل چیپٹر ہے وہاں کے لوگ خوش نہیں, ان کو آپ نے موقع نہیں دیا, تو وہ بلوچستان میں جا کے پنجاب والا نہیں کر سکیں گے. پھر let me put it this way. Mr. Gohar is not, he's aggrieved by this order. He's aggrieved by the second order. یہ فائل کرنا چاہتے ہیں پشاور میں. What does stop him from doing that? Why can't he do it? Of course he can. But the parties come before us. The party ہے sir اس کیس میں پشاور والے. یہ تو issue ہے. He's a party in the Peshawar High Court. The question. He chooses to file in Peshawar in respect of the election that was challenged. Party. جی après vous le کیا ہے فرینچ میں کیا ہے après vous le deluge whatever. So he can't say I'm the party. No, but he is appointed. He is the one who got elected. He has been removed. As have other. چلیے خیر آپ نے یہ بات ہم سمجھ گئے مگر ان کا objection یہ تھا. چلیے میں سمجھ گیا ان کا. But my response is this: it's not the same cause of action, and they are different parties, and they are entitled to file in Peshawar, and Peshawar has the territorial jurisdiction. So simply because there is another case pending in the Lahore High Court, should not. جی ٹھیک جی. Now, sir, moving on. 645 پہ. جی 645. نہیں ہم اپنا کام کریں, آپ بتائیں گے. جی بس صرف یہ میں کہنا چاہ رہا تھا I can multitask. وہ پارٹیز اگر آپ دیکھیں گے تو وہ جو 14 لوگ تھے جو پٹیشنرز تھے اس میں, جو کمپلیننٹس تھے سو کالڈ, وہ بھی پہلے کیس میں نہیں ہے. جنہوں نے 14 لوگوں نے فائل کی کمپلینٹ وہ بھی لاہور والے کیس میں نہیں ہے. پٹیشنرز بھی لاہور والے کیس میں نہیں ہیں. نہیں وہ 14 والے پہلے کیس میں نہیں تھے. نہیں آپ تو ہیں نا سر, آپ ان کو نا پارٹی بناؤ تو کیا کریں. وہ پھر it will be misjoinder because they were part of the second order. چلیں. So یہ تو I think is a very I mean I'm very. یہ انہوں نے پٹیشن لگائی ہوئی ہے پیج 645 پہ. جی اس کی پارٹی کون ہے سر؟ یہ تحریک انصاف تھرو اٹس سیکریٹری جنرل عمر ایوب خان. سمپل. And number 2 is Imran Ahmed Khan Niazi. Correct. Both of them are not parties. Imran Khan is not party here. لیکن ایسے تو نہیں ہو سکتا. یا تو say he has got nothing to do with the party. He's not party here in this second petition. دیکھیں یہ تو نہیں کہ آپ کسی کو پارٹی نکال دو. ہم لسٹ پہ جائیں گے. چلیں ٹھیک ہے. تو لسٹ پہ versus election commission. وہ تو آپ 6 لوگوں کو اور پارٹی بنا دیں, آپ کہیں پارٹیز are different. جی. We have to see if the same issues raised. دیکھیے اب آپ اس میں مانگ رہے ہیں ڈیکلیریشن with regard to their order الیکشن کمیشن کا 23/11/2023 والا. آپ اپنا انٹرا پارٹی الیکشن کی آرڈر مانگ رہے ہیں, ٹھیک ہے, پہلے والے الیکشن کا جو جون میں ہوا. تو بھائی یہی اس کے بعد مزے کی بات یہ کہ وہ فل کورٹ نے کہا کہ یہ آپ کی پٹیشن تو انفریکچس ہو گئی. آپ نے کہا نہیں. جی میں نے کہا بالکل نہیں, بیکاز آئی سیڈ کہ اس کو میں آپ ان کی بات مان لیتے, کہتے ہیں ہاں جی انفریکچس ہو گئی ہے. پھر انہوں نے دوبارہ میرے خلاف I wanted to see. دیکھیے آپ یہ سن لیتے ہیں 657 پہ. When confronted with the query that since intra-party elections of Tehreek Insaf pursuant to order dated 13/9/23 passed by the Election Commission of Pakistan have been held as to how this petition is maintainable, Sayyid Ali Zafar, advocate representing the petitioner, submits that since similar question is already sub judice before a learned full bench of this court in WP so-and-so and other allied matters, propriety demands that instant petition be also referred to the learned full bench. لرنڈ باقی ریلیونٹ نہیں ہے. تو یہ تو آپ کی اپنی استدعا پہ انہوں نے آپ کی بات مان لی اور اس کے ساتھ لگا دیا. وہی الیکشن کا ایشو ہے. پھر آپ چلے گئے پشاور. میں دیکھیں سر, میں کون گیا پشاور؟ میکوہر, Umar Ayubs and all these people who went to Peshawar, against whom? ECP and the 14 people, in respect of what? In respect of the second election.
So it is not. हम आपको बता रहे हैं सिर्फ ये. अच्छा, और ये जो आप अभी कर रहे थे सर, you see the thing is कि at that particular point in time I was not sure कि ये मेरा इलेक्शन सेकंड वाला माना जाएगा कि नहीं, या इसका कोई डिस्प्यूट होगा कि नहीं. I was thinking कि ये तो अब खत्म हो जाएगा, and I waited to see कि वो अगर मान जाते तो फिर लाहौर ही जाते हैं ना. लाहौर के पास क्या जुरिसडिक्शन थी या नहीं, ये बताएं. लाहौर के पास जुरिसडिक्शन से मेरे लिहाज से बिल्कुल थी. तो फिर वहीं रहते हैं ना आप कहते जी मैंने करा लिया, लेकिन दोबारा ये नहीं मान जुरिसडिक्शन थी. हाँ, कंकरेंट जुरिसडिक्शन थी. नहीं, वो आपने इस्तेमाल कर ली ना जुरिसडिक्शन, ये बात है. देखिए ये आपके पास है कि आप कहाँ जाएं. एक जब आप nobody can force me to go anywhere. We agree with you. Yes. But so I am not going to pending. It's still pending till today. I think it's a separate cause of action, and I think it's separate parties. So I was entitled to go to Peshawar. Your petition tomorrow. The Lahore High Court 5 judges say that the election that was held by you was correct. तो ये तो उड़ गया इलेक्शन. नहीं, अब तो सर देखें. नहीं, देखिए ना, अगर मैं आपने कहा ये इलेक्शन मैंने बिल्कुल सही किया और इलेक्शन गलत है, तो ये आपका इलेक्शन दूसरा वाला. If I persist with the case, आप पे नहीं है अब कोर्ट ने उसका नोटिस ले लिया. तो उसमें देखिए, उसमें जो लोग मुंतखब हुए थे उनको आपने पार्टी नहीं बनाया. कोर्ट कहे कि जी नहीं, ये जो इलेक्शन हुआ था ईसीपी ने बिला वजह मसले खड़े किए, वो इलेक्शन बिल्कुल दुरुस्त था, आइन के कानून के सब के मुताबिक था. ठीक है, उसका क्या मतलब होगा, वो लोग जो वक्त इलेक्ट हुए थे वो होंगे, आप लोग कहीं नहीं होंगे, क्योंकि फिर इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है दूसरे इलेक्शन की. खुद इलेक्शन सही हो गया तो वो लोग भी अफेक्टेड होंगे. या आप पिक एंड चूज कैसे कर रहे हैं? वो उन लोगों को हम तरजीह क्यों ना दें? देखिए एक सेकेंड ना, आप क्यों तरजीह दें, और जो पहला इलेक्टेड जो आपके लोग हैं उनको हम क्यों ना तरजीह दें? आप अगर बहुत अच्छा हो, अगर पहली मेरी जो इलेक्शन है वो साहब फरमा रहे हैं, अगर वो वापस आ जाए, इमरान खान साहब बिकम बैक टू चेयरमैन एंड ओरिजिनल इलेक्शन कमीशन's ऑर्डर इज सेट असाइड, आई विल बी द हैप्पीएस्ट मैन. I will not be at all. That would be very great. Question of law. So that is why I'm saying that is a totally different aspect. Has he been removed as chairman? Just want to know as a fact. वो in fact election commission issued a notice which we challenged. It says what? The notice says that why you should not be removed as chairman of PTI because you have been disqualified under Article 62(1)(h). You accepted the point of view? नहीं, we challenged it. नहीं, तो आपने तो एक नया इलेक्शन चेयरमैन बना दिया. जी, आपने तो एक नया चेयरमैन बना दिया. नया बना दिया सर, because of that. So I mean question में समझ नहीं आई. नहीं तो फिर क्या, तो चेयरमैन तो ये हो गए, वो नहीं रहे. अभी तो फिलहाल तो यही है पोजीशन जी. फिर so that is what I'm saying. आपने बताया था ना कि आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा. नहीं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है सर, बिकॉज बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है. गौर साहब कहें जी मैं चेयरमैन हूँ, खत्म. गौर साहब कह सकते हैं, लेकिन नहीं, आपसे नहीं पूछ रहे हम कहेंगे नहीं. From what I know. नहीं, देखिए कॉन्फ्लिक्ट होता है जी. लोगों का कुछ पता नहीं होता है, आज एक पार्टी में होता है, कल दूसरे में होता है, कोई पता नहीं होता है किसी का. बहुत से कम लोग ऐसे जो खड़े रहते हैं अपनी पार्टियों के साथ. सपोजिंग वो खतरा हट जाए नियाजी साहब से, तो वो दोबारा चेयरमैन बन जाएंगे. कोई इलेक्शन प्रोसेस होगा. इलेक्शन तो सारे इलेक्शन होगा कि नहीं, एक और वो नहीं हटते, वो कहते हैं कि मैं नहीं. चेयरमैन जो है जी, चेयरमैन वो सिंगल पार्ट हो सकता है. पैनल पे अगर आना चाहें तो वो फिर हैज टू बी अ पैनल. यू कांट हैव री-इलेक्शन फॉर अ पैनल. तो इन दैट सिचुएशन गौहर को रिजाइन करना पड़ेगा. That's right. If he doesn't, then he doesn't. Okay. That is how it is. That is the law. So sir, now coming to my next ground, sir, is my point was discrimination, Article 25. And there I would humbly submit that there are 175 political parties. And 175 कितनी बोले? Political parties. 175 almost. And out of them, not a single one intra-party elections have been probed into like this.
बल्कि चैलेंज नहीं हुए ना इसलिए चलें आप ये कह सकते नहीं हैं प्रोब की बात नहीं है, आपने इलेक्शन कराया ही नहीं है, दिखाएं उसका जजमेंट। यही तो बात उनकी है कि करा ले इलेक्शन भाई, प्रोब वो नहीं करेंगे, आप करा लें जिस तरीके से भी कराना है करा के खत्म करें। और मैं आपको बताता हूँ सर क्यों नहीं है ये, आप चलें कह रहे हैं, बट मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन ने किया। इलेक्शन कमीशन का अपना एक प्रेसिडेंट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अपना एक प्रेसिडेंट है। हुमायूं अख्तर साहब के केस में इलेक्शन कमीशन डजंट मीन कि इलेक्शन कमीशन का आज एक चेयरमैन चेंज हो जाए तो वो इलेक्शन कमीशन चेंज हो जाती है। इलेक्शन कमीशन इज अ कंटीन्यूअस एंटिटी। इनका एक अपना सिर्फ जजमेंट है जिसमें इंट्रा पार्टी इलेक्शन डिस्प्यूट वाज ब्रॉट टू द इलेक्शन कमीशन। ये कौन से लॉ के तहत? बड़ा इंटरेस्टिंग ये फैक्ट मैं बताने लगा हूँ। रूपा के तहत है, पुराने लॉ के तहत? चलें वो आप नहीं मुझे नहीं पता, दैट इज नॉट द इशू। नहीं पूछ रहे हैं आपसे ये कौन सा जजमेंट है, बताएं ना, वो रिपोर्टेड है क्या? ये आप पेज 853 पे आ जाएं सर। कौन सी पार्ट? हाँ इसी पेपर बुक में इनकी इन्होंने लगाया पेपर बुक में, मैंने हाई कोर्ट के सामने लिखा था तो हमें आपने कुछ नहीं दी है बुक। मैं अभी है 853 मैं थोड़ी देर पढ़ दूं जितनी देर में आ रहा है। जी बता दीजिए। इन व्यू ऑफ सच प्रोविजंस फॉर रेजोल्यूशन ऑफ इंटरनल डिस्प्यूट्स of a political party in its own constitution. In view of such provisions for resolution of internal disputes of a political party in its constitution, there being an inbuilt mechanism providing remedy for resolution of internal disputes between members and party is to be resorted to by the aggrieved member of the party for redress, the petitioner's learned counsel could not point out any provision of law in the election laws or the Constitution of Pakistan whereby the Chief Election Commissioner could play any role with regard to the resolution of internal disputes between members and the party. The contention that the certificate was not signed by the authorized person also has no force in that on perusal of the certificate it was observed that same was signed by the authorized person. कब का ऑर्डर है? This order is dated 31st October 2009, and because of this judgment they have not touched an intra-party election of any political रूपा party. के प्रोविजंस कौन से थे जो उस वक्त मौजूद थे जो अब नहीं है? 2017 के कोई चेंज नहीं इसमें। चेंज तो 215 वगैरह में तो बल्कि प्रोसीजर डाल दिए ना उन्होंने, यही तो आपसे हम पूछ रहे हैं। बल्कि जब ये केस आया इलेक्शन का है जी कोई पॉलिटिकल पार्टीज सो ये किसने फाइल की थी पिटिशन? ये हुमायूं अख्तर। ये किस पार्टी में? उस वक्त PML जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग। उस वक्त क्या बदल गई है? अब तो किसी और पार्टी में प्रॉब्लम। दस पार्टी के अब शायद अब वो स्प्लिट हो गई फिर पार्टी उसके बाद। ये तो एक उसका कमिश्नर का ऑर्डर है। सर कमीशन इज ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर। नहीं तो इसको कोई नोटिस कुछ नहीं हुआ था इसमें? सर सारे पार्टीज हैं, आर्गुमेंट्स में वसीम सजाद साहब एक तरफ से कॉन्टेक्स्ट समझना चाह रहे हैं ना क्या इशू था उनके सामने। पढ़ देता हूँ। These are two petitions, one filed by Mr. Humayun Akhtar Khan and another filed by Mr. Mumtaz Akdas Guraya, wherein the first petition has prayed that appropriate action be taken to remove undesired, illegal and unwarranted acts and omissions on the part of the respondent, Chaudhry Shahzad and Pakistan Muslim League and others, so as to streamline the democratic principles, whereas in the later petition by Guraya, his prayer has been that the intra-party elections of Pakistan Muslim League allegedly held on 8/7/2009 and 20th July 2009 in respect of provincial and central office bearers be declared void ab initio and against law on the subject, and further that certificate under section 12 of the political parties order 2002 be not notified, published in the official gazette. Both the petitions are being disposed of by this common order. ये तो कोई और पार्टी है? कौन सी पार्टी है? I'm not following this. Your Lordship, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग का
انٹرنل ڈسپیوٹ ہو گیا, ایک پارٹی قرایا ہیں جنہوں نے چیلنج کیا انٹرا پارٹی الیکشن, اور انہوں نے کہا کہ انٹرا پارٹی الیکشنز بھی ڈکلیئرڈ وائڈ. نہیں, مگر یہ چودھری شجاعت حسین پاکستان مسلم لیگ کے صدر کب تھے؟ وہ ایک زمانے میں ہوں گے, شاید بنا دیے گئے ہوں گے اس وقت. یہ جو آرڈر پاس ہوا ہے یہ اس کس لاء کے تحت ہوا ہے؟ دی پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002, اس کے تحت ہوا ہے یہ جی. پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کے تحت ہوا ہے. دیکھ لیں ذرا پلیز اس میں. جی جی اس کے تحت ہوا. جی اس کے تحت ہوا. It is. چلیں خیر, I can't follow this. جی. So, Your Lordship, my position is that the Election Commission of Pakistan نے اپنے آرڈر میں کہا ہے میرے پاس کوئی اختیار نہیں کہ میں نہیں, یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ ان کا جو ڈسپیوٹ ہے, مگر ادھر ذرا سا فرق ہے. یہاں وہ کہہ رہے ہیں بھائی الیکشن کرا لیں, آپ تسلیم کرتے ہیں جی ہاں الیکشن نہیں کرائے, ہمیں تھوڑا وقت دے دیجئے. تو ذرا سا یہ فرق ہو گیا. جب الیکشن کرانے آپ گئے تو دوسرے لوگ آ گئے, نامنیشن پیپر دیں, انہوں نے کہا جی ہمیں تو پارٹیسپیٹ ہی نہیں آپ نے کرنے دیا. یہ ان کا آپس میں جھگڑا تھا کہ الیکشن صحیح نہیں ہوئے. یہ بھی یہ ہوئی ہے سر. ہاں, یہ بھی آپس میں جھگڑا. ممبرز, سو کالڈ ممبرز, جنہیں ازیوم کریں ایک سیکنڈ کے لیے کہ سو کالڈ لوگ آ گئے, انہوں نے کہا جی ہمیں نامنیشن پیپرز نہیں دیے. اس جھگڑے کی وجہ سے الیکشن کمیشن آف پاکستان Are you saying کہ whatever happened, دیکھیں ایک ہوتا ہے اس کو 10 ووٹ نہیں پڑے, اس کو 20 ووٹ پڑے, وہ تو جھگڑا ہو گیا, سمجھ لیجیے. یہاں تو وہ بھی نہیں, وہ کہہ رہے ہیں آپ مجھے الیکشن نہیں لڑنے دے رہے ہیں اور آپ نے الیکشن کرایا ہی نہیں ہے. یہ آئی واش ہے. پہلی بات تو یہ ہے کنٹینشن ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کنٹینشن ہی ہے. دیر از نو پروف آف دیٹ. وہ کوئی ایویڈنس لے کے آئیں, بٹ would that proof not be resting on your shoulders? They cannot prove a negative. They cannot establish that the elections were held. No, they cannot. Nor can they establish elections were not held. Ji. They can only make an allegation. Now the burden will, I would imagine, in these sort of situations, you would say, no, this is elections. اسی لیے تو سر الیکشن کی پٹیشن نے الیکشن کمیشن نے یہ نہیں کہا کہ الیکشن نہیں ہوئے. انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن ہوئے ہیں, لیکن آپ کے irregularity تھی اپوائنٹمنٹ آف یور الیکشن کمیشن. باریکیوں میں چلے گئے. تو وہ اسی لیے اگر نہ لکھ کیا ہوتا یا ہمیں کہتے وہ کہ بھئی آپ پروو کریں الیکشن, تو ہم پھر لوگ لے آتے 500 ایویڈنس میں آتے کہ بھئی دیکھیں اس دن ووٹنگ ہوئی ہے, اس دن وہ یہ پروسیس ہوا ہے. ہم اپنے سارے جو لوگ تھے ریٹرننگ افسرز ان کو لے آتے کہ جی وہ نامنیشن پیپرز پہ بیٹھے رہے, کوئی آیا نہیں. بٹ آگے بڑھتے ہیں. جی آگے بڑھتے ہیں. Your Lordship, next point. Where's the attorney? نہیں کچھ نہ کہ attorney general is here. My lord, he is here, but he is not in uniform. ایک second, let him not come here. When we rise, tell him to come and see me in chamber. My lord. ٹھیک. جی. Your Lordship, an issue was raised کہ مسٹر اسد عمر جو ہیں وہ پارٹی کے جنرل سیکرٹری ابھی تک ہیں. مسٹر عمر ایوب از ناٹ اے پارٹی سیکرٹری. مسٹر اسد عمر جو ہیں سر وہ ایکچولی ہی واز ڈیٹینڈ, اینڈ آفٹر ہز ڈیٹینشن ہی کیم آؤٹ and he came on the TV, on the national television, and he announced that I am resigning from my office. Why? He didn't disclose, but this was May 24th, 23. He said I can't continue. He does disclose in the document that you filed. Ji. کیا ریزن دیا تھا؟ ٹھیک ہے, اوکے. سو ہی ڈسکلوز دا ریزن اینڈ ہی پوائنٹ بینگ دیٹ ہی ریزائنڈ. ناؤ اف ہی ریزائنڈ, سو مسٹر عمر ایوب who was then the deputy additional secretary general, in writing resign kya, or that was only a media statement? It was on the basis of the statement he left his post. And then Mr. Umar Ayub Khan did he resign as a member of the party, the office holder of the party? No, he as an office holder.
بعد میں سب وہ بھی ریزائن کر پارٹی بھی چھوڑ دی. پارٹی بھی چھوڑ دی. I've been informed that he's left the party now. But so the point being, he was the star of your party. Ji, star the na. Yes, he was, I think. And I mean, جو بھی ان کو مجبوری ہوگی, I don't want to go into that. ان کی مجبوری نہیں, انہیں واضح طور پہ لکھ دیا کیوں میں ریزائن کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, جو آپ نے ڈاکومنٹ فائل کیا, unless this document is not correct. نہیں, it is. ہاں, it is correct. پھر انہوں نے تو ریزن دیا ہے. جی, انہوں نے ریزن بتا دیا کہ میں اس لیے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, فالوئنگ دی ایونٹس آف May 9th. انہوں نے اپنا ریزن دے کے وہ چلے گئے. بٹ یہ اسی لیے ہم کہتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز آر ویری ویلیوبل ایسٹ آف دا نیشن. جی, تو ان کو ہم ڈس فنکشنل نہیں کر سکتے سر. وائی شوڈ دا ادرز لیو اینڈ ہی اسٹے. ہم دوسری طرح سے دیکھ رہے ہیں. جی, وائی شوڈ دا ادرز لیو اینڈ ہی اسٹے. ہی مینس کیا نام ان کا, اسد عمر. Why should he not leave? Why should he stay and the others leave? یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. نہیں, but he opted out. He opted out. اب یہ سارے مسئلے آپ ہی کی پارٹی میں کیوں ہو رہے ہیں سر؟ بیکاز آپ دیکھیں, جو ہسٹری دیکھیں, پہلے باقی پارٹی سے کوئی مسئلے کچھ نہیں کہا, کسی اور نے تو نہیں کہا کہ جا کے کرو یا نہ کرو. کون سی چوزن پارٹی ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کے مخالفین نے کچھ کیا ہوتا تو سمجھ آتا ہے. یہ تو آپ الیکشن نہیں کرا رہے ہیں, آپ کے مخالفین تو آپ کو نہیں کہہ رہے نہ کرو. ہو سکتا ہے بہت خوش ہوں, الیکشن کرائے خود ہی انہوں نے اپنے آپ کو مسئلے کھڑے کر رہے. پھر یہ بھی بات مخالفین آپ کو خوش elections کرائے سے. So sir, to sum up, keeping you the mind and all that. Sir, so basically I have highlighted number one that there is no jurisdiction of the ECP, and that has been proved from their own judgment also, which I have quoted at the end. The fact that there is unless there is an express jurisdiction conferred on a authority, there is no imply. Number two, the fact is that Article 17 آپ کو میرے سے بہت کیا ہے. Article 17 کے تحت it is not just PTI but the public that will be disfranchised. PTI will become dysfunctional. Dysfunctional اگر ہو جائے گی just because of one person not getting the nomination paper, it is too disproportionate. It is too disproportionate election. So میں صرف sum up کر رہا ہوں. So my therefore request would be کہ also the interpretation sought کہ آپ اس کو ہمیں ٹائٹل رائٹ دے دیں ٹرائل کورٹ. دیٹ آلسو از ناٹ پاسبل. اگر ٹرائل کورٹ بننا ہی ہے تو پھر پوری طرح آرٹیکل 10A کو آپ فالو کریں and give us the chance to actually present before you the evidence and all that. یہ الیکشن کمیشن کو میں کہہ رہا ہوں. اینڈ دین آف کورس there has been discrimination because nobody else has been ever challenged that. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی دوسرا کمپلین نہیں کیا, لیکن یہاں تو آلموسٹ سو موٹو کیا. ڈسکریمنیشن 13 پارٹیز کو نے یہی ایکشن لیا, ان کے بھی خلاف نہیں کیا سر. اور اگر آپ وہ نوٹس پڑھیں جس سے آغاز کیا, اس میں بھی لکھا ہے کہ ہم یہ سب پارٹیز کو نوٹس دے رہے ہیں. سر پڑھ لیتے ہیں سر. 21 مئی کی جو نوٹس ہے پڑھ لیتے ہیں. اس میں پڑھی, اس میں میں نے کہیں جی میں نے پڑھا تھا. میں نے پڑھا, وہ کھولے ہیں ان کا. اس میں سر آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایلیگیشن یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کے انٹرا پارٹی الیکشن کو کی ارریگولیرٹیز کو دیکھنا چاہتے ہیں. پلیز لیٹ اس ڈیفرینشیٹ فار اے منٹ. نہیں آپ ذرا دیکھ لیتے ہیں نا الیکشن کی نوٹس نکالیں. جی 21 مئی کی کہاں گئی نوٹس؟ اگر 21 مئی کی نوٹس پڑھ لیتے ہیں نا. مئی کا نوٹس ہے, میں آپ کا کیا نے پیج تھا بتائیں. 398 پیج ہے. پیج 398 ہے میرا خیال ہے. 398 21 میں 2022 فائنل نوٹس فار کنڈکٹ آف انٹر پارٹی. نہیں سر وہ بات کر رہے ہیں آئی تھنک جو نوٹسز باقی پارٹیز کو دیے میں وہ دیکھنا چاہ رہا تھا. Directed to refer to the correspondence resting on the subject. Title دیتے ہیں discrimination کی بات کر رہا ہوں میں. Conduct of intra-party elections. جی ٹھیک ہے. Attention is drawn so and so 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 conduct. سر اگر نہ کروں میں, let me put it this way, میں نہ نہیں کروں اگر الیکشن تو پھر تو مجھے آپ پوچھ لیں.
کہ جی الیکشن آپ نے نہیں کیا, کیوں نہیں کیا, بٹ اگر میں کرتا ہوں اور آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے کیا تو ہے لیکن ہم اس میں سے یہ غلطی نکالتے ہیں, دیٹ از ویئر مائی پرابلم آپ کی کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں ہے نا. جی چلیں, وہ یہ کہتے ہیں تو میں اس پاور کی بات کر رہا ہوں کہ یہ کہاں سے ان کے پاس پاور آ رہی ہے کہ وہ اتنی نیٹی گریٹی میں جائیں کہ ایک ٹریبیونل بن جائیں. اینڈ آئی تھنک the honorable leadership will realize what I'm saying in terms of the fact کہ میں نے نہ کی, ایک ہے میں نے الیکشن کیا ہی نہیں سرے سے اور میں دھن دھناتا پھر رہا ہوں کہ جی میں نے الیکشن نہیں کرانا. چلے اس سینس میں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ آپ کو ایویڈنس کی بھی ضرورت نہیں, آپ سمپلی کہیں گے کہ جی آپ نے کیوں نہیں کرایا, بٹ میں نے کرا لیا. آپ کہتے ہیں کہ میری یہ غلطی ہوئی, یہ غلطیاں ہوئی 2 3 4 10, یہ کہاں سے پاور آ رہی ہے میڈم ٹو دا الیکشن کمیشن کہ وہ یہ غلطیوں میں اس طرح پروو کرے جس طرح کہ الیکشن ٹریبیونل دیا ہوا الیکشن ایکٹ میں. دس از ویئر آئی تھنک دا انٹائر کیس فالز ڈاؤن. اب لاسٹ پہ میں دکھاتا ہوں ججمنٹ آف دا آنریبل ہائی کورٹ, جو آنریبل ہائی کورٹ نے کیا. آئی تھنک اٹس اے گریٹ ججمنٹ اینڈ انہوں نے ایگزیکٹلی یہی کیا ہے. آنریبل ہائی کورٹ پشاور نے ایگزیکٹلی یہی کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ الیکشن ٹھیک ہوا, غلط ہوا, اچھا ہوا, برا ہوا. ہمیں دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس جورسڈکشن تھی کہ نہیں. پھر یہ کون چیک کرے گا؟ ٹھیک, پڑھ لیتے ہیں سر. So, who will check these irregularities? اگر کچھ ہوتی ہے تو کہاں جائیں گے؟ سول کورٹ میں. وہی جو الیکشن کمیشن خود کہہ رہے ہیں اپنے آرڈر میں, اس نے کہا ہے کہ آپ جائیں سول کورٹ میں, یہ ممبرز کا ایشو ہے, ہمیں کیوں ہر پارٹی کا انوالو کر رہے ہیں, ورنہ ہوگا کیا جی کہ ایوری پولیٹیکل پارٹی. پرانے آرڈر کی بات کریں 2009 میں جواب دے دوں, 175 پولیٹیکل پارٹیز میں ہر روز جھگڑے ہوں گے, ہر روز وہ الیکشن کمیشن میں آئیں گے, ایک کلیم کرے گا جی میرا یہ ووٹ نہیں ہوا, میرا یہ ٹھیک نہیں ہوا, تو وہ تو ایک سپروائزری ریگولیٹری اتھارٹی بن جائے گی. چلیے ظفر صاحب, ہم آپ کی بات سے اگری کر رہے ہیں, یہ تھوڑا سا بنیادی فرق ہے. ایک ہوتا ہے ڈیٹیلنگ, کس کو کتنے ووٹ پڑے فلاں فلاں. آپ کل کو کہہ دیں جی گور صاحب کو 1 لاکھ پڑے ووٹ, ٹھیک ہے, بابر صاحب کو 10,000 پڑے, یہ تو چلیں آپ کی بات مان لی, الیکشن کمشنر نے سرٹیفائی کر دیا. مگر یہاں ذرا سا تھوڑا سا کیس فرق ہے. ان کا کہنا ہے الیکشن ہوئے ہی نہیں ہے, جو جس کو آپ الیکشن کہہ رہے ہیں یہ بیسک تقاضے پورا نہیں کر رہے الیکشنز کے, یہ فرق ہے. نیٹی گریٹی میں نہیں جا رہے ہیں کہ جی نام اپنا غلط, اگر یہ کہہ رہے ہوتے شناختی کارڈ نمبر غلط ہو گیا. لارڈشپ چلیں, اگر یہ الیکشن کمیشن یہ کہہ رہی ہوتی تو پھر بھی میں آپ کے سامنے وہ بحث کرتا. الیکشن کمیشن یہ نہیں کہہ رہی. الیکشن کمیشن تو کہتی ہے کہ آپ نے الیکشن کرا لیے لیکن آپ کی اپوائنٹمنٹس غلط ہیں. تو یہ بہت ہائی کورٹ نے کہا ہے ایبزرو پروویژن آف لا. اب یہ اگر آپ کہیں نہ وائریز آپ کے سامنے ہے, نہ آپ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر رہے ہیں. پیراگراف 25 انٹرپریٹیشن از ابسرڈ. I still insist. پیج بھی 25 I will start reading. پیرا بھی 25 ہے اور یہ کنکلوژن ہے. میں پیرا 10 سے شروع کرتا ہوں سر. The petitioners have questioned the impugned para 10, page 7. The petitioners have questioned the impugned order on the legal as well as factual premise. However, we are mindful of our jurisdictional contours that the factual finding of ECP regarding the conduct of election cannot be substituted by this court. Therefore, if it is agree 100%, we agree with this. یہ تو آپ کے خلاف جا رہی ہے بات. Doesn't matter. Doesn't matter. I am fine with that. میں نہیں کر سکتا. I am basically convinced on the jurisdictional issue and the fact that آپ وہ انٹرپریٹ کریں گے کلوز کی. میں اپنی پرسنل آپ کو اوپینین دوں. آپ کی پٹیشن کہاں تھی؟ آپ وہ اس طرح انٹرپریٹ کریں گے اس کو جو کہ آرٹیکل 17 کے کانسوننس میں ہے. اینڈ یور لارڈشپ از ناٹ گوئنگ ٹو ڈینائی اے سمبل ٹو اے پولیٹیکل پارٹی کہ وہ ڈسفنکشنل ہو جائے. Don't put it all like that. I can't. We will turn it around and say you show us that you had elections. Don't say we lordship will deny. Of course we don't want to do any such thing. Sir, 11 پڑھ دوں جی آپ. Jurisdiction of this court and maintainability, یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے شاید. I will leave that. ہم نے پڑھ تو لیا ہے, اگر آپ کوئی خاص بات بتانا چاہیں بتا دیں. اس میں چھوڑ دیتے ہیں, ہم آگے چلتے ہیں سر. جی
अब हम आ जाते हैं, एक चीज उन्होंने डिक्लेयर नहीं की जो आपने जिसकी पेज 14 नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि इलेक्शन हुए आपके, वो कहाँ कहा इन्होंने ऑर्डर में? कोई डील ही नहीं हुआ है ना, वो एस्पेक्ट ही डील नहीं है ऑर्डर में कि वो आपके इलेक्शन के बारे में उन्होंने कहा कि दिस इज अ कोरम, दिस इज अ बियॉन्ड जुरिसडिक्शन वॉइड ऑर्डर, and I still say कि it is a void order. So इलेक्शन कमीशन के पास पावर ही नहीं है कि वो मेरी इंटर पार्टी इलेक्शंस को देखे. Now let us look at 15 para. Before embarking आपको अगर ये पावर ही नहीं तो आपको अपनी पिटिशन में ये बात करने की जरूरत क्यों पेश आई? जी, आप इलेक्शन मेरे हो गए फिर ना बात करते, वो सिंबल नहीं दे रहे थे. नहीं तो आप सिंबल बात करते ना कि मुझे सिंबल चाहिए, आपने नहीं कहा एंड में. आप पढ़िए अपनी इलेक्शन, आपकी पिटिशन पेज 33 पे आइए. मैं जरा ये पढ़ लूं ऑर्डर से, फिर मैं आता हूं. एक सेकंड, ये पढ़ रहे हैं चूंकि आई डोंट वांट टू लीव इट इन बिटवीन. लेट मी फिनिश दिस. पैराग्राफ आप पढ़ रहे हैं? पैराग्राफ 16 at page 16. After quoting the Election Act, admittedly ECP is not a court or a tribunal. Muhammad Hanif Abbasi's case, PLD 2018 Supreme Court. However, Article 2183 of the Constitution entrusts the Election Commission with the duty to organize and conduct the election and empowers it in general terms to make such arrangements as are necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly, and in accordance with law, and that corrupt practices are guarded against. The power so conferred is restricted to the fulfillment of the duties specified, that is, to organize and conduct the election. Therefore, in order to understand the amplitude of this power, we need to find out the meaning of the term election as used in Article 2183. Do we need to do that? Okay. It's such a profound thing that we have to discover what is the meaning of elections. 18 पे आ जाते हैं, ठीक है. 18 पे. I'm going to go along with your lordship thing. I think you're right. In order to sum up the aforesaid discussion, 18 para. It is trite law that Election Commission of Pakistan, despite being a constitutional body, has the jurisdiction to exercise its powers either under the Constitution or the Election Act 2017. Its general power under 218 cannot be abridged by any legislative instrument, Act of Parliament. However, its other functions arising out of the Election Act. In effect, the court is striking down the statutory provision. ये आप दोबारा पढ़िए, ये जो आपने भी पढ़ा ना, बिल्कुल यही कह रही है. Its general power under 2183 cannot be abridged by any legislative instrument, Act of Parliament. हाँ, अगला जुमला आपने पढ़ा. However, its other functions arising out of Election Act must be exercised with the expressed authority of the Election Act. So that's fine. वो ब्रिज की बात नहीं वो कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कोर्ट के इलेक्शन एक्ट के तहत जो एक्सप्रेसली लिखा है वो कर रहे हैं. Indeed, it is settled law that a jurisdictional fact is a fact that must exist before a court, tribunal, or authority assumes jurisdiction over a particular matter. A jurisdictional fact is one on existence or non-existence of which सारी बातें depends jurisdiction. आप हमें बता दें jurisdiction ने लिखा है कि सिविल कोर्ट का है. जी मैं पढ़ रहा हूँ सर. नहीं बता देना कहाँ लिखा है. नहीं आप पूरा पैराग्राफ पढ़ लीजिए ना. जी पढ़ रहा हूँ सर. A jurisdictional fact is one on existence or non-existence of which depends jurisdiction of a court, a tribunal, or an authority. It is the fact upon which an administrative agency's power to act depends. If the jurisdictional fact does not exist, the court, authority, or officer cannot act. If a court or authority wrongly assumes the existence of such fact, the order can be questioned by writ of certiorari. The underlying principle is that by erroneously assuming existence of such jurisdictional fact, no authority can confer upon itself jurisdiction which otherwise does not possess. Existence of jurisdictional fact is sine qua non for the exercise of power. If the jurisdictional fact exists, the authority can proceed with the case. यहाँ mutually destructive हो गया यहाँ पे आके. वो आप कह रहे हैं कि jurisdictional fact है तो authority कर सकता है. If it exists. तो if it is तो उन्होंने आपको show cause दे के exercise किया ना अपना जो 215 के अंदर. सर वो तो अगर आप नहीं मैं सिर्फ judgment की अब देखें judgment के अंदर मुख्तलिफ पैराग्राफ हैं जो आपस में contrary हैं to the findings of the learned judges. With respect, it is not. Destructive हैं वो. With respect, it is not. कर नहीं सकते कह रहे दूसरी तरफ कहते हैं कर सकते हैं. I think the honourable judges existence of jurisdictional fact is sine qua non for the exercise of power. I think what the honourable judges are saying. आप पढ़ लीजिए. पढ़ लेता हूँ लेकिन वो जो कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं. Once the authority has jurisdiction in the matter,
on existence of jurisdictional fact. It can decide the fact in issue or adjudicatory fact. A wrong decision on fact in issue or an adjudicatory fact would not make the decision of the authority without jurisdiction invulnerable provided essentially. Against हो गया ये. Against नहीं हुआ सर, ये law है. A wrong decision of fact in issue or an adjudicatory fact would not make the decision of the authority without jurisdiction. With respect, let me say. कितना इसके अंदर तजाद है आप देखें ना मुख्तलिफ जगहों पे तीन लाइनों में तजाद है. I think there's no तजाद and for saying frankly ये बता this is the law. ये तो law कह रहे हैं कि law बता रहे हैं. आपने तो नहीं लिखा खैर you can't be responsible. नहीं but law भी बता रहे हैं. आगे चलें. ये बता दें कि इस जजमेंट में उन्होंने कहा कि ये डिस्प्यूट कहाँ ले जा सकते हैं. पढ़ते हैं सर. नहीं पढ़ते नहीं, सिर्फ बता दें वो वाला जुमला बता दें कि ये सिविल कोर्ट में जाएगी मैटर. Having discussed the general jurisdiction of the ECP and referred to the relevant provision of the Election Act, we now proceed to the moot question whether the ECP has any jurisdiction to question, probe and adjudicate the intra-party election dispute or procedural impropriety in the election process of a political party. It is envisaged by section 2. आप देखें वो अब इतना टाइम तो नहीं है ना, अब जरा सिर्फ अभी बता दें वो किस जगह जाए शख्स. ये जजमेंट के चैलेंज की हुई है, इसलिए आई थिंक ये बड़ा जरूरी है कि इसको हम थोड़ा सा देख लें क्योंकि आप देख लें ना आगे पीछे करना है. बिल्कुल देखें आप. हो सकता है मखदूम साहब से के बाद वो राइट ऑफ रिप्लाई एक्सरसाइज करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे. जी ठीक है, तो हम ये एक या ये कर लें. अगर आप सिर्फ यही पढ़ना चाहते हैं, हमें 1, 2, 3 सवाल हैं. जी पहला सवाल ये है कि इस जजमेंट में इम्प्यून जजमेंट में उन्होंने ये बताया है या तो वही आर्गुमेंट रखे जो पहले ईसीपी ने खुद लिया था कि ये तो कॉस्मेटिक कानून है. वो सुप्रीम कोर्ट ने या तो आप करें मगर आप भी मान गए कॉस्मेटिक नहीं है. ये उन्होंने कहा इनके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है. अब मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ, इस जजमेंट में उन्होंने ये हमें बताया कि किसके पास जुरिस्डिक्शन है. एक ये पॉइंट आप नोट कर लें, ये जरा देख लीजिएगा ना कहीं उन्होंने जिक्र किया इस बात का, मुझे नहीं पता, मैंने बहुत सरसरी तौर पे देखा है. दूसरी बात ये है कि अब आप अपनी पिटिशन पे आ जाइए जरा. जी ये पढ़ने के बाद सिर्फ नहीं आप पूछ लें. नहीं हम आप देखिए आप खड़े होके पढ़ रहे हैं ना, हम मखदूम साहब को जो सुनेंगे फिर आप हमें जब ये पढ़ लेंगे पूरा फिर आप नोट कर लेता हूँ सर. जी अच्छा, अब आप अपनी पिटिशन पे आ जाइए पेज 33 पे. जी पेपर बुक पे. जी ठीक है. जी इसका पैराग्राफ 2 पढ़िए. जी that in the impugned order ये वाला जी thank you. That in the impugned order, ECP has accepted as a fact that PTI's intra-party elections were held on 2/12/2023. पढ़ते रहे. There was no irregularity and defect in the manner and conduct of the intra-party elections. And C, the certificate as required by Section 209 of the Election Act, along with all the relevant documents, has been provided to ECP, and there is no deficiency therein. अब paragraph 4 पढ़ लें. According इसको छोड़ दूं बाकी. हाँ वो मैं आपको कुछ और बात पे ले जाऊंगा. Okay. 4. The irrelevant, unjustified, arbitrary, malafide and illegal reason given for setting aside PTI's intra-party elections, declaring the same void and making PTI dysfunctional as a political party. Declaring the same void. जी सही है ना. जी अब आप अपनी prayer clause में आ जाइए. आपको अब कॉन्ट्री डिक्लेरेशन सीख करना चाहिए कि my elections were गुड प्रॉपर जो भी लफ्ज इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, वो डिक्लेरेशन आपने कहाँ सीख किया है? I don't my आप चले गए स्ट्रेट अवे सिंबल पे. जी वो इलेक्शन से उठेगा ना बात. जहां तक मेरा अगर आपका इलेक्शन सही है तो सिंबल वगैरह सारी चीजें आपको मिल जाएंगी. इलेक्शन नहीं हुआ या अगर इतना गलत तरीके से हुआ कि उसको तस्वुर नहीं किया जाए इलेक्शन, फिर आपको एक डिक्लेरेशन तो सीख करें ना उसका. अब आप देखें आपने जो व्यू में पॉइंट नोटेड है लेकिन मैं इसका जवाब दे देता हूं जल्दी से. नहीं अभी देना चाहेंगे या मैं सिर्फ आपको ये पॉइंट के छोड़ रहा था. ओके. या मखदूम साहब के बाद आप सोच के जवाब देते हैं. ठीक है मैं देना चाहे अभी दे दें. मैं अभी भी दे देता हूं जी, बाकी सोच भी लूंगा. दोनों कर लेता हूं. चूज बोथ ऑप्शंस. कंकरेंट जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज करते हुए. In view of the foregoing, it is respectively prayed, मैंने एक प्रे किया सर कि hold and declare that the impugned order is without jurisdiction.
So if the impugned order is without jurisdiction, then all that is stated in it would automatically come to an end. That would be my. Don't you think a separate declaration would be sought? क्योंकि बाकी देखें आप specifics में चले गए हैं A B C D E F, मगर जो primary declaration है, where I think the most important declaration on the election, because ये इधर उधर की मीन मेखे निकालने हम नहीं, हम आपके साथ हैं, ठीक है, बुनियादी बात पे हम चल रहे हैं बस. इलेक्शन क्यों? क्योंकि जमहूरियत है. या तो आप कहते हैं जी फिर वो one person one man show चले, फिर वो एक तरीका है, फर्क ही है, फिर वो उसी तरफ से चले. वो आपके आर्गुमेंट्स हम नोट कर लेंगे जी, हमारे लीडर ये जो वो हम करेंगे, इलेक्शन वगैरह की कोई जरूरत नहीं पार्टी में. ये भी आपका मौक़िफ़ हो सकता है, मगर ये आप मौक़िफ़ ले नहीं रहे, ठीक है. तो आप जब जमहूरियत चाहते हैं, इनका सारी बहस इशू सब कुछ एक नोटिस से शुरू हुआ, भाई इलेक्शन करवा लें, इलेक्शन करवा लें. फिर उन्होंने धमकी देना शुरू कर दी, शो कॉज नोटिस, अगर नहीं करेंगे तो हम आपका इलेक्शन सिंबल ले लेंगे. अदरवाइज इनके पास कोई हथियार तो नहीं है कि आपको इलेक्शन करवाएं. तो कुछ उन्होंने ये हथियार इस्तेमाल किया. सिर्फ आपको ये सवाल पे आप जवाब देना चाहें, इसको दे या फिर वापस पे देंगे? ये कंक्लूजन भी पढ़ लीजिए पेज 25 पे ना. मैं अभी 19 पे था सर. हाँ नहीं, अगर आप बाद में देखना चाहते हैं बाद में सुन, ठीक है, एज योर कॉल. ठीक है सर. मैं I'll just कंक्लूजन को जरा पढ़े ना, इसमें क्वेश्चन है, कंक्लूजन का पढ़ लीजिए जरा, छोटा पैराग्राफ. हाँ लास्ट पेज 25 पैराग्राफ 19 और 20 ना पेज ना पढ़ लें सर. आप ये पढ़ लेना पहले, फिर पढ़ लीजिएगा. नहीं, आप बाद में मौका देंगे, माय लॉर्ड कह रहे हैं पढ़ लें जरा. 25 पढ़ लें. पूछना चाह रहा हूँ ये किसका जिक्र कर रहे हैं? The survey of the case law stated above and the enabling provision of the Constitution as well as the Act lead us to the conclusion that it is the fundamental right of every citizen of Pakistan not only to form political party, but the political party should be provided a conducive atmosphere to contest elections for the Parliament, Provincial Assembly, Senate, and to form a government. ये सब हम आगे बढ़िए. It has the right to contest election under a common symbol. This constitutional right cannot be denied to it on the basis of ये jump हुआ जरा. It cannot be मेरा भी denied केस ये है. on the basis of absurd provision of law. अब absurd provision of law कौन सा? I think वो कह ये रहे हैं कि on the basis जो interpretation अगर वो absurd है तो उसको strike down होना चाहिए, because वायरिस तो अंदर चैलेंज है ही नहीं. अगर अंदर पढ़ेंगे तो it is not the provision of law, वो इसको absurd कह रहे हैं. वो कह रहे हैं जो interpretation sought to be placed upon it. आगे चलें, 3 लाइन और पढ़ लीजिए. Therefore, the impugned decision of ECP is backed by no legal provision either under the Act or under the Constitution. Therefore, the same is illegal. मेरा केस ये है. अभी सुनिए एक मिनट. पैराग्राफ 26 के अंदर उन्होंने आपकी प्रेयर जो थी शॉर्ट ऑर्डर रिप्रोड्यूस किया जी. पैराग्राफ रोमन 3 पेज 26 के ऊपर आप पढ़िए जी. जो मजीद आपको डिक्लेरेशन दे रहे हैं वो पढ़ें. It is further held and declared that Pakistan Tehreek-e-Insaf is entitled to the election symbol strictly in terms of section 215 and 217. बात तो फिर वही कह दी उन्होंने 215 में तो सारा केस चलाया है आपका. वो कह रहा है अगर ये एंटाइटल हैं 215 और 217 में तो दे दो. तो 215 में तो पूरा केस चला है आपका. 215 में गलत चला दिया ना सर. इन्होंने गलत चलाया. इन्होंने ये कहा कि आपको हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन चूंकि आपका इरेगुलर था इसलिए हम ये करेंगे. मैं ये कह रहा हूँ 215 का, मैं ये कह रहा हूँ सर 215 का कि 215 is only. We are not going to interpret the judgment of the Peshawar High Court being a Supreme Court. We are the appellate forum. हम ये देख रहे हैं कि जो ऑर्डर में है, आप खुद देखें ना, वो कह रहे हैं 215 217 के तहत 215 में तो पूरा केस इसलिए मैंने कहा 19 पढ़ लेते हैं. 19 ऑनवर्ड्स पढ़ लेते हैं. 215 जब तक है, जो कि खुद हाई कोर्ट मान भी रहा है कि 215 और 217 के तहत मैं डिक्लेयर कर रहा हूं कि इनको सिंबल दो जी. तो 215 के तहत तो डिनाई हुआ सिंबल आपको सर. यहाँ तो फिर तो मैं बिल्कुल आई थिंक वी हैव कम फुल सर्कल ऑफ आर्गुमेंट्स. My first point was. Yeah, so what we do is 215 जो था section. एक second. We'll certainly continue hearing you. We'll take a short break. ठीक है. Because I want to attend to the other matter as well. Right, sir. And we will come back. आधा घंटा. आधे घंटे में. ठीक है सर. ठीक है. Thank you. Additional submissions. We coming back. Okay.
Has the IG come? We've sent for the IG. Okay, that's good. Is he here? He may be coming. Ji. Ji, do you have the answers that we had asked? Ji, I do, but very briefly, I was just going to read the paras, finish the judgment, and then answer the questions and conclude. Is there anything in judgment which court has jurisdiction? एक reference है to a case page at page 20 के page 20 पे जो पैरा 19 कोट किया हुआ है उसकी लास्ट 4-5 लाइंस पढ़ता हूँ. पेज 20 of the judgment. अच्छा, ये जो इंटीरियर जजमेंट की बात कर रहे हैं. जी. I'll read the last five lines. And that the above question relates to inbuilt organizational structural disputes of the political party involved. In that event, he may ask the parties to get the above question resolved through a civil proceeding. Where are you reading from? Yes, sir. एक केस कोट किया हुआ है 1999 SCMR 1921 सरदार बहादुर खान. Are you reading from the quoted portion? Quoted portion, जी. अच्छा, उसकी last 4 lines. And that the above question relates to inbuilt organizational structural disputes of the political party involved. In that event, he may ask the parties to get the above question resolved through a civil proceeding. That's the only reference to civil proceedings that I have found here. The pura paragraph padhne, I just want to understand the context. Okay, sir. We are inclined. Can you read the whole paragraph? Yeah, I'll do that. Ji. 1999 SCMR 1921 we are inclined to hold that if a plea is raised before the Chief Election Commissioner that the person who made reference on account of alleged defection is not the head of the political party involved, the Chief Election Commissioner is obliged to examine the bona fides of such a plea. If the person who makes the reference as the head of the political party involved has been acting as such in the past, the Chief Election Commissioner is supposed to proceed on the assumption that he is the head of the political party involved. However, in case he finds that there is no reliable material before him to conclude that factually the person who has made the reference is the head of the political party involved, and that the above question relates to inbuilt organizational structural disputes of the political party involved, in that event, he may ask the parties to get the above question resolved through a civil proceeding. It doesn't quite attend to the query, but anyways, theek hai. So can I come back, Your Lordship, to para 19? I was reading that. Ji. Having discussed the general jurisdiction of the ECP and referred to the relevant provision of the Election Act 2017, we now proceed to the moot question whether the ECP has any jurisdiction to question, probe and adjudicate the intra-party election dispute or procedural impropriety in the election process of a political party. It is envisaged by Section 208 of the Election Act 2017 that the office bearer of a political party at the federal, provincial and local levels, wherever applicable, shall be elected periodically in accordance with the constitution of political party. The said intra-party election must be conducted at least within 5 years, and where a political party fails to conduct intra-party election as per time frame in the constitution, it is liable to pay a fine which may extend to 20,000 rupees. The verbiage of Section 208 does not authorize the ECP either to supervise the intra-party election or entertain any complaint regarding any irregularity in the said election. However, it is the command of Section 209 of the Election Act 2017 that a political party shall within 7 days after completion of intra-party election submit a certificate signed by office bearer authorized by the party head to the ECP to the effect that elections were held in accordance with the constitution of the political party and the Act. The said certificate should inter alia include a date of last intra-party election, the names, designation, address of office bearers, the election result,
and the copy of political party notification declaring the result of the election. On submission of the aforesaid documents, it is the statutory duty of the Commission to publish the said certificate on its website within 7 days. Section 209 of the Act does not confer any jurisdiction on the ECP to question the intra-party election process. Allocation of symbol to a political party. Ek second. I don't know if it's appropriate for judges to start commenting about verbiage of section 208. It's not a verbiage, it's pretty short section. I mean, disparaging remarks against, it amounts to against Parliament who makes laws. Anyways. So that's the only reference. Ji. Allocation of symbol to... I must keep reminding you. Ji. Kitna waqt aur? Sir, if I say 10 minutes, is that fine? No, 10 hoga, sir. 10 of my talking. Allocation of symbol to a political party is governed under Chapter 12 of the Election Act 2017. A political party who has complied with the provisions of Section 202, 206, 209. ये हम पढ़ चुके हैं. इसमें अगर आपको खास पॉइंट बताएं ना, वो हम अंडरलाइन कर लें. जी. Line 5 पढ़ लिया. जी. Line 5. The penal clause, i.e. subsection 5 of Section 215. Envisaging for ineligibility to obtain an election symbol can be invoked only when a political party, despite a show cause notice, has failed to comply with the provisions of Section 209 or 210 of the Election Act. Section 209 only deals with the submission of documents and in no manner authorizes the ECP to question or adjudicate upon the validity of intra-party election. Indeed, it is settled law that a regulatory and penal provision in any law should be construed strictly. Penal statutes tending to deprive valuable rights of franchise should be strictly construed, and in case of doubt, benefit must go to the person against whom it is sought to be invoked. Disqualifying provisions in an act dealing with municipal election are penal provisions and therefore ought not to be extended beyond their legitimate limit. But at the same time, if there is any doubt, the court should be careful to see that the intention of the legislature in enacting the section is duly observed. AIR Calcutta Understanding Statutes by Essence of a page so-and-so. The combined reading of Section 208, 209 and 215 does not give any impression that the ECP has any jurisdiction to question or adjudicate the intra-party election of a political party. The perusal of the entire Election Act would certainly show that the ECP has no jurisdiction to conduct a roving inquiry into any matter, rather its jurisdiction is summary in nature. फिर वो आ गया केस की quotation बहादुर वाली, and then para 21. The outcome of the aforesaid discussion is that the impugned action of ECP denying election symbol to the petitioner has the effect of depriving the petitioners and its members to freely participate in the affairs and governance of Pakistan through political activities as guaranteed through Article 17(2) of the Constitution. Indeed, the Constitution 73 has ensured that every citizen in Pakistan has the right to form or be a member of a political party, subject to any reasonable restriction. इससे तो कोई तो राय नहीं है. फिर वो quotations आ गई. We've already read the judgments, refer to them at least. And then the conclusion at page 23, I would like to read. Ji. Last 5 lines. The government of the political party so formed must implement the program of the political party which the electorate has mandated it to carry into effect. And now this. Will you agree with this? Ji. Hey, suppose you give a certain thing. Manifesto. So the government of the political party so far must implement the program of the political party. ये manifesto की बात नहीं, तो फिर ये क्या declaratory decree वो judgment दे रहे हैं कि आपने whatever कह दिया अपने manifesto में आप उसको implement करेंगे. ये तो मेरे ख्याल में मुनासिब बात नहीं है. होना चाहिए सर, because manifestos हमारी political party होना चाहिए. It's like a wish. God cannot direct. Suppose कल आप कहेंगे जी 16 साल के बच्चों को या उनको वोट का हक देना चाहिए. For instance, आपके manifesto में लिख दें, God can't direct you. Yes. Parliament can change law if they want to. Correct. बिल्कुल सही. Any unlawful order which results in frustrating this activity by removing it from the office before completion of its normal tenure would therefore constitute an infringement of this fundamental right. उसके बाद से नेक्स्ट पेज पे उन्होंने वो केसेस हम कोट कर चुके हैं ऑलरेडी, रिलेशनशिप बिटवीन सिंबल एंड अ पॉलिटिकल पार्टी, and then the simple conclusion that the jurisdiction is not there. So I would support this judgment
And آخری بات جو میں کروں گا سر, because I have to conclude in 10 minutes. The only thing it may, except, if I can speak on your behalf, except calling a provision of law absurd. As a parliamentarian, you would not want that to. That can be changed. بالکل ٹھیک ہے. چلیں جی. اچھا سر, before I end, ایک دو just the concept کہ ایک جس نے کنڈکٹ کیا الیکشن اس نے درست کنڈکٹ نہیں کیا اور اس کی وجہ سے سمبل لے لیا گیا. جسٹ دا کانسیپٹ, ایک کیس تھا کافی پرانا, PLD 68 سپریم کورٹ. اس میں ہوا یہ تھا کہ بار کاؤنسلز کے الیکشن کرانے ہوتے ہیں ایڈوکیٹ جنرل نے, وہ چلے گئے رن آف کچھ کرنے, آربیٹریشن رن آف کچھ کی. سو ہی واز گوئنگ ٹو بی اوے. تو کوئی اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل یا ایڈیشنل تھے, انہوں نے الیکشنز کرا دیے آف دا بار کاؤنسل. تو بحث ہو گئی کہ اس جھگڑا ہو گیا بٹوین دا ڈفرینٹ کینڈیڈیٹس آن دا الیکشن. سو ون آف دا گراؤنڈز ٹیکن واز کہ یہ الیکشن جو جس نے کرایا از ناٹ دا ایڈوکیٹ جنرل, ہی از somebody else. تو کورٹ نے کہا کہ show us the prejudice that was caused because of him not being a advocate general. تو اگر وہ prejudice نہیں ہے تو there is no connection or nexus between us declaring that election as void or otherwise. Wouldn't those who wanted to contest, who have not been able to contest, aren't they prejudiced? کسی نے یہ ریز نہیں کیا, کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ الیکشن کمیشن کی اپوائنٹمنٹ غلط ہونے کی وجہ سے we are prejudiced. Nobody raised that. نہیں, وہ ان کا تو اور بھی بنیادی, وہ تو کہتے ہیں ہمیں نامینیشن پیپر, ہمیں آپ نے نامینیشن پیپر تک نہیں دیا تو ہم الیکشن لڑیں کیسے؟ جی وہ یہ کہتے ہیں, ان کا تو اور بھی بنیادی. لیکن میرا بھی میں جو پوائنٹ بنا رہا تھا وہ یہ تھا کہ nobody said کہ جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے وہ غلط تھی اور جو کنڈکٹ کیا وہ غلط تھا. None of the people have said that. They've only said what your lordship is saying. شاید ان کو پتہ بھی نہ ہو نا کہ آپ نے اندر کرا کیا, کیونکہ جب وہ تو صرف کمپلین کر رہے ہیں کہ جی مجھے الیکشن میں حصہ نہیں لینے دے رہا, اب ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ کاغذ تو بعد میں آئے نا کہ یہ کاغذ ہے وہ کاغذ, ان کو تو یہ نہیں پتا ہوں گی چیزیں, شاید وہ آبجیکشنز لے لیتے. That point is conceded. But nonetheless the point being کہ کوئی prejudice on the face of it نہیں ہوا. اور یہ ججمنٹس ہیں, اور کچھ ججمنٹس میں کوٹ کرنا چاہوں گا یہ لارڈشپ میں سے پوائنٹس ڈفرنٹ تھے. کس پوائنٹ پہ؟ اسی پوائنٹ پہ کہ there is a concept of de facto, something happening de facto, کہ اپوائنٹمنٹس غلط بھی ہوں تو جو آرڈرز پاس ہو گئے ہوں یا ایکشنز ہو گئے ہوں وہ نلیفائی نہیں ہوتے. یہ تو آپ کا کوئی سرکاری عہدہ تو نہیں ہے نا. جی ہاں, تو وہ پرنسپل یہاں کیسے وہ اس طرح اپلائی کروں گی ایون سرکاری عہدے میں, ایون سرکاری سچویشن میں, ایون جہاں ججز اپوائنٹ غلط ہو جائیں اور ان کے ججمنٹس کو کوشچن کیا جائے تو یہ کہا جاتا ہے ملک اسد کیس میں تو پروٹیکٹڈ ہے. جی جی علی وہ والا دو زیادہ پرنسپل ججز کے وہ جی جی فرزند کیس, فرزند علی کیس, اسد علی کیس, سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کیس, وہ تو سیٹل پرنسپل ہے. تو وہ اگر پرنسپل آپ دیکھیں کہ اگر آپ پہ کیسے لاگو ہوگا یہ پرنسپل, وہ اس طرح ہوگا کہ اگر آپ پبلک آفس ہولڈر کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کی اپوائنٹمنٹ غلط ہے تو اس کے آفیشیل آرڈرز اور اس کی جو ڈیسیژنز ہیں ٹھیک ہیں, تو پھر ایک پرائیویٹ پارٹی میں اگر ایک بندے کو آپ کہہ بھی دیں کہ اس نے غلط اپوائنٹمنٹ ہوا ہے الیکشن کنڈکٹ کرنے کے لیے, تو الیکشن کو کس طرح اوائڈ کہہ سکتے ہیں. ٹو دیٹ ایکسٹینٹ از مائی آرگیومنٹ آن دس. نہیں تو آپ دوبارہ کر لیں الیکشن, مسئلہ کیا ہے؟ سر سمبل نکل گیا نا. آئی ہیو نو ایشو. اچھا اوکے, ایسی آئی ہیو نو ایشو. ٹھیک چلیں, اگر مجھے ملتا ٹائم تو آئی وڈ ڈن اٹ, لیکن وہ سمبل مینز آئی ایم بیسکلی چلنگ. ختم آئی ایم ختم. جی I hope you're not ختم. اچھا وہ آئے انسپیکٹر جنرل آف پولیس, بلائیں ان کو. غور صاحب کدھر ہیں؟ A very serious complaint has been made before us. This is completely intolerable. Please attend to this complaint immediately. If heads need to roll, do so, whatever it is. Whatever Mr. Gaur Ali, گھر پہ کون تھا آپ کا؟ میری مسز تھی, میرا بیٹا تھا, اور وہ آپ فوراً ان کے گھر پہ جائیے خود. لارڈشپ ٹھیک ہے. اور کیا ہوا, اب یہاں ہم یہ ذرا فوکس نہیں ہٹانا چاہتے ہیں اس کیس سے. اینڈ اف یو اسٹل ہیو اینی کمپلینٹ
you submit it to us in writing. Sure, Your Honor. ٹھیک ہے. تو this is very serious. Do you know what has happened or you don't know what has happened? Lordship, it's jo early. You know what has happened or not? Lordship, we have. It's a raid on. It's too early to comment on that. We understand certain things have happened, and the police has gone to that place. And लेकिन जो details जो इनका जो मौक़िफ़ है, जैसे आपने. नहीं, आप क्यों गए थे इनके घर पे, ये बताइए. लॉर्डशिप, जो अभी तक इतला आई है उसके मुताबिक जो पुलिस की एक पार्टी ने वहां पे रेड किया है. क्यों? और they had the information of proclaimed offenders. कौन है proclaimed offender? ये डिटेल्स लॉर्डशिप इतने कम टाइम में एग्जैक्टली नाम मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन जब गए हैं पता चला है कि ये बैरिस्टर साहब का घर है, so they were returned. No, मगर वो कौन है proclaimed offender? वो लॉर्डशिप उस थाने में लिखा भी होगा, जो ASI या जिस लेवल का ऑफिसर गया है, he must have that. कौन सा थाना है? कोसार. आप जाती तौर पे मालूमात कीजिए और फिर हमें राइटिंग में रिपोर्ट दीजिए, और एसोसिएट गौर साहब और his wife or whoever is at the home, आप तो यहाँ थे, आपको तो नहीं पता वहाँ क्या हुआ. ठीक है. This is a very serious matter. देखें, every citizen has to have full protection. ठीक है. Since you are not aware of it, but heads may roll, so आप जरा सा take personal attention of it. रेड हुई है नहीं हुई है? गौर साहब, would you like to go with him now or you want to? हाँ, रेड हुई है जी. आप ऐसा करें कि आप इनको ले जाइए गौर साहब को अपने साथ. ठीक है लॉर्ड. इन द सेंस कि उनसे पूछ, इनको तो नहीं पता, आप इन्हीं के घर जाइए. आप खुद जाइए, गौर साहब को भी ले जाइए और मालूमात कीजिए. And if Gaur Sahib is not satisfied, then Hamid Khan Sahib, you can convey the thing, or he can directly. So it would be better if आप कर लें. ठीक है. तो Lordship. Anything else, Gaur Sahib? That should be enough for now, Your Honor. तो आप ठीक है, please go along with the Inspector General. Sure, Your Honor. آپ جائیے immediately. No other thing. This is the first priority order of business. Lordship. Thank you very much for coming into this. No. Actually, I didn't want your arguments to, because I wanted to first send for. I mean, I don't know what's happening, so I just wanted to tell the AG to send for the Inspector General of Police. Appreciate it, sir. I mean, no point telling the AG he won't know anything. Right. Thank you, sir. I have concluded, ma'am. नहीं, अच्छा. Mr. Makhdoom Ali Khan, where is he? अच्छा, जो बाकी 13 लोग हैं उनके लिए कोई वकील हैं या वो? हाँ? You only represent one. नंबर के लिए बुला लें. अच्छा, 5 लोग इन पर्सन हैं. अच्छा, सॉरी, आप अच्छा, you wanted to add something, जी. Short submissions, but one thing for which I am extremely grateful that your lordship has taken cognizance of taken notice of what has happened during the course of the thing. This incident actually provides answers to 2 questions that have arisen here during the course of hearing. One was, साहब थोड़ा सा इंतजार करें, let's see what happens. नहीं, वो अगर गौर साहब is not satisfied, we will take further action. Don't worry. इस केस को कुछ, we have not taken any, मतलब let's चलिए अब केस पे बात करें. जनरल परसेप्शन की बात कर रहा हूँ. केस पे बात करें. परसेप्शन ये है कि यहाँ पर किसी को कोई काम नहीं करने दिया था. The 2 places इस्लामाबाद. साहब हम भी पाकिस्तान में रहते हैं. नहीं सर, बात तो मेरी मुकम्मल कर लेने. उसका आप नोटिस ले रहे हैं, मेरा फर्ज है मैं आप जनाब तक पहुँचाऊँ. Why we held the elections in Peshawar? Because the administration in Islamabad and Punjab harass our workers. खान साहब, आपकी बात अगर ये हम मान लेते हैं, तो अगर आपकी बात ये बात है, तो फिर आप सरकार को खत क्यों लिख रहे हैं कि जी मैं इलेक्शन करा रहा हूँ पेशावर में, मुझे सिक्योरिटी दो? फिर तो आप चुपके से कराएं, इनको बताएं नहीं. तो एक तरफ तो आप बता भी रहे हैं ना, तो वो जरा कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है उस बात में. इसलिए अल्टीमेट हम आपकी बात समझ गए, मगर फिर हमारा सवाल फिर आप जवाब दीजिए ना. अगर आपने कहा कि जी वो तो हमें इलेक्शन मीटिंग ही नहीं करने देते और हम चुपके से जाके अपनी मीटिंग कर ली, मगर फिर आप खत तो नहीं लिखते उनको क्या मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड करो? तो उन्होंने जवाब में लिख दिया भाई कहाँ कर रहे हो, हम आपको वहाँ सिक्योरिटी देते हैं. यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करते नहीं हैं.
نہیں میں نے کہا جب آپ نے جو بات کی اس کا میں پھر سوال بنتا ہے اس سے. جی 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 چلیں. We still have a duty to چلیں let's proceed with the notice case. to them. Secondly, we can't provide every remedy in the world, but we can attend to the case. جی. Why did we choose the Peshawar High Court? دوسرا یہ سوال تھا, میں اپنے طور پہ جواب دیتا ہوں. Because of our experience, so many hundreds of our workers, thousands of our workers, ladies have been picked up during the day. خان صاحب کیس کے لیے آپ کی کوئی ورکر کی تو ضرورت نہیں ہے, کیس کے لیے تو ایک وکیل کی ضرورت ہے نا. علی ظفر صاحب تو کھڑے بھی ہوئے کل کورٹ میں, انہوں نے بات بھی کی, تو ہنڈریڈ آف ورکرز پک اپ ہو رہے ہیں یا نہ ہو رہے ہیں, مگر کیس تو ایک دفعہ فائل ہو گیا تو کسی کو آنے کی تو ضرورت نہیں ہے کورٹ میں. صرف وکیل, یا تو آپ کہیں جی وکیل کو نہیں جانے دیا, وہ ایک الگ بات ہے, کسی کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے آپ آج کھڑے ہمارے سامنے, جی آپ 1000 ورکرز لے آئیں, وہ آپ کی مرضی, مگر ان کو آنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف آپ کو آنے کی ضرورت ہے. میں پرسیپشن ایکسپلین کر رہا ہوں why we preferred, because the most independent of the high courts we feel is still the Peshawar High Court, because their orders are being carried out. The orders of Islamabad High Court and Lahore High Court have not been carried out. ادھر سے بیل ملتی ہے, وہ باہر نکلتے ہیں, ساتھ ہی ان کا ڈیٹینشن آرڈر میں پھر اندر کر دیا جاتا. پشاور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن میں. مگر یہ دیکھیں بنیادی آئینی سوال کا آپ جواب نہیں دے رہے ہیں. ایک لسٹ آپ نے 5 ممبر بینچ کی بینچ بن گئی. 5 ممبر is a very big bench for a high court. لاہور which usually it's 1 member single member bench. تو وہی کیس آپ واپس لے لیتے, پھر دوسری بات ہے مگر وہ کیس پینڈنگ ادھر ہے, پھر آپ لاہور چلے گئے, پشاور چلے گئے. اس بات سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ بات. سر وہ تو کسی ایک انڈیویجول نے کیا, پارٹی نے نہیں, وہ والا کیس بھی چھوڑ دیجئے, وہ بھی مان لیتے ہیں. مگر وہ جو WP جو وہ کیا نمبر ہے اس کا 81171, اس کے لیے بنی تھی, یا 2023 اس کے لیے بنی تھی 5 ممبر بینچ. وہ والا دوسرا فیصلہ آپ جواد حسن صاحب کی بات کر رہے ہیں, وہ سنگل ممبر تھا اور انٹر کورٹ اپیل میں وہ اپیلڈ ہو گیا ہے. ہم اس کو بھی چھوڑ دیتے. ہم اس والے کیس کی بات کر رہے ہیں, 5 ممبر بینچ ججمنٹ, جس میں الیکشن ہی کا ایشو تھا, لیکن اس کو پریس نہیں کیا گیا ہے. نہیں, اب آج بھی زندہ ہے کیس, پینڈنگ پڑا ہے. کل اس میں علی ظفر صاحب نے خود کہا کہ میں اپیئر ہوا تھا, مگر بینچ he did not say that I moved an application withdrawing the petition or anything. But anyways, even if he does so now, the relevant date will be at the date of filing of the petition in the Peshawar High Court. Otherwise, دیکھیں ہمیں بھی پتا تھا, ہم بھی وکالت کرتے تھے, کبھی سوچتے تھے کہ کبھی ادھر زیادہ کیس چل جائے گا یا واٹ ایور, یا ججز کا اپروچ ہوتا تھا. یہ ہم سب گزرے اسٹیج سے, تو ہم کوشش کرتے تھے کہ جورسڈکشن کھینچ کے لے بھی جاتے تھے کہیں اور بھی. دیکھیں we have all played this game. پر ایک دفعہ انتخاب کر لیا آپ نے جورسڈکشن کا, کبھی کبھی ہم نے اسلام آباد میں کر دیا, امپورٹ ہو رہی ہے کراچی سے, نہیں بیکاز FBR is based in اسلام آباد, ہم نے وہ یوں بنا لی جورسڈکشن. تو اگر آپ نے جب انتخاب کر لیا پھر جانا مجھے نہیں سمجھ آتا ہے, یہ بات ہے. ایکسپیرینسز ہیں ہمارے, میں اس کو زیادہ ڈیٹیل میں ٹائم نہیں لینا چاہتا. I just wanted to inform you. Now sir, I'm coming to the propositions, few propositions in addition to what has been very ably, comprehensively argued by Mr. Ali Zafar. I'm just adding a few propositions to that. And most courteously, if we may add. Your Lordship knows me better than that. And you are also very kind always. I try my best not to be ever discourteous, sir. First proposition, first and foremost submission is that Election Commission of Pakistan, ECP being a constitutional and statutory body performing regulatory and quasi-judicial functions. That ECP being a constitutional/statutory body performing regulatory and quasi-judicial functions cannot legally be an aggrieved person. And therefore has no locus standi to file the present petition before this honorable court.
Therefore, the petition of ECP is not maintainable and liable to be dismissed on this preliminary ground. I'm relying on 2 recent judgments of the Supreme Court. एक चीज बताएं, when you use the word aggrieved person, does Article 185 require that? If a judgment is wrong, I may not be aggrieved by it. Can I not still challenge it under? They've come under 185. They have not come under Article 199, which of course starts with the word any aggrieved person except habeas corpus. So let's see 185. Does the word aggrieved mention or no? It's not mentioned, no doubt about it. But generally, suppose someone challenges a judgment of the High Court, yes, and he may not be aggrieved, but he may say this judgment is wrong. May not so be, if he was a party in the lower court, will we say, oh, you're not aggrieved by it, but would it really matter? We agree with you, but it's not a requirement of the Constitution that they have to be aggrieved, or is it? It may not be in Article 185, but may I submit that generally the principle that is applied for any kind of writ jurisdiction and appellate jurisdiction is under Article 199. So, though the appeals or the petitions are filed under Article 185 Clause 3, but that does not mean that the principle applicable to Article 199, because it is initiated through Article 199. But there they were the respondent, not the petitioner. Yes. So the requirement of aggrieved would be on the petitioner, not on the respondent. No doubt. But sir, the result is that it is continuation of that. Why was the petitioner here? They are the petitioners. But the question ये बताइए, suppose ऐसे मफरूजे के तौर पे जी जी कोई और केस में हाई कोर्ट कह देता है I hereby abolish the Election Commission of Pakistan. Judgment आ गया. If another party aggrieved can come home, ECB can't come. अजीब सी बात नहीं होगी, या वो किसी मेंबर को रिमूव कर दें कि I don't like this member's face, I remove him. I mean, I'm giving you absurd examples so the point can be appreciated. So ECP can't come, जी मेरे मेंबर को हटा दिया, unless it's a co-Toronto rate, तो अलग बात है, ठीक है, या हम ये सारे मेंबर्स बदल दो, नए वाले अपॉइंट कर दो. जावेद हाशमी केस में भी ECP था पिटिशनर इस कोर्ट में. जावेद हाशमी का जो केस है ना कल साइट हुआ है, तो ये जरा मुझे ज्यादा इसमें, but I'm relying on judgments subsequent to the Javed Hashmi's case. Let me show these judgments. जावेद हाशमी का केस तो 5 मेंबर, very recent judgments. One is 2023 judgment. जो आपने हमें 2 दे चुके हैं वो रिपीट ना कीजिए, वो मैंने अभी भी नोट आपको बता देता हूँ जी. वो आप एक ऑम्बड्समैन का था और एक वो था कमीशन का, वो जी सर, हाँ वो वाले हमने नोट कर लिए. उसके अलावा कोई बताना चाहें? अच्छा, तो आपने पहले दिन बता दिया था. एक जजमेंट, इसके अलावा दूसरी PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट 5-1. There is also now one more judgment. PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट, that PLD 2020 Supreme Court 586. ये वही वाला है, कल वाला. वही 2 जजमेंट. हाँ वो तो मैंने नोट किए हुए हैं. एक केस में जो था वो कंपटीशन कमीशन था, स्टैट्यूटरी बॉडी. दूसरे केस में ओम्बड्समैन था. इलेक्शन पिटिशन कमीशन का कोई डायरेक्ट केस है आपके पास, इसमें इलेक्शन कमीशन का पार्टी और उसमें ये होल्ड हुआ हो, कि आपकी तरफ से आगे आप अगली पार्टी हो ही नहीं सकती. ड्रॉ पैरेलल, वो मैं आपको अर्ज किए जाता हूँ कि इसमें क्या वजूहात है, व्हाट इज अ पैरेलल बिटवीन द टू. एक थर्ड जजमेंट है जो अभी रिपोर्ट नहीं हुई है. दे दीजिए, कॉपी दे दीजिए. उसकी कॉपी आपको दे दी. दे दे. A recent judgment authored by your lordship, civil petition number 3532 of 2023. फुल मेंबर है. आप दे रहे हैं कॉपी? जी इसकी कॉपी नए वाले जो कह रहे हैं वो कंप्लीट है. जो दे रहे थे ना ये बार-बार. अच्छा, ये राइट टू इंफॉर्मेशन वाली जजमेंट इसी पॉइंट पे नहीं, ये जजमेंट है जहां रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन फाइल की थी और जनाब ने होल्ड किया है कि इट कैन नॉट. राइट टू इंफॉर्मेशन वाला, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन वाला अहमद अली वाला केस. हाँ तो हमने दे दी इंफॉर्मेशन. नहीं तो इससे आपके केस से क्या ताल्लुक बनता है? नहीं सर, इसमें सिर्फ ये है
कि Supreme Court as a constitutional body cannot be a petitioner. This is what has been, as I see, held in this judgment. In para 9 of the judgment. May I read out this para 9? अगर आप हमें दे देते तो आसान होता है जी। Another 5 minutes I'll provide. पढ़ने जी सर पढ़ देता हूँ पढ़ लीजिए। The question of maintainability of the writ petition filed by the Registrar of the Supreme Court before the High Court was raised before the learned single judge who held the petition to be maintainable by referring the cases of Registrar Supreme Court of Pakistan versus Hassan Akbar and Registrar Supreme Court of Pakistan versus Qazi Wali Muhammad. The Hassan Akbar case, this Hassan Akbar's case is 1987 Pakistan Criminal Law Journal, and the other Qazi Wali Muhammad wala case is 1997 SCMR 141. The Hassan Akbar case was with regard to complaint against Assistant Advocate General who had appeared before the Supreme Court when he was not enrolled. Rose out of the recommendation of the Disciplinary Committee, therefore it cannot be cited as a precedent entitled to Supreme Court to initiate litigation. In the other case, Qazi Wali Muhammad was terminated from the service of the Supreme Court and filed an appeal before the Federal Service Tribunal, whose order reinstating him was challenged by the Registrar before the Supreme Court under Article 212(3) of the Constitution. This court held that Qazi Wali Muhammad was not a civil servant as defined in the Civil Servants Act 1973, therefore the tribunal did not have jurisdiction. The registrar had not initiated litigation in Qazi Wali Muhammad case. He had not filed the appeal before the tribunal. The particular facts and the very limited scope of these two cases cannot be treated as precedents for registrar to initiate litigation on behalf of the Supreme Court, particularly when the judgment neither case had discussed this aspect. So meaning thereby the institution of the Supreme Court through registrar cannot be a petitioner. This is as I read this judgment about. I'll just there is another thing, na? The other thing is a superior court. Registrar means the superior court is before the High Court. So here it's not an hierarchy of Election Commission of Pakistan. I mean, it's a separate constitutional body. So they get a judgment, they cannot appeal it. It's very strange. Either then you say, then they can't be sued either. If they can sue, they can also defend. No, you can sue, but you can't defend. Ye kya baat hui? No, defend before the court, but you cannot be appellant because ye logic nahi samajh aa rahi. Institution, sir, because it is an institution making decision, judicial or quasi-judicial. It is now for the parties in dispute. अगर कोई भी उन्होंने ऑर्डर पास किया कि अपने अकाउंट्स हैं हाई कोर्ट के रिमत दो, तो वो तो फिर उसका तो लोग मजाक उड़ाने लगेंगे एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का कि आपने हाई कोर्ट का फैसला मान लिया, आपने चैलेंज भी नहीं किया. तो मतलब ये नहीं, हम ऐसा सिचुएशन, सॉरी आई कैन नॉट एग्री विद दिस. देखें, आई विल गो द एक्स्ट्रा माइल टू रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज व्हिच इंक्लूड्स पार्लियामेंट, व्हिच इंक्लूड्स the Election Commission of Pakistan. If Parliament enacts unconstitutional laws, we will strike them down. If they do anything unconstitutional, we will set that aside. But otherwise, let everybody operate, empower them to operate within their domain. So, अब ये तो की बात नहीं कि High Court cannot make a mistake. They pass an order again, which is, and they say cut off your hand, you can't go. तो फिर हम ये भी कह सकते हैं आप पिटीशन ही नहीं फाइल कर सकते थे. सर देखिए आपको किसने राइट दिया पिटीशन? मेरी गुजारिश है कि यहाँ पर जो इस केस में भी सर्विस ट्राइब्यूनल इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, रादर ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 212. Their decision was being challenged before the Supreme Court by the Supreme Registrar. It was held, no, we can't do that because we are not there to. चलिए आपका point मैंने सुन तो लिया, मगर I don't agree with it. Let me be so straightforward and say it. But there can be always situations where I can say the exceptions can be made. I'm not saying ये constitutional body है. सबऑर्डिनेट कोई बॉडी होती है, हाई कोर्ट खुद चैलेंज कर रहा है अपना जजमेंट, वो आपकी बात सही है कि भाई आपको क्या फिक्र है, आपने तो फैसला कर लिया, आप अपना जजमेंट क्यों चैलेंज कर रहे हो? बिल्कुल जी, ठीक है. एग्जैक्टली. अब यहाँ पर एक और एस्पेक्ट है इसी का. जी. बिफोर द 18th अमेंडमेंट
before the 18th Amendment. Let me tell you something which may be good news or it may be bad news for you. हमें बताया गया इलेक्शन कमीशन has extended the time till 7 PM today for allotment of election symbols. तो जरा सा तेजी करते हैं. उसमें मैं एक गुजारिश करूंगा at the end कि इसको अगर जनाब एक दिन के लिए उनको because the thing is नहीं आप अपने आर्गुमेंट्स खत्म करें हम इसको फैसला करें. मैं उसके एंड पर बात करूंगा. मैं इसलिए आखिर में सर इसमें गुजारिश ये थी कि 18th अमेंडमेंट से पहले आर्टिकल 17 में एक शिक थी आर्टिकल 17 उसमें 4 क्लॉजेस होती थी आर्टिकल 17 के पढ़ ली 17th prior to 2010 before every political party shall subject to law hold intra-party elections to elect its office bearers and party leaders. ये आप पढ़ना चाह रहे हैं ना? जी वही. अब ये खत्म हो गई है. Every political party shall subject to law hold intra-party election to elect its office bearers and party leaders. Now this was omitted under the 18th Amendment. But it was brought back by 2007 Elections Act. Yes. अब वो election act के तहत. Why I'm quoting this example? As you lordship were pleased to observe yesterday that it is a constitutional body. I'm submitting that after 2010, it is only exercising functions under a statute, not under the Constitution. So it is a statutory body for all intents and purposes. So therefore, while interpreting the Election Act, its role is a statutory role, not entirely a constitutional role, because Constitution does not require holding of inter-party elections after 2010. Now this is all under the Election Act or previously under the Political Parties Order of 2002. So therefore my submission would be that ECP, for the purpose of the intra-party election, is now a statutory body performing statutory functions, and therefore these two judgments which pertain to statutory bodies, whether as ombudsman or whether as a competition commission, they are at par with that of Election Commission of Pakistan, exercising this function of regulating the पेशावर हाई कोर्ट का जो जजमेंट है हामिद साहब, उसमें उन्होंने लिख दिया है कि ईसीपी के पास कोई राइट ही नहीं है इंटर पार्टी इलेक्शन के बारे में बात करने का, देखने का. वो एक उनके सेक्शंस में है. तो अगर वो इसको चैलेंज नहीं करते तो वो तो उनके खिलाफ वो जजमेंट होता तो वो तो लॉ ही इनफेक्टिव हो जाता ना बात के लिए. देखिए वो एक और एस्पेक्ट है बिल्कुल, एंड वेरी एबली आर्ग्यूड बाय मिस्टर अली रफा कि it has no jurisdiction, but the question is whether ECP as a constitutional body is any different to other statutory bodies in this regard, in this respect, only in this respect, where it is only exercising statutory function and statutory law. So therefore my submission is, for all intents and purposes, the election ECP performing functions under the Election Act is a statutory body, and has same law applies to it as that of Competition Commission or Ombudsman. Now the next submission is, we see Article 219 of the Constitution. Article 219 provides for various functions to be performed by the Election Commission of Pakistan. If your Lordship kindly consider Article 219. So, opposition
So may I read Article 219. The Commission. हमने कई दफा पढ़ लिया. हाँ, point बताएं. This is the next point is that Article 219 provides for various functions to be performed by Election Commission. वो E पे rely कर रहे हैं. जी सर. अब इसमें यही मैंने कहना था कि ये जो पहले 3-4 क्लॉजेस हैं उसमें डायरेक्टली उसको फंक्शन ये हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के. ई में कहा गया है such other functions as may be specified by an act of Shura Parliament, meaning thereby the functions the ECP performs and with regard to matters of regulation of political parties, they do not fall within the first 4 clauses, fall within after an act of parliament as a statutory body, it is performing that function. So under Article 219, any act 220 भी पढ़ लें. हम ECP की कदर नहीं कर रहे हैं. Proviso? नहीं 220 पढ़िए. आर्टिकल 220. It shall be the duty of all executive authorities in the Federation and the provinces to assist the Commissioner and the Election Commission in the discharge of his or their functions. ये पावर सिर्फ एक और इदारे को है, वो सुप्रीम कोर्ट है. आप उधर आ जाइए आर्टिकल 190 में. All executive and judicial throughout Pakistan shall act in aid of the Supreme Court. तो सुप्रीम इनको इतना ज्यादा इख्तियार दे दिया है कि all executive authorities in the federation and the provinces. ठीक है, तो you can't, I mean, IG पुलिस नहीं कह सकता है कि मैं भी तो स्टैट्यूट के जरिए हूँ, आप भी स्टैट्यूट के जरिए हैं. सॉरी, मैं आपकी बात नहीं सुनता. उसको सुनना लाजमी है. सर, इसका लिमिटेड आर्गुमेंट का एक लिमिटेड फोकस है. मैं अर्ज करना चाहता हूँ, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ whether the powers being exercised by Election Commission with regard to regulation of political parties, is that under E or A to D? My submission is under A, Act of Parliament. Correct. Under E. There's no debate on this. Ji. Yes, sir. 220 is not with regard to functions, is regard to... No, but I'm just showing you the importance of this body. Of course, it's not with regard to it, but it has got, even the High Court can't say this, what 220 says. But only the Supreme Court can do some of it. But they are differently worded. Let me read 190 and 220. पढ़ लिया हमने, हम आपको बता रहे थे कि 220 में देखें, it shall be the duty. All executive and judicial authorities throughout. हमारे पास it shall be the duty के लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुए हैं. Yeah. चलिए कंपेयर ना करें, मगर हम ये कह रहे हैं कि इनके पास बहुत इख्तियार हैं. बेशक, क्योंकि फेयर एंड फेयर इलेक्शन हुई तब सकती है. इसमें कहीं फ्री एंड फेयर की जिक्र नहीं है. एक स्टैंड अलोन प्रोविजन है, इनके इख्तियारात की बात हो रही है इधर. Yes, it can be. Yes, I'm not disputing that. 220 is an important article of the Constitution. अगर ये आपके आर्गुमेंट को तो chisel away your argument. नहीं, अब बात सिर्फ ये है कि उसकी हैसियत एक सिचुएशन में क्या है और दूसरी सिचुएशन में क्या है. कुछ तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की सिचुएशन में है A to D, बट E में it transforms itself into a statutory body by acting under statute. Still, it must have all the powers. I'm not disputing that, because without having all those powers, it may not be able to carry out its functions. High Court passes a writ, do not exercise powers. वो कहेंगे हम बैठ जाएं घर में बैठे कोई चैलेंज भी नहीं कर सकते ऑर्डर को. ये तो doesn't stand to logic at all. Why? नहीं, चलिए आप दूसरा पॉइंट बताएं ना. ये मुझे I can't, ये आप पहले कल भी यही बात कर चुके थे, मगर I can't agree. If I agree with you, then I completely undermine the status and the constitutionality of the Election Commission of Pakistan. No, sir, I'm not undermining that. I'm only referring to this to show that these two judgments which pertain to statutory bodies will apply to ECP as a statutory body. That is the argument. Limited argument. नोट कर लिया ना, आगे बढ़ते हैं. Limited argument. नहीं, आगे बढ़े ना, नोट कर लिया ना. So that's it. Well, next has been already argued by Mr. But I will show that ECP in its conduct and proceedings have clearly been discriminatory towards
Pakistan Tehreek-e-Insaf, PTI. It has exercised double standards. How do I say it has exercised double standards? I'll draw your lordship's attention. یہ کہہ چکے ہیں علی ظفر صاحب یہ بات آرگیو نہیں کر چکے ہیں. Partly argued that. Yes. میں آپ کے jurisdiction میں جا رہا ہوں. آپ اپنے دودھ میں. I partly argued that, but I'm just trying to fortify that argument by referring to these pages, particular pages, page 314 to 316. Kindly consider part 2 of the paper book. Pages 314 to 316 are results of the intra-party elections of PMLN. Pages 318 to 322. یہ ڈسکریمنیشن کا پوائنٹ آپ نے پٹیشن میں کون سی گراؤنڈ میں کون سے نمبر میں لیا ہے؟ اس میں پٹیشن میں اپنی پشاور ہائی کورٹ کی پٹیشن میں there we have clearly taken the position وہ بتائیں نا وہ والا گراؤنڈ کون سا ہے آپ کا؟ grounds before the Peshawar High Court. خود اسی کی نے لگائے ہیں, انہوں نے تھوڑی لگائے. ہاں وہ تو یہ آپ نے آرٹیکل 17 کی تو بات کی ہے, آرٹیکل 25 کی بات آپ نے کون سے پیراگراف میں کی ہے؟ ڈسکریمنیشن کا ہوگا یہ. اور ججمنٹ میں بھی ڈسکریمنیشن کا کچھ ذکر نہیں ہے. ججمنٹ میں تو انہوں نے فیکٹس کو ٹچ ہی نہیں کیا. نہیں, ججمنٹ میں بھی ڈسکریمنیشن کا تذکرہ نہیں ہے, اور مجھے آپ کی پٹیشن میں سرسری طور پہ میں نے دیکھا آپ نے ڈسکریمنیشن کا پوائنٹ لیا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہیں لیا, مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. تو اگر آپ وہ پوائنٹ نہ آرگیو کریں جو کہ نہ تو آپ نے لیا نہ ہائی کورٹ نے اس پہ کوئی فائنڈنگ دی. نہیں, کئی چیزیں جو ہیں سر, دس از گراؤنڈ W on page 49. 49 page 49 گراؤنڈ W. آپ پڑھ لیں. اور آف دی فرسٹ پیپر بک 1. May I read it out? That it is vehemently submitted that PTI has been discriminated against all other political parties who follow less onerous processes of holding intra-party elections in accordance with their own constitution. There are 175 political parties. ECP never examined a single political party like PTI or at all. This is itself violation of the due process of law and violation of the fundamental rights of the petitioner, including the rights protected under Article 4, 9, 10A, 11, 17 and 25. اب آپ اس کو سپورٹ کریں نا, آپ نے کوئی دیکھیں پھر آپ کو نہیں, ایک سیکنڈ یہ جو نہیں, ایک سیکنڈ ہے نا. جی جی. پھر آپ کو ان سب پارٹیز کو رسپونڈنٹ بنانا چاہیے تھا, پہلی بات. پھر آپ کو ہر پارٹی کا کیس الگ الگ لکھنا چاہیے تھا. ایک فلیٹنگ سٹیٹمنٹ سے دیکھیے, اب ہم بھائی 2021 میں تو آپ سرکار میں تھے, تو آپ کے پیچھے یہ کیوں دوڑ رہے ہیں کہ الیکشن کروا لیں؟ وہ تو سب کو کہہ رہے تھے الیکشن کروا لو. ابھی انہوں نے پولیٹیکل پارٹی, پرسوں ہم نے کیس چلایا ہے, ایک پولیٹیکل پارٹی نے اڑا دی, ٹھیک ہے, اس کا وجود ہی ختم کر دیا, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ 13 اور کو ہم نے ختم کر دیا ہے. تو یہ تو نہیں کہ آپ ہی پہ یہ کہہ رہے ہیں, آپ سے صرف یہ کہہ رہے ہیں الیکشن کرائیں اور کچھ نہیں کہہ رہے ہیں. سر وہ اپنی جگہ, لیکن یہ آپ کا کہنا کہ ڈسکریمنیٹری ہے, تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیے 3 اور پولیٹیکل پارٹیز جس کا ریکارڈ یہاں پر پٹیشنر نے لگایا ہے, انہوں نے یہ شو کیا ہے کہ جتنے آفس بیئرز الیکٹ ہوئے ہیں سارے ان اپوزڈ ہوئے ہیں. اس لیے جناب بھائی کوئی کمپلینٹ کرے یا خود نوٹس لے لیں. سر بات یہ ہے, یہ ای سی پی پک اینڈ چوز, کمپلینٹ تو ہمیشہ مل جاتا ہے, اور کمپلینٹ یہاں بھی کہیں سے حاصل کیا گیا, وہ میں اس میں نہیں جانا چاہتا, لیکن میں صرف جناب کو ڈسکریمنیشن کا دیکھیے. ڈسکریمنیشن اتنے ہلکے ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں, ڈسکریمنیشن آپ نے کہہ دیا تو ڈسکریمنیشن نہیں ہوگا نا.
نہیں کہنے سے، لیکن یہ کچھ تھوڑا تو آپ ہمیں دکھائیں گے نا بھائی. آپ یہ ڈسکریمنیشن کا پوائنٹ لیا آپ نے جب 2021 میں انہوں نے آپ کو نوٹس دی کہ میرے الیکشن کے پیچھے کیوں پڑے ہو, باقی الیکشن سے بھی کرواؤ ان سے. بالکل صحیح نہیں لیا آپ نے کہا جی کووڈ-19 نے مجھے مہلت دے دیں سال کی. انہوں نے کہا چلیں جی سال دے دیا آپ کو. یہاں سے تو پتہ چلتا ہے کہ ڈسکریمنیشن ہے. میں نے 2021 میں الیکشن کرائے انٹر پارٹی الیکشن, اس پر الیکشن کمیشن نے جو ہے نوٹس لے لیا اور اس میں اسٹرائک ڈاؤن. آپ کو بھی پتا ہے اب دیکھیں الیکشن یہ جو میٹر ہے آپ کی اپنی پارٹی سے واضح اٹھ رہی ہے نا, باہر سے اٹھ رہی ہوتی ہے تو ہم کچھ بات نہیں کرتے. بات یہ ہے اب وہ وجودین صاحب کون سے الیکشن کروا رہے تھے, کون سا سال تھا وہ, کتنا بڑا جھگڑا ہو گیا تھا. جی وہ ایکچولی میں نے ہی کرائے تھے. اس کے بعد ایز ٹرائبونل انہوں نے نوٹس لیا تھا جس میں 3-4 وہ کون سے الیکشن سے, یہ انٹر پارٹی الیکشن سے. کب کی بات ہے وہ, یہ 2012-13. تو دیکھیں یہ کوئی باہر کے لوگ تو کوئی انگلی نہیں رکھ رہا ہے نا کہ ای سی پی نے تو آ کے نہیں کہا وجودین صاحب کو کہ آپ یہ غلط ہو گیا وہ غلط ہو گیا. ہم اسی کے پاس نہیں گئے تھے, ای سی پی کی کوئی اس معاملے میں نہیں, تو وہ پھر خود چھوڑ کے چلے گئے کہ ناراض ہو گئے, کیا ہو گیا, ہوا تھا کیا اس میں مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. وہ از another story. But I'm just saying there is a history of when you raise bias, prejudice, then we have to see your own conduct and the conduct of the Election Commission of Pakistan. If they pick up you for some targeting you for, every little T that you fail to cross or dot that you fail to put, we have to see the entirety of it. Then election has been, whether you like it or not, has been a problem. It's not outsiders. The people from your own founding members have been crying about funding. They've been crying about elections. Let them contest elections. یہی میں کہہ رہا ہوں, یہ انٹرنل میٹر ہے پارٹی کا. Party means the people. Very rightly argued. Party means the people. I don't differentiate between party and the people or the members of the party. اس کے تو انٹرنل پروسیسز ہے, ان کو کرنے دیں. آپ ای سی پی کا کیا کام ہے کہ اس میں انٹرفیئر کریں. وہ کہہ رہے ہیں الیکشن کروا دو بس, یہ نہیں کہہ رہے ہیں کیسے کراؤ. یہ اس کے پاس انہوں نے کہیں لکھا کہ اس طریقے سے کراؤ. پشاور کے ججمنٹ کو کہیں انہوں نے ڈسکریمنیٹری کو ٹچ نہیں کیا, بلکہ میرے حساب سے تو یہ ریم ہے یہ آرڈر, کیونکہ یہ تو سب پہ اپلائی ہوگا کہ وہ آئندہ سے انٹرا پارٹی کو ای سی پی دیکھ نہیں سکتی. In view of this judgment, it is judgment in rem in my view. It's not personal. انہوں نے کہہ دیا کہ الیکشن کمیشن کا کوئی تعلق نہیں ہے, انٹرا پارٹی الیکشن کے بارے میں ای سی پی بات نہیں کرے گی. تو وہ تو فرام دی مومنٹ وین دی ججمنٹ از پاس دی لا ہیز بیکم چینج. وہ جو سیکشنز ہیں اور پھر وہ خود کہہ رہے ہیں کہ 215-217 کے تحت ان کو الیکشن لڑنے دو. تو دیٹ واز دی 215 جس کے اندر شو کاز دی گئی, وہ پورا کیس چلا ہے اس کا 215 میں. جی وہ جو 2017 کے لا کے تحت. اس کا دیکھیے اب آئندہ کوئی پارٹی الیکشن کرائے گی نہیں, ایون ڈمی الیکشن بھی نہیں کرائے گی. کیا کریں گے, ختم ہو گیا ہے, پشاور ہائی کورٹ کا ججمنٹ آ گیا. الیکشن کوسچن از ویدر اے پارٹی از. ویسے مجھے ایک دیکھیں بنیادی سوال یہ ہے حامد خان صاحب, جی وائی آر یو افریڈ آف یور اون ممبرس? Not at all. Why can't you give a nomination paper to Mr. Akbar S. Ahmed and whatever 13 other? آ جاؤ بابا میدان میں اترو, لڑو, دیکھو کتنے پاپولر ہو, 4 ووٹ نہیں ملیں گے تمہیں. سر میں گزارش کر رہا ہوں, اس کا جواب تو علی ظفر صاحب نے پوری طرح کمپریہنسولی دیا ہے کہ یہ وقت پہ پہنچے ہی نہیں. کہہ رہے ہماری دروازے تو کھول دیں کہ نامینیشن پیپر دے دیں, پھر ہم کیا کریں اس کے ساتھ. نامینیشن پیپر آفٹر ہولڈنگ آف دی الیکشن تو نہیں ہو سکتا نا. اگر میں الیکشن میں اپنا نامینیشن پیپر ہی داخل نہ کروں تو میں بعد میں گریوینس ہو سکتا ہے میرا کہ میں الیکشن میں. اگر آپ نامینیشن پیپر داخل کرتے تو بہت عمدہ الیکشن ہوتا. ہمیں پورا کانفیڈنس ہے. In this case, Mr. Ali Zafar has already explained he never went to the election commission in time to file his papers, and therefore he cannot now claim that he should have been made a candidate. یہ ہولڈ جو ایک ایسپیکٹ ہے حامد صاحب, پیج 20 پہ آپ ذرا سا پلیز دیکھیے. پیج 20 پہ پشاور کی ججمنٹ میں دی کمبائنڈ ریڈنگ آف سیکشن 208, 209 and 215 does not give any impression that ECP has any jurisdiction to question or adjudicate the intra-party election of political party. تو یہ تو ان ریم ہے, یہ سب کے لیے ہو گیا, یہ آج کے بعد ختم.
آج کے بعد پولیٹیکل پارٹی جو قبضے میں جس پارٹی کے وہ کہے گا تھینک یو ویری مچ میرا قبضہ رہے گا. یہ ختم ہی ہو گیا نا پولیٹیکل پارٹی کو. اب ای سی پی آج کے بعد الیکشن کیوں کریں پاکستان میں کیوں الیکشن اگر یہ بات ہے. یہ جو پشاور ہائی کورٹ نے کہا ہے basing it on the autonomy of political parties. Political parties are autonomous within the internal working. تو پھر وہ 215 کو چیلنج کر کے اس کو اسٹرائک ڈاؤن کروائیں, وائریز ختم کرا دیں اس کی 215 کی. دین ان فیوچر نو پولیٹیکل پارٹی ول بی سبجیکٹ ٹو دی انٹر پارٹی الیکشن. If the law it says and the varies are challenged and struck down by any court of law under Article 199. یہ نہیں کہا سر, میں عرض کروں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ autonomous body ہے, یہ الیکشن اندر سے اپنے انٹرنل الیکشنز کراتے ہیں, انہوں نے صرف سرٹیفکیٹ دینا ہوتا ہے جس طرح. چلیے یہ باتیں ہو چکی ہیں, کوئی نئی بات کریں نا. جی ابھی بھی میں نے لکھنا چھوڑ دیا. یہ نئی بات ہوتی ہے میں ضرور لکھتا ہوں. 3 ڈاکیومنٹس. جی جی سر, ایک آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کے بارے میں تو جو جناب کی دعا. الیکشن کمیشن نے آج ایک فیصلہ دیا ہے, یہ پرووائڈ کر دیں کاپیز پلیز. یہ بڑا کلیئر کیس آف ڈسکریمنیشن ہے سر, اگر اس کو دیکھیے گا. جی یہ دیکھیں, ایک پارٹی ہمارے سامنے نہیں ہے, آپ بے شک چیلنج کر لیں, آپ بے شک اس پارٹی کے خلاف کر دیں. دیکھیں یہ ان کو فائن لگا دیا ہے, انہوں نے الیکشن دے دیا ہے کہ یہ کیا کریں ہم, ان کو دے دیا رائٹلی. سو دیکھیں, اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا غلط ہمارے ساتھ کیوں غلط. ہم ایک اور بات کر لیتے ہیں. جی مرڈر از اے کرائم. مرڈر از اے کرائم. نو ڈاؤٹ. جی ایک محلے میں مرڈر ہو جاتا ہے, وہ تھانے جاتا ہے, کہتا ہے میں نہیں رجسٹر کرتا ہوں ایف آئی آر. ایک اور محلے میں مرڈر ہو جاتا ہے, وہ تھانے جاتا ہے, فوراً رجسٹر کر لیتا ہے. تو یہ ڈسکرمنیشن نہیں بنے گا اس گراؤنڈ پہ. کمپلائنس ود دا لا کانٹ بی کالڈ ڈسکرمنیٹری. دیکھیے, if the law, you can say this law is discriminatory. If at one time, let's even go along with your argument, Election Commission of Pakistan gives a favor to somebody and doesn't do anything, then you call upon the courts to make it comply with the law. You can't say, since that murder was overlooked by this SHO, the other murder in that mohalla should have also been overlooked. Ya to kahin ye crime nahi hai, wo ek alag baat hai. So I'm giving these very basic things. It will not create a right in you. You can take action against the ECP and say, why are you doing this? Or take action against that party کہ جی دیکھیں ان پہ تو ہاتھ ہلکا رکھا ہے. مگر اگر قانون ان کو یہ کام کی اجازت دیتا ہے, وہ آپ اس پہ فوکس کیجئے نا. ڈسکریمنیٹری, یہ ڈسکریمنیشن ایسے نہیں بنے گا ہے. لیکن میں عرض کروں, ایک بیسک پروپوزیشن ہے کانسٹیٹیوشنل لا کی. There can be a discriminatory law struck down on that account. There can be a law which is not discriminatory ex officio, but is exercised in a discriminatory manner. Correct. That is equally bad. Correct. Agreed. Article 25 کی equal protection. یہاں میں یہ عرض کر رہا ہوں, جس لا کے تحت یہ پار ایکسرسائز کر رہے ہیں وہ ڈسکریمنیٹری مینر ہے. یعنی ایک پارٹی کو تو وہ کہتے ہیں یہ سمبل آپ کو دے دیا, آپ کو صرف انٹر پارٹی الیکشن نہ کرانے کی سزا میں 20,000 دے دیے. ایک منٹ رک جائیے. جب انہوں نے آپ کو 2021 میں نوٹس دی تھی اور پھر 1 سال بڑھا دیا تھا, ANP کہے گی آپ پہ 2 لاکھ روپے کا فائن کیوں نہیں لگایا؟ نہیں, دیکھیے نا, ادھر تو ڈسکریمنیشن آپ کے فیور میں ہو گیا نا. جب 2021 میں آپ کو نوٹس دی الیکشن کراؤ, آپ نے کہا جی کووڈ 1 سال کی مہلت دے دیں, انہوں نے کہا چلیں جی, ادھر انہیں کو بغیر فائن کے آپ کو کر دیا. پھر آپ یہ بھی ANP کا لگا کہ وہاں تو ان کو ڈسکریمنیشن ان کے فیور میں کر دیا. کچھ کانسیکوینسز ہیں اس کے, کچھ کانسیکوینسز. مگر دیکھیے اپنے آپ کا مسئلہ یہ ہو رہا ہے نا, یہ آپ کے پیچھے پڑے کب سے الیکشن کی خاطر. آج کی بات نہیں ہے, جب آپ کی اپنی حکومت تھی نا. اب آج کی بات ہوتی ہے, آپ کہتے دیکھیں سیٹ اپ چینج ہو گیا, یا PDM آ گئی, یا کیٹیگرز آ گئے, ہمیں تنگ کر رہے ہیں. مگر یہ جب آپ کی اپنی حکومت تھی, اس وقت سے یہ کہہ رہے ہیں بھائی الیکشن کراؤ, اور آپ نے تسلیم کر لیا میں نے نہیں کرایا ہے, مجھے وقت ہمیں ٹائم دے دیں. ہاں تو ادھر آپ نے یہ کوئی بات نہیں کی کہ ڈسکریمنیشن ہے کچھ, اور آپ کو تھریٹ بھی دے رہے ہیں, اگر آپ نے نہیں کیا میں آپ کا الیکشن سمبل لے لوں گا. وہ اگر ایک آرڈر پاس کیا ہے وہ ڈسکریمنیٹری آرڈر نہیں تھا. مگر
लीगल बात करें ना, आपने कहा ये तो आप सब फैक्ट्स में जा रहे हैं। नहीं, मैं तो फिर exercising powers in a discriminatory manner. नहीं, अगर आपने अलाउ कर दिया, इलेक्शन सिंबल हमें क्यों नहीं कर रहे? आपने कहा you will attend to some constitutional points which I am not hearing. The point is that they are not treating all parties equally. वो हमें we got it. आगे बढ़ते हैं। So ये मेरा कम से कम पॉइंट नोट फरमाइएगा। Discrimination, discriminatory treatment. This party not equally and in a discriminatory manner. One of the examples is that one of the political parties has not held intra-party election, has been given time till May to hold it, and they have also been given election symbol. Why not the same treatment to us? Not it. Yes. As a matter of interest, are you contesting elections this time? आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? नहीं, आप जानते हैं। हाँ, नहीं, मैं तो नहीं लड़ रहा, लेकिन मेरा पर्सनली लड़ने के इसमें कोई नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ। I'm too old to do that physical exercise. Because the last one you contested, that's why I wanted to know. मैं एक दफा contest किया है, and that was stolen from me. I had won that. No, ऐसे पूछ रहे हैं आपसे। थोड़ी वो बात, मैं इसीलिए बात वो अपनी पर्सनल ये नहीं बात करता। मैं चला next submission. Now, sir, the way the intra-party elections, they have interpreted as if it is a mandatory provision. It is there in the Election Act, but it is not. My submission is not a mandatory provision. On this, I rely on two judgments already relied upon by Mr. Ali Zafar. ये cover हो चुका है ना ground. इंटर पार्टी इलेक्शन वो उन्होंने भी ये बात की है जी, नॉट मैंडेटरी जी। That provision is not a mandatory provision, and a party cannot be made to suffer or made to be thrown out of election process on that account. This Article 17 is the one that will prevail over any provision of the ordinary law. Correct. So therefore I am relying on both the judgments which have been elaborately read out before your lordship. PLD 1989, Supreme Court 66, Benazir Bhutto's case. Then the other is PLD 1993, Supreme Court 473, Mia Nawaz Sharif's case. Yesterday, during the course of argument, that before the Peshawar High Court, we did not seek declaration that we have held the elections correctly in a valid manner. My submission is, this is one of the objections they have taken. My submission is, my petition under Article 199 is not with regard to seeking a declaration. It is with regard to praying before the court that we have held the elections, and the EC's interference is something which may be declared as without lawful authority of no legal effect. In this regard, I'll read Article 199. What do we seek in certiorari? So this is Article 199, 1B, 1A, तो आपने मांगा है ना, आपने कहा इम्प्यून जजमेंट को डिक्लेयर करें इलीगल। ईसीपी के जजमेंट को या ऑर्डर को आपने डिक्लेरेशन तो सीख की है पेशावर हाई कोर्ट से कि इसको इलीगल डिक्लेयर कर। तो डिक्लेरेशन तो मांगा है आपने, आप कह रहे हैं हमने डिक्लेरेशन नहीं मांगा। Yes, sir. It says settled law that yes, we seek declaration that their act is. What is the point? What is the 199 point? Point ये है that I'm reading Article 199. Subject to the Constitution, the High Court may, if it is satisfied that no other adequate remedy is provided by law, A, on the application of any aggrieved party, make an order. If इसमें clause 2.
declaring that any act done or proceedings taken within the territorial jurisdiction of the court by a person performing functions in connection with the affairs of the Federation, a province and a local authority has been done or taken without lawful authority and of no legal effect. I'm seeking that declaration, not a declaration that my elections are valid. They are valid, I presume, and we say their interference is without lawful authority and of no legal effect. So therefore, they are saying that they should have sought declaration from ECP that my... अगर आप strict sense में जाएंगे तो you run into trouble. अब 2 में देखें, declaring that any act done or proceeding taken within the territorial jurisdiction of the court. Now ये तो आप तस्लीम करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर पास कर दिया इस्लामाबाद में. It's not the territorial jurisdiction of the court. ये अगर हम strict sense में जाएंगे ना तो it will cut both ways. By a person performing functions in connection with the affairs of the Federation. They'll say we don't perform functions with the Federation, we perform constitutional functions. Yes. Or a province, they'll say we don't do this either, we don't do local government functions. तो ये अगर हम ऐसे interpretation में जाएंगे तो if you go to the strict language, they may come up and say High Court has no jurisdiction on territorial ground and on grounds that we are not doing any of these things. We are doing elections. Is a body functioning in all the provinces. Correct. And the Federation. But they can declaring that any act or proceeding taken within the territory. अगर हम strict to sense में जा रहे हैं ना तो इसमें आपका फायदा मुझे नहीं नजर आएगा क्या है? इसका how does it help you? This is only an answer to their objection. Their objection was... they have conceded. In fact, I was surprised, but Mr. Makhdoom Ali Khan conceded. He says, yes, Peshawar High Court has jurisdiction. But having elected to go to Lahore High Court, you could not go to Peshawar. That's what I recollect his argument. I thought he's going to say that he doesn't have a jurisdiction and he conceded. This is your ownership impression. Nothing more I have to say about it. सर खत्म करें थोड़ा सा जल्दी करें बस जल्दी कर देता हूं आप बुरा ना माने हमें बुरा लगता है आपको कहते हुए भी My submission is it has been held by a number of judgments cited there that the right to participate in an election is a fundamental right of a political party. This has been यही राइट वो कह रहे हैं मुझे भी दे दो आपके जो 14 मेंबर बैठे हुए हैं नहीं कह रहे ये राइट हमें भी दे दीजिए प्लीज जनरल इलेक्शंस की बात मैं कर रहा हूँ भाई राइट ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी वो तो कोई डिनाई नहीं कर रहा है आपका राइट है वो कोई डिनाई नहीं कर रहा है वो कह रहे हैं मेरा राइट तो दे दो पहले फिर आपका राइट आएगा राइट तो अभी है ना कि अगर ही वाज एंटाइटल्ड टू दैट अगर वो वक्त पे पहुंचते ही नहीं यही तो बात है असल व्हाई ए पर्सनस ECP is taking so seriously somebody's complaint in internal working of a party. They know better who is a member, who reached at what time to submit its nomination papers. This is a factual matters should be left alone to the party. ECP has no business to interfere in that. So therefore these matters are factual matters within a party. Actually, unnecessarily, election commissions enter into factual details about the intra-party election, which does not have the jurisdiction, as very rightly pointed out by Mr. Ali Rafar. Now, sir, two more submissions, and that's it. I will not take your lordship's time. ECP... Time you may take, but then you may suffer the consequences. Your lordship was saying that I should conclude early so that... Yes. Actually, the ECP is targeting the party symbol of PTI. Time and again... But ये allegation आपने नहीं लगाया देखिए ये allegation target की बड़ा clear on the face of the whole record. It is PTI being picked out of all other parties for intra-party election, entertaining complaint by anybody making any kind of complaint or maybe. So these are why PTI is being picked up. Why they want to deprive it of participation in the election by depriving it of election symbol. That is where it is undoing the democratic process in Pakistan. My submission is that the interference and order
passed by the Election Commission virtually takes away the democratic right of millions of citizens of Pakistan who want to vote for PTI and their chosen candidates. Why are they being deprived of because depriving election symbol means you're depriving all those voters who are willing to vote for that political parties and their nominees. This is outbalance all other considerations. Very correctly pointed out by Mr. Ali Zafar, it is against the idea of proportionality, against the very principle of proportionality for something very minor. Within a political party, you are punishing millions and millions of citizens of Pakistan. This is maybe a dramatic argument, but can you turn to page 41 of your petition before the High Court? Page 41 of the paper book, which is your petition, and read paragraph 33. That in the meantime, as part of design, 14 persons who are not members of PTI filed it's under no provision of the आपने कहा we are not members of PTI. Yes. So when you're concerned about millions of persons, what harm will be done to if they were contested in election? If you are saying they're not, तो आपने कोई disclosure नहीं कर रहे हैं, किस basis पे आप इनको माना कर रहे हैं? बाकी तो चलें कुछ भी हम मान लेंगे, मगर अकबर अहमद का तो आप खुद तस्लीम कर रहे हैं, फाउंडिंग मेंबर है वो. Sir, founding member if it turns against his party, तो क्या वो party उसको रखने की compulsion है? देखें, he is not running against it. He's saying do things properly according to law. हो सकता है उनका मौक़िफ़ गलत हो. जी आप पार्टी फंडिंग सही करें, आप इलेक्शन सही करें. अब ये it doesn't mean कि you are, देखें, the greatest strength comes from those who oppose from within. ठीक है कि जी ये ऐसे ना करो. और अमेरिका में भी some of the greatest judgments were initially in minority and later on became the majority because they maybe had greater foresight, saw what should have been, and they had greater vision, but they were in a minority. But subsequently, with a lapse of time, they became in a majority. So ये किधर से आप इनको कह रहे हैं मेंबर नहीं है? आपने कह दिया काफी है. मैं आपको नहीं कैसे आप कह रहे हैं मेंबर? दो मिसालें, क्योंकि आपने खुद देखी तस्लीम किया है फाउंडिंग मेंबर है, फिर किधर से चला गया ये? नहीं, at some point in time he a founding member can have differences with his party and leave the party. That's called democracy. परसों ही एक इंसिडेंट हुआ है. नहीं परसों की बात नहीं कर रहे, केस की बात. नहीं आप इसका जवाब दे देना. आपने किस बेसिस पे तयन किया है कि ये मेंबर नहीं है आपके? इसके ऊपर पार्टी का मौकिफ आया है कि he was given show cause notice. दिखा देना वो show cause notice. सर वो तो लगाया हुआ है. कहीं नहीं लगाया. In any case. नहीं in any case नहीं दिखाई है हमें. देखिए आप हम सवाल पूछते हैं आप कितने नैनी केस. देखिए 205 में लिखा हुआ है कि आप किसी मेंबर को निकालने के तरीके का भी दिया हुआ है. आप बेशक हम ये नहीं कह रहे कि उसको आप रखें, वो फॉलो किया होगा ना, वो दिखा देते ये देखिए हमने इसको निकाल दिया खत्म. वो तो आपके सामने चैलेंज नहीं हुआ ना मामला के आया. देखिए एक देखिए नो आपने प्ली ले ली ना, आपने कहा ये मेरा मेंबर नहीं है. वंस यू एडमिट मेरा मेंबर है और फिर क्या मेरा मेंबर नहीं है, बर्डन इज ऑन यू. चलें तो इस पे तो कोई दो राय नहीं होगी ना. चैलेंज नॉट अस. Yes, the party will defend, but let him challenge that. There is no court proceedings under which or any other law under which he has ever challenged that. So why this is a matter within the party? मैं सिर्फ कल आपकी बात का जवाब दे रहा था कि there is a founding member of this party which has publicly joined MQM only 3 days back. So does he remain being he has been consistently for 27 years member of this party. So any person can नहीं हो सकता है कल आप join against his party. नहीं आप ये तो फिर आपने एक प्रूफ दे दिया ना. अब बाबर अहमद साहब के लिए भी प्रूफ दे दें कि उन्होंने फलां पार्टी ज्वाइन कर ली, बात खत्म.
اب یہ آپ کے دیکھیں معراج محمد خان صاحب تو شاید از پاسڈ ہوئے, عبدالعزیز خان صاحب ہیں پارٹی میں, چھوڑ گئے تھے. میں معراج محمد خان صاحب کی ہی ایگزامپل دینے والا تھا. He was a founding member of PPP, but he had differences in 1972. تو آپ کی پارٹی میں آ گئے نا, He left. آپ کی پارٹی میں آ گئے نا, تو یہ نام آپ نے لکھے ہوئے نا. اب یہ فوزیہ قصوری صاحبہ ہیں یا چلی گئی ہیں؟ تو دیکھیے جن کے نام فاؤنڈنگ ڈاکیومنٹ میں کم از کم آپ ان کو تو آپ اگنور نہیں کر سکتے نا. کیوں ایک اس وقت معاملہ پارٹیز کی انٹرنل ورکنگ کا نہیں ہے. اس وقت تو یہ ہے کہ آیا پارٹی کو پارٹی سمبل ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے. چلیے یہ بات آگے بڑھائیں نا, یہ بات بار بار سن چکے ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ ڈینائنگ پارٹی سمبل, آگے خان صاحب وی ہیو ہرڈ دس نا, سمبل والی بات, وہ سمبل والی ہم نے بات سن لی. اب ہم نے آپ سے ایک سوال پوچھا تو آپ اس کو کہتے ہیں چلیں اس کو چھوڑیں. 205 سیکشن 205 ہے, پھر اس کو بھی ڈکلیئر کر دیں انکانسٹیٹیوشنل الیکشن ایکٹ کا, کہ اگر آپ ممبر کو نکالنا چاہے خوشی سے نکالیے, ہم کب منع کر رہے ہیں. اگر ایک طریقہ کار ہے نکال لیجیے اس کے تحت. سسپینشن اور ایکسپلشن آف اے ممبر 205 میں لکھا ہوا ہے, کیا ہم اس کو بھی اگنور کریں؟ آپ کہتے ہیں چلیں جی چھوڑیں اس کو. کیوں چھوڑیں ہم بھائی, وہ ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں نا, یہی تو مسئلہ ہے. اگر وہ نہیں آتے, اگر صرف الیکشن کمیشن آتا تو پھر ہم چھوڑ دیتے اس بات کو. سر گزارش یہ ہے کہ اگر یہاں ایگریونس سیکشن 205 کا ہے, then he would have been a petitioner that he has been expelled. دکھائیے نا, میں نے یہ ایکسپیل کیا ہوا ہے. وہ تو کوشچن جناب کے سامنے ہے ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ نے اپنی پٹیشن میں کہہ دیا کہ میرا ممبر نہیں ہے نا, تو آپ کے کہنے سے بس کافی ہے. پارٹی سے نہیں, اگر اس میں ان کا ڈفرینس ہے تو پارٹی کو سو کرتے and would have challenged that termination. میرا کوئی ڈفرینس نہیں ہے, میں تو پارٹی میں کام کرنا چاہتا ہوں. That is something to be decided by a court if he challenges his termination. That is not being challenged before this honorable court. If you were in his place tomorrow, how would you feel? I will go to a proper court. Why would you challenging my no, you should show me. No, 205 के तहत मैं challenge करूँगा. No, you don't prove a negative, you prove a positive. If they had expelled you, you will go to a court of law and say this expulsion is unconstitutional. If there is nothing there, why should you go to a court of law? You are a member, khatam. The party is denying my membership. He should go and prove before a court of law. Party ہو پھر کو میں ہی ڈینائی کر رہا ہوں, تو دیکھیں سیلف سرونگ آرگومنٹ تو نہیں چلے گا. یہ چلیں خیر آگے بڑھیں. We have to conclude this now. میری گزارش یہ ہے کہ denying party symbol, یہ ایک الگ بات, is going to disenfranchise millions of voters who want to vote for the candidates nominated by PTI. یہ آپ نے کہہ دی بات, ہم نے نوٹ کر لی. Next point. The result, what is it that is before this honorable court? That is objectives resolution article 2(1) is being violated. دیکھیں اب بات آ جائے گی, do you deprive 850,000 of your memberships the right of vote? You can't say کہ میرے لیے یہ ہوگا اسٹینڈرڈ اور دوسرے کے لیے یہ ہوگا اسٹینڈرڈ. اسٹینڈرڈ has to be the same. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہاں citizens of Pakistan in millions میں 5 کروڑ ہو سکتا ہے ووٹر ہمارے ہوں. آج by this act of ECP they are being deprived of their right to vote, which is a fundamental right under Article 7. خان صاحب یہ بات ہم کتنی دفعہ سن چکے ہیں نا. ٹھیک ہے نا, اب اس کو آگے بڑھائے نا بات کو. اس کو آرٹیکل 2A کے تحت بھی دیکھیں نا, ہم نے پڑھا ہوا آرٹیکل جناب کی. ٹھیک ہے, لیکن مجھے بھی پڑھ لینے دیں. ہاں پڑھیں مگر ٹائم کی بات ہے. پھر 2A, the principles and provisions set out in the objectives resolution produced in the annex as hereby substantive part of the constitution and shall have effect accordingly. اب اس کو annex پڑھیں گے تو اس میں جو پہلی چیز دی گئی ہے وہ chosen representative کی بات کی گئی ہے. سر اس میں یہ کہا ہے wherein the
wherein states shall exercise its powers and authority through the chosen representatives of the people. अगर एक political party जिसकी perhaps बहुत बड़ी following है उसको election से बाहर कर देंगे तो फिर उस state को कौन represent करेगा? chosen representative तो बहुत सारे फारिग हो गए. नतीजा क्या है ऐसे election का जिसमें एक popular party with following is deprived of contesting the election, participating in the election. It virtually deprives and deprives millions of votes of their followers. Even ये million वाली बात हो गई ना, आगे बढ़ते हैं ना. अब ये हमने we've noted it many times. It's against the principle of chosen representative. अब आखिरी बात मैं कहूँ. Sir, this is a fundamental principle of constitutional jurisprudence, that the Constitution is equally a legal and a political document. So no court, while interpreting the Constitution or its provisions, can ignore the political consequences of its decision. Court or quasi-judicial authority can ignore the political consequences of its decisions, which at times can come back to haunt that body. So therefore, ECP has to consider the consequence of its decision, what will be the political consequences, because political parties have political implications, and Article 17 is there to protect the political rights, and the most important right is the right of vote. So therefore, the entire political polity and the Constitution virtually would disenfranchise tens of millions of voters, which will render the election as and its results as without legitimacy and without credibility. So therefore, depriving citizens of the right of vote will have very, very serious consequences for the future of the country, and will have the assemblies elected without full representation of all the voters and all the political parties will render the election as not legitimate and not credible. So that is something which I'll appeal before this Honorable Court to see that these consequences should not follow, and this consequence is of a very serious nature, and I'll appeal before this Honorable Court that such decisions at times have implications running into years and years. Today, even today, some of the decisions taken by this Honorable Court, we quote them, that has really hurt our polity over the years. Even 70 years have passed since Maulvi Tambizuddin's case, we keep talking about it. So therefore, every decision being made by the apex court has to see what will be its consequences. Thank you very much. Thank you. Ji. लोग किधर हैं? आप क्या कह रहे हैं? कोई और भी है या नहीं? Believe क्या आज है ना शक्ल दिखाएं? मैंने सुना इन्होंने कहा कि others are in person. I am only representing respondent number 10. Who are the others in person? Naturally वो आप ही की बातें adopt करेंगे ना, और तो नहीं करेंगे. I have to disclose that before the commission, I did represent, but I have not been instructed to represent them today before this court. मैंने उनको commission में identify तो करा सकते हैं, वो भी नहीं करा सकते हैं. जी मेरा नाम यूसुफ अली है. एक सेकंड. साबिका इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी. एक मिनट. क्या नाम है? यूसुफ अली. जी आप क्या हैं? मैं ये 2013 इलेक्शन में जनरल सेक्रेटरी था, जो इलेक्शन अहमद खान साहब ने करवाए थे. किस पार्टी के हो? एक इंसाफ जी, बचपन से. बचपन से अच्छी बात है.
2013 का जनरल सूबाई इलेक्शन भी मैंने लड़ा है तरीके इंसाफ से पीए एमपीए स्वाबी वन से हाँ जी। आप जीते थे हारे थे? जी मैं हारा था। ठीक है, तो आपको क्या इंतखाब में हिस्सा लेने दिया या नहीं दिया इन्होंने? मैं जी ऑफिस गया था जिसकी वीडियो भी बनी है सेंट्रल सेक्रेटरीट। हम नहीं, आप वीडियो को छोड़े, आप बता देना, जबानी बताइए। मैं गया था, मैं उधर ऑफिस में जो लोग थे हमने उनसे मालूमात चाहिए। हमसे पहले भी उधर लोग अब बलूचिस्तान के लोग भी आए हुए थे सुबह से कि हमें नॉमिनेशन पेपर चाहिए, हम इस इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं। तो किसी के पास कोई जो है मालूमात नहीं थी। तो फिर इलेक्शन कमीशन में आप लड़ना चाह रहे थे इलेक्शन? हाँ जी बिल्कुल लड़ना चाह। आपने कोई और पार्टी ज्वाइन कर ली है? नहीं। ठीक, अगला कौन है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी महमूद अहमद खान है। महमूद अहमद खान। मैं पीटीआई में 2006। महमूद अहमद खान जी। मैं 2006 से पीटीआई में दोहा कतर में जब था तो मैंने ज्वाइन किया था, और खान साहब का वहाँ मैंने फंक्शन भी करवाया था रमादा होटल में। और 2010 में मैं रिटायर होके केम डाउन टू इस्लामाबाद एंड स्टार्टेड वर्किंग विद पीटीआई इस्लामाबाद जी ऑफिस। एज व्हाट? मेरा थोड़ा सा आप क्या करते थे उनके दफ्तर में? क्या काम करते थे? काम क्या करते थे आप? I joined them as an ordinary member. Then I was given the 2 tasks. I was made in charge of the media, and I was also made coordinator of Islamabad. Coordinator. तो आप अब किस पार्टी में हैं? अब किस पार्टी में हैं आप? पीटीआई में मैंने जिंदगी में एक ही पार्टी ज्वाइन की है, उसी में रहना है, उसी में रहूंगा। दैट इज पीटीआई असल। आपको इलेक्शन लड़ने दिया या नहीं दिया? इंटरनल इलेक्शन का बिल्कुल मेरा इरादा था, और बात ये थी कि मैं किस बात का इलेक्शन लड़ूं। मुझे कई पोजीशनों का नहीं पता था, मुझे प्रोसेस का नहीं पता था, मुझे और लिस्ट का नहीं पता था। मैंने इलेक्शन, मेरा प्रोग्राम था, मैं इस्लामाबाद से हूं तो मैं फोकस इस्लामाबाद पे करूंगा। लेकिन देयर वाज नो इन्फॉर्मेशन। नॉमिनेशन पेपर दिया आपको या नहीं दिया? नॉमिनेशन पेपर दिया या नहीं दिया? नहीं सर, नहीं। इन्होंने अनाउंस ही नहीं किया कि कौन कौन सी पोजीशंस का इलेक्शन होना है। नॉमिनेशन तो उसके बाद आता ना, पहले ये बताते कि ये इलेक्शन पोजीशन है। इनको आपसे क्या प्रॉब्लम है? मुझे प्रॉब्लम है। इनको क्या प्रॉब्लम है आपसे कि आपको नहीं दिया? ये तो उनसे पूछे। मुझे शायद, मैं डेमोक्रेटिक, आई बिलीव इन डेमोक्रेसी। आई बिलीव कि पार्टी के अंदर डेमोक्रेटिक राइट होना चाहिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को एक्सेप्ट करना चाहिए, पार्टी में फाइनेंसेस क्लियर और उसका क्लियर ऑडिट होना चाहिए। ये कल्ट में कन्वर्ट ना करो। वी वांट डेमोक्रेसी इन द कंट्री एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम द पार्टी, and if there's no democracy in the party, there will be no democracy in the country. ठीक है, क्या वो आप भी बताएं, अपना तारुफ कराइए। ये कौन सी रेस्पोंडेंट है? नंबर 11। नाम क्या आपका? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नौरीन फारूक खान। आप किस पार्टी में हैं? जी मैं पीटीआई मैंने 99 में ज्वाइन की थी और बहुत सारे ओहदों पे रही हूँ। मतलब कराची। आप किस ओहदे पे थी या ओहदा नहीं था? नहीं, मैं भी आपको सारे ओहदे बता देती हूँ। मतलब 99 में एज अ वुमेन विंग की प्रेसिडेंट मैं कराची की थी। उसके बाद एक जरा आहिस्ता, वुमेन विंग प्रेसिडेंट कराची। उसके बाद फिर 2003-04 से मैं इमरान इस्माइल साहब जो कि सिंध के प्रेसिडेंट थे, उनकी सिंध की वुमेन विंग की प्रेसिडेंट थी। जी 2009 में हमारा लेबर विंग बना, तो उसमें मैं पहले तो पंजाब की एज ए जनरल सेक्रेटरी आई। 2009 पार्टी का लेबर विंग बना जिसके प्रेसिडेंट थे जुबैर खान, तो उनके साथ मैं पंजाब से पहले आई, फिर लेकिन उन्होंने मुझे मरकज में ले लिया अपने साथ, प्रेसिडेंट वुमेन विंग लेबर। उसके बाद फिर लेबर पॉलिसी कमेटी बनी हमारी, जो कि राना समी साहब थे, उनके साथ मैं लेबर पॉलिसी कमेटी की भी मेंबर थी। लेबर पॉलिसी कमेटी। Then afterwards, एक सेकेंड, लेबर पॉलिसी कमेटी। उसके बाद नईमुल हक साहब इधर शिफ्ट हुए कराची से, मतलब ही वाज डाइड 2 years back। नईमुल हक चीफ स्टाफ ऑफिसर ऑफ इमरान खान। तो आई यूज्ड टू असिस्ट हिम इन द सेंट्रल ऑफिस एज हिज एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। सेंट्रल ऑफिस एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू
चीफ स्टाफ ऑफ ऑफिसर मिस्टर नईम उल हक। जी नईम उल हक। और उनका डेजिग्नेशन क्या था? जी वो चीफ स्टाफ ऑफिसर थे इमरान खान के टिल ही वाज द प्राइम मिनिस्टर टिल ही डाइड। नहीं, पार्टी में क्या होता था? वही चीफ स्टाफ ऑफिसर थे, मतलब ही वाज मैनेजिंग टाइम ऑफ इमरान खान चेयरमैन। अब आप किस पार्टी में? मैं इसी पार्टी में हूँ, और लास्ट जो इंसिडेंट हुआ है जिस दिन इमरान खान साहब को इधर अदालत में पेश किया गया और उमर अताब बंदयाल साहब की उसमें, तो आई वाज स्टैंडिंग आउटसाइड द सुप्रीम कोर्ट, जिसकी मेरे पास वीडियो भी है, और मेरे साथ थे हमारे डीर अपर डीर। नहीं, अभी आप इलेक्शन लड़ना चाह रही थी? जी पार्टी इलेक्शन में कंटेस्ट करना चाह रही थी, क्योंकि मुझे ये था कि एज पार्टी पॉलिसी और पार्टी के आइन के मुताबिक कि हर पर्सन को राइट है इलेक्शन का, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सबमिसिव किस्म की बंदी हूँ, मतलब शराफत ईमानदारी से चलने वाली। तो मैंने कहा शायद इस तरह मुझे मौका मिल जाए कि मैं किसी तरह किसी उस पे आ जाऊं कि मैं हाईलाइट हो जाऊं। तो दैट्स व्हाई आई जस्ट वांटेड टू कंटेस्ट द इलेक्शन। और मैंने ऑफिस फोन करके भी पूछा, मतलब वहां पे जो बैठे हैं, आई विल नॉट कोट देयर नेम्स, बट दे सेड इट कि मैडम ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बस आप समझे इलेक्शन ऐसे ही हो रहा है। तो देन आई सेड ओके। और उसके बाद जब इलेक्शन हुआ और जिस तरह हुआ वो आप सबके सामने है। नहीं, हमें नहीं पता कुछ, आप कुछ कहेंगी तो पता चलेगा। चले वो तो जो भी हुआ है जैसे भी हुआ है, क्योंकि आपका सेंट्रल सेक्रेटेरिएट G8 में है, तो ये था कि मरकज के G8 में क्या कोई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है, उसके पीछे बहुत खुली जगह, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह आज G8 में कोई घर है या नो इट्स अ बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग? नो अपनी बिल्डिंग बनाई है PTI ने। कितनी मंजिला है? आई थिंक 3-4 मंजिला है। ऊपर टॉप फ्लोर पे काफी उसके स्पेस है और पीछे बहुत बड़ा लॉन है। अच्छा, ठीक। तो बाकी है कि मुझे इलेक्शन आप लड़ना चाह रही थी? जी बिल्कुल मैं लड़ना चाह रही थी। और सेकेंडली बात ये है कि मुझे नईमुल हक साहब लेट और इमरान खान साहब भी कहते थे ये मेरी पार्टी का असासा है और मेरी बहुत पुरानी नजरियाती कारकुन है, और मुझे कहते थे ही इज इंसाइक्लोपीडिया ऑफ PTI, कि आप इससे पूछ लें कि किसने कब ज्वाइन किया और किसका क्या बैकग्राउंड है। अच्छा, चलें। और कौन साहब हैं? आपका नाम? बिलाल अजहर राना जी। बिलाल अजहर राना। अजहर राना, ठीक जी। मैं फाउंडिंग मेंबर हूँ। 25 अप्रैल 1996 को पार्टी बनी तो उसी टाइम। बिलाल अजहर राना। इसमें तो आपका नाम नहीं आ रहा है फाउंडिंग डॉक्टर। ये फाउंडिंग में मैं वाद बंदा हूँ जो मेंबर हूँ, मतलब ये है कि फाउंडिंग लीडरशिप में नहीं हूँ। आप कब से पार्टी में? मैं 25 अप्रैल 1996 को पार्टी बनी तो 2 हफ्ते के बाद हमने तारीखी जलसा पहला टेक्सला के मुकाम पे। नहीं, वो कौन सा साल था? 10 मई 1996 को। उस वक्त से आप पार्टी में? कोई और पार्टी ज्वाइन की आपने? नहीं, मेरी 18-20 साल उम्र थी, मैंने पहली पार्टी जो है वो बनाई भी, इसमें काम भी किया। और लाहौर में अगर पहला जलसा हुआ 97 में, यानी कि पहला कॉर्नर में, कोई ओहदे पे गड़ी चाऊ में। कोई ओहदे पे थे? पार्टी के ओहदे पे कोई थे? ओहदे थे तो एज अ मेंबर, एज अ कंपेनर मैंने काम किया, क्योंकि पार्टी इतनी छोटी सी थी। अच्छा, तो आपने कोई ओहदा नहीं रखा है? मैंने कोई ओहदा नहीं देखा। आप इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे या नहीं? अपने लोकल एरिया में हमने नहीं, अभी जो इलेक्शन हुए इनके, अभी मैं इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे या नहीं? इलेक्शन लड़ना चाह रहा था। मैं गया था सेंट्रल ऑफिस और 1 दिसंबर 2023 को। तो क्या हुआ वहाँ? तो मुझे ना वोटिंग लिस्ट दी गई, ना फॉर्म दिया गया, कुछ भी नहीं। तो मैंने कहा कि क्योंकि असल बात ये थी कि टेक्सला और वहां से हमने यानी कि इसकी बुनियाद रखी थी, ज्यादा शुरुआत जो थी, तो हम ये चाह रहे थे कि ये आप टेक्सला से हो? टेक्सला से जी। तो ये हालिया दौर में ये जो है पिछले साल वाकयात हुए जिसमें लोग PTI में आए थे, वो फिर भाग गए यहाँ से। तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से नुमाइंदगी करना चाह रहा था और मैंने कहा कि इलेक्शन लड़ता हूँ पार्टी के लिए। ठीक, और कौन रह गए? सब हो गए? मोहम्मद मुजम्मिल सिंधु सर। आपका नाम क्या है? सर मोहम्मद मुजम्मिल सिंधु। सर मैं टोबा टेक सिंह से चक नंबर 312 गाबे से मेरा ताल्लुक है सर। मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था अपना UC 81 से टोबा टेक सिंह से। UC 81 टोबा टेक सिंह से मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था PTI का सर। कब? और 2018 कब थे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट? सर ये 3 अक्टूबर 2020। फिर उसके बाद
اور مستقل رہے آپ سینئر وائس پریزیڈنٹ؟ 2018 کے جنرل الیکشن میں میں پریزائڈنگ آفیسر بھی تھا مڈل گرلز کالج میں پی ٹی آئی کی طرف. کون سے الیکشن میں؟ جنرل الیکشن میں 2018 کے. آپ کدھر تھے؟ ٹوبا ٹیک سنگھ 312 گاہ پہ. جنرل الیکشن کے آپ کیا تھے؟ پریزائڈنگ آفیسر تھا پی ٹی آئی کا. پریزائڈنگ آفیسر. بلکہ میں نے فارم بھی اپلائی کیا ہوا تھا الیکشن کمیشن میں, مجھے اس کی تصدیقی کاپی دی جائے لیکن پرووائڈ نہیں کی گئی. اچھا پریزائڈنگ آفیسر تھے. پھر کیا ہوا؟ آپ نے الیکشن بھی لڑا ہے؟ جنرل الیکشن میں نے یو سی کا الیکشن لڑا تھا. ہارے جیتے؟ جی میں 3 ووٹوں سے دانلی سے ہرایا تھا. نہیں وہ چھوڑیں, کون سی یو سی؟ 81 سے سر. یہ کہاں کی ہے؟ یہ ٹوبا ٹیک سنگھ سے سر. اچھا یہ کون سا الیکشن تھا, کون سا سال تھا؟ یہ 2015 سر. یہ آپ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ بیٹھے؟ نہیں سر, اس ٹائم میں آزاد حیثیت سے لڑا تھا. آپ نے پی ٹی آئی کب جوائن کی؟ سر 16 میں. جوائن ان 2016. آپ کس پارٹی میں؟ آپ سر پی ٹی آئی میں. چھوڑی نہیں ہے؟ نہیں سر. پکی بات؟ جی جی الحمدللہ. اچھا کوئی اور رہ گئے؟ سارے ختم ہو گئے. آپ الیکشن لڑنا چاہ رہے تھے انٹر پارٹی؟ جی جی بالکل سر. میں 1 دسمبر کو پی ٹی آئی سینٹرل آفس گیا تھا اور 4:30 بجے میں نے ان سے فارم شام مانگے تھے, نہیں ملے تھے. 30 نومبر کو بھی میں گیا تھا. ان کا ادھر کے جو لڑکے ادھر نمائندگی کرتے ہیں پی ٹی آئی سینٹرل آفس کے, انہوں نے کہا جن کو خان صاحب بنائیں گے وہی بنیں گے, کوئی فارم شام نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں. خان صاحب آپ سے ناراض ہیں کیا؟ سر بس سچ بولنے میں ناراضگی ہو جاتی ہے نا جماعتوں میں. آپ نے سچ بول دیا, ایسا خطرناک سچ؟ بس سر کچھ ایشوز چل رہے تھے ٹوبا ٹیک سنگھ میں, تو وہ ادھر میں نے ان کو ہائی لائٹ کیا تھا, تو اس پہ ذرا میرے سے ناراضگی چل رہی تھی. چلیں ٹھیک ہے, اوکے. My lord, may I make short submissions on Very short. Very short. I'll be as brief as I can. You were very short earlier also. I'll try to match that time or lesser. First of all, my lord, may I quickly take the court through the CMA 171 that I filed. A copy has been provided to... جی ملا یہ 171. جی As my lord will observe, my lords will observe, and lady, میں نے اس میں کانسٹیٹیوشن آف پی ٹی آئی کی کاپی جو 1999 میں اپروو ہوئی تھی وہ پہلے لگائی ہے, اور اس میں پہلا صفحہ جو نمبر 3 آف دا پیپر بک ہے اس میں کمیٹی جو کہ کانسٹیٹیوٹ کمیٹی تھی جس نے یہ آئین سازی کی تھی, جس کے چیئرمین حامد خان صاحب تھے. جی وہ ان کے تمام نام ہیں. اس میں نمبر 1, نمبر 4 are no longer with us. With us, meaning they've passed away. Achha. Number 2 is in Canada and inactive. Number 5, I'm instructed also, is inactive. Number 7, 9, 7, 9, 10 and 11 have left party. Ji, only Mr. Hamid Khan, the chairman here. He left PTI. Have they joined other parties or they just? They have left the party. I have not been instructed कि current उनकी membership क्या, but they are believed to be no longer with the party. They have left the party. Chairman साहब, Saidullah Khan Niazi साहब, number 3. Who's he? He is also a founder member. Where is he? He is in Islamabad. I only see him occasionally on TV. He is a very vocal spokesperson, very active in the party. I believe he is still in the party. Ji, bilkul. ठीक. Dr. Alvi, President Dr. Alvi. The president, जी. Akbar S. Babar. Ji, they are very much. Okay. Ji. Also, I have attached a copy of the interim constitution from page 36 onwards to demonstrate the level of involvement. Page, what is the page? 36. Okay, fine. What? This is a letterhead written to. No, why are you showing its relevance? To demonstrate that جو فارمیشن ہے, مطلب نام کا فاؤنڈنگ ممبر نہیں ہوں, ایکٹیولی مل کے حامد خان صاحب کے ساتھ اور دیگر لوگوں کے ساتھ آئین سازی میں ایکٹیو نہ ہوں, اور اس کی یہ ایکنالجمنٹ لیٹر ہے. جو موجودہ آئین ہے اس سے فرق ہے.
جی بہت اس کے بعد کافی آئین بدلتا رہا ہے اور اب یہ ایشو جناب کے سامنے نہیں آیا, الیکشن کمیشن کے سامنے آیا تھا. دیور اپیرنٹلی مور دین ون ورژن آف دی کانسٹیٹیوشن, ایک 2019 کی جس کے اوپر الیکشن ہونا تھا, ایک وہ امینڈڈ ورژن جو کہا گیا انصاری صاحب تھے واپس لے لی, امینڈمنٹ ہوئی, اور پھر تو دیر ہیو بین ملٹیپل ورژنز. بٹ شروع میں پینل تھا یا شروع میں پینل نہیں تھا جی پہلے, یہ بات کی ہے جی. I do not have the track line of the constitution amendments from day one, but I believe the panel system has been introduced later. اور کوئی بات جی نمبر 3 پہ سر ایک بہت اہم ڈاکیومنٹ ہے, پیج 58. جی یہ جس سمبل کا ذکر ہو رہا ہے, یہ خط میں عمران خان صاحب چیئرمین نے مجھے اکبر ایس بابر کو آتھورائز کیا تھا کہ یہ سمبل کی درخواست. I can't see your name, read it. جی اس میں آپ this letter is written to the Secretary Election Commission, application for allotment of symbol. اس میں authorization ہے, my apologies. جی عمران خان صاحب کا سگنیچر ہے اور اس میں سمبل کے لیے جو مختلف بیٹ ٹائگر سارا ہے کہ یہ ہم اپلائی کر رہے ہیں, اور اس کے آگے میں آپ کا نام کہاں ہے؟ جی میں وہ اینکس میں ہے, وہ میں دکھا رہا ہوں پیج 61 پر. مسٹر اکبر ایس بابر, سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری, پاکستان تحریک انصاف, is hereby authorized to submit the required documents of پاکستان تحریک انصاف to the election commission. So یہ جو اپلیکیشن بھی تھی مجھے آتھورائز. پارٹی کب بنی, کون سے سال میں؟ پارٹی تو جی mid 90s میں بنی, یہ آئین جو ہے 99 میں آیا. اور یہ سمبل یہ 2002 میں کیوں آ رہا ہے, پہلے کیا سمبل تھا؟ I'll have to get instruction on that. ٹھیک ہے, تو یہ 61 ہو گیا. اور کوئی بات جی, اور اس پہ میں نے پھر ایک سیمپل لگایا another founding member کو پیج 63 پہ کہ جب شو کاز دینا ہوتا ہے تو کس طرح شو کاز دیا جاتا ہے, پیج 63 پہ. چلیں خیر, وہ تو الگ بات ہے. اور اس سے جو کس کو شو کاز دیا ہے؟ this show cause was to Mr. Ahmad Khan. کیوں؟ He said something that the secretary at that time did not like. He perhaps spoke truth to power as he always does. پہلا پیراگراف کیا ہے؟ It has been noted by the undersigned that the chairman of the party, Mr. Imran Khan, that you have repeatedly in the print and electronic media spoken against the maligned, defamed the party without any justification and on the basis of fake and false allegations which amount to malafide. Whereas you are hereby charged. اس میں جو میں جو کب کی بات ہے, this is December 1, 2019. اس میں جو it was reported that Khan Sahab had responded very strongly to the show cause notice, or on page 65 I just want to read one line. This is 64 سے پڑھ لینا. will not quit party under any میں اسی کا جو مین کوٹ تھا وہ کر رہا تھا. سو دکھ کی یہ بات ہے کہ a different measure, a different standard, a different argument is being presented for a co-founder. This is very painful to observe. اس میں آپ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں 65؟ یہ جی کہ let me make it loud and clear that I will not quit the party under any circumstances. So why is there a different measure of the application, the interpretation of the law of Akbar S. Babar? He has made it clear over the years he is not going to quit the party. If you want to turn him out, follow the law, give a show cause notice, let him defend it, turn him out. He is bound, like I... show cause notice کا کیا بنا؟ I have جو پبلک نالج ہے جی خان صاحب میں جی. اس کے علاوہ 2 اضافی کاغذات جو میں نے جمع کرائے ہیں, یہ وہ ججمنٹس ہیں, ایک فیصلہ الیکشن کمیشن کا اور ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کا, جس میں میرا ممبرشپ کا کوسچن ایز اے فیکٹ اسٹیبلش ہو گیا کہ میں ممبر ہوں, پارٹی اس کو کانٹروورٹ نہیں کر سکی. اس پیج پہ جی پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ 68 سے جناب. صرف وہ جملہ بتا دیں. جی میں اس پہ, اس میں آپ رسپونڈنٹ تھے؟ جی یہ وہ میٹر ہے فورن فنڈنگ کا, جب میں نے کمپلینٹ اس میں دائر کی تھی اور اس سے جو لٹیگیشن ایمنیٹ ہوئی, وہاں پر بھی یہ کہا کہ یہ ممبر نہیں ہے, اس کی شکایت مت وصول کرو. تو یہ we went to the whole membership story multiple times and here. Where is it held that you're a member? جی in paragraph 10
In view of the above, it is confirmed that Paragraph 10, page बताइए. page 71 पे ये 10 से शुरू होता है जी, 11 में भी इसका डिस्कशन है, और 13 पे आ जाता हूँ, 73 पे, to cut it short. Paragraph 13 on page 73. In view of the above referred section 7, the petitioner has not produced any single document which would come under the definition of a show cause for suspension or expulsion of the membership of the political party, although there is no doubt that respondent number 2 was relieved from his duties of Central Information Secretary, and he himself acknowledged the same through his email dated 11/9/17. But for expulsion or cancellation of membership, it requires show cause notice, which was never been issued in case to respondent number 2. ये जजमेंट की तारीख क्या है? ये फैसले की तारीख है जनाब 18/7/2018, which is evident on page 68. इसकी उन्हें अपील की? There was an ICA, and I believe that इस पॉइंट पे अपील नहीं. this question has never, this determination has never been overturned to date. There have been at least 11 rounds of litigation before the Islamabad High Court since. Why? For what? On every point at the ECP, कभी jurisdiction नहीं है, कभी मैं member नहीं हूँ, कभी उनका ये इख्तियार नहीं है, कभी उनका वो इख्तियार नहीं है, writ होती रही है. If my lord wishes, मैं वो list of litigation भी file कर सकता हूँ, मेरे पास वो handy होगी. At the end of the day, उस litigation का बना क्या? उसका बना ये कि स्क्रूटनी अलाउ की गई, स्क्रूटनी हुई, फाइंडिंग ऑफ फैक्ट हुई कि सोर्सेज, प्रोहिबिटेड सोर्सेज से पैसे आए. बना? शो कॉज नोटिस पे फिर रुक गए जी. स्टे ऑर्डर चल रहा है. I have not been associated in the show cause proceedings. I have आपके client हैं, उनको पता होगा. नहीं, he has not been associated because now the argument. Client, where is he? हमें डायरेक्ट ना एड्रेस करें, आप पूछ लें उनसे. जी, पूछ लें. मैं गुजारिश पूछ तो लेना. आपको तो शो कॉज की प्रोसीडिंग में आपने हिस्सा नहीं लिया है. नहीं, उसमें ये बता दीजिए कि जो फॉरेन फंडिंग का फैसला था अगस्त में, उसके बाद 5 अगस्त को शो कॉज दिया. उसके बाद PTI ने चैलेंज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो लार्जर बेंच बना, 2 फरवरी 2023 में डिसमिस हो गया, एंड दैट इज वेयर इट स्टैंड्स. वो ये कह रहे हैं जी कि शो कॉज के बाद दे चैलेंज्ड इट बिफोर द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिसमें एक लार्जर बेंच बना, बट वो भी उनकी दरखास्त डिसमिस हुई वहां पर. तो अब इनके मुताबिक कोई अमर माने नहीं है. बट आई हम्बली सबमिट. शुरू कब हुई ये कंप्लेंट आपकी? नवंबर 2014. First hearing, I believe, took place in January. It was filed in November. The first hearing took place in January 2015, and then successively chalti rahi. And then the round of litigation began later in that year, and it has been going on and on, sir, since then. जी सर, ये पहला पॉइंट है ऑफ द डॉक्यूमेंट्स. और कोई बात? जी सर, ग्राउंड्स बताए गए कि अभी कहा कि जी बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली जवाब दे दिया है कि क्यों अकबर बाबर को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया. कम से कम 4 रीजन बताए गए. इतना कॉम्प्रिहेंसिव है कि नॉट अ मेंबर एक दफा कहा गया, फिर कहा गया डिड नॉट पे 50,000 रुपीज, फिर कहा गया ही केम लेट, फिर कहा गया ही डिड नॉट कम विद अ पैनल. नहीं, देखिए वो जरा कॉन्ट्रडिक्टरी पोजीशंस ले रहे हैं ना जी. एक तरह तो उन्होंने लिख के तो कहा है कि आप मेंबर नहीं है जी, तो जब मेंबर नहीं है तो फिर उनको भगाएं, मतलब वो फिर नॉमिनेशन पेपर का सवाल ही नहीं पैदा होता है. बिल्कुल वो फिर ये मतलब बड़े रिलक्टेंटली हामिद खान साहब तो कंसीडर्ड वेरी फ्रैंकली दैट ही इज द फाउंडिंग मेंबर. उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता इसके बाद क्या हुआ. यस. अब पेज 220 अगर देखिए रेट में कहते हैं ना कम टू कोर्ट विद क्लीन हैंड्स. उन्होंने कहा कि जी आप लोग मेंबर्स नहीं है. ये गलत नहीं है. अब बेशक अपोज करें आपकी पिटीशन, वो तो हक है सबका, मगर फैक्चुअली तो बताएं ना सही बात. बिल्कुल. फिर आप यस बिल्कुल आप कहें कि जी मेंबर हैं मगर इनको कोई इख्तियार नहीं है, जो भी बात करें तो ये जरा सा हमें ये जरा फर्क बताइए ना. जी बिल्कुल. तो इन्होंने कोई पेश किए सबूत? नहीं सर, नॉट टू माय नॉलेज. तो आपसे इनसे गिला है तो बाकी जो आए 5-6 लोग, इनसे क्या मसला है? जिस तरह उन्होंने कहा सर, माय रिकलेक्शन इज, उन्होंने ये बयान शायद नहीं किया है. जब इलेक्शन कमीशन में बहस हो रही थी तो उन्होंने अपने मेंबरशिप के कोई फॉर्म्स या इन्होंने कुछ चीजें उधर शो की थी. सो इफ माय लॉर्ड विल आस्क देम, दे विल बी एबल टू शो देम, शो द कोर्ट के क्या एविडेंस थी ऑफ देयर मेंबरशिप. अच्छा, और कोई बात? जी. पेज 231 पर जो मेरी कंप्लेंट है इलेक्शन कमीशन को, उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि दिसंबर 1 को 4:45 पर मैं गया
This is well within the time of the nomination papers. So I do not know where they page 231. Paragraph 3, on December 1, 2023, around 4:45 p.m. in the afternoon, I, along with a delegation of PTI members, visited PTI Central Secretariat located in G8 sector of Islamabad. Now, इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड तलब किया है जनाब ने, उसमें वीडियो एविडेंस है, उसमें वाजे है कि वो विद इन टाइम देयर वाज अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल देयर। तो शायद खुद कह रहे हैं, मान भी रहे हैं कि आप गए थे। बट अभी आई मिसहर्ड कि उन्होंने कहा कि जी वक्त के बाद आए हैं। मुझे तो वक्त के अंदर आए हैं, यहाँ लिखा हुआ है, इसको चैलेंज पहले नहीं किया, आज बिलेटेड चैलेंज है। वो इतनी बाहरी चीजों में हम नहीं जाएंगे। जी बेहतर। अगली गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ सर कि जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है ये करवा। तो ये कह रहे हैं कि चले भाई वो इलेक्शन गलत हो गया मगर मुझसे सिंबल तो ना लें। मैं उस पे क्या आप कहते हैं? जी 215 को अगर इजाजत दे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि उसकी करेक्ट रीडिंग प्रेजेंट नहीं की गई। करेक्ट रीडिंग कुछ यूं बनती है, notwithstanding anything contained in any other law, a political party enlisted under the act shall be eligible to obtain an election symbol. एलिजिबिलिटी सर मैं रुकता हूं, यहाँ पर एलिजिबिलिटी मेजर है, यहाँ पे ऑटोमेटिक ग्रांट ऑफ सिंबल नहीं है। जी कौन से पेज में? सर मैं सेक्शन 215 ऑफ द इलेक्शंस एक्ट पढ़ रहा हूँ। 215 अच्छा, जो ये कह रहा है कि आपकी एलिजिबिलिटी टू ऑब्टेन अ सिंबल का स्टैंडर्ड है। आर्ग्यू ये किया जा रहा है कि ग्रांट हो गया। आपका पॉइंट क्या है? कि अगर ये दस्तावेजात जो कि कानून कहता है कि आपने सर्टिफिकेट्स देने हैं तो फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे टू ऑब्टेन ए सिंबल, बट यू डू नॉट ऑटोमेटिकली गेट अ सिंबल ग्रांटेड टू यू। और यहां पर जो पॉइंट मैं गुजारिश कर रहा हूं कि व्हेन द मेजर ऑफ एलिजिबिलिटी इज ब्रॉट इनटू ए क्राइटेरिया देन समवन हैज टू डिटरमिन whether or not you are eligible. If I am 5 years old and wants to run a 100-meter Olympics race, somebody will determine whether I am eligible to do that. So, इसी ज़मीन में सर एक और गुजारिश है कि रूल 15 का हवाला दिया गया जो इलेक्शन रूल्स के इन्होंने अपना PTI के अपने इलेक्शन रूल्स हैं, उसमें भी वो छोड़ें, दूसरा पॉइंट बताएं। उसमें बड़ा लिखा आफ्टर का लफ्ज है, उसमें वो जनाब नोट कर लें, आफ्टर he announces। ये एक्चुअली क्योंकि इस पे बहुत इन्होंने लेबर किया पॉइंट, I will not take more than 30 seconds। The Federal Election Commission shall declare the result of concerned panel or chairman, as the case may be, at the notified polling day at the polling venue after taking objections. They have not showed what objections, if any. They even asked anybody कि कोई objection तो नहीं है election में, or from the members, or votes present at the venue. ये किधर से आप पढ़ रहे हैं? ये मैं page 100 of the PTI rules. Where will we find them? On our books? जी page 100 of the petition, page 100. जी जी ये शुरू होते हैं पेज 98 पे टाइटल एंड 115 रूल 15 जो जनाब के सामने पढ़ा गया। The Federal Election Commission shall declare the result of concerned panel नंबर क्या पढ़ रहे हैं? 15 as the case may be at the notified polling day at the polling venue after taking objections from the member or voters present at the venue. So they have not discharged the burden of after. नहीं, ये तो फिर उनका जवाब बनता है। वो हमने जब उनसे पूछा कि जब अगर सारे अनअपोज्ड आ गए तो फिर आप जाके मीटिंग क्यों की वहाँ चमकनी में, तो वो तो इस पे रिलाई कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट करता। मैं ये कह रहा हूँ कि ये रिलाई जरूर कर रहे हैं लेकिन ये उनके हक में बात नहीं कर रहा है अभिषेक। ये बेसिकली अनअपोज्ड का जो फॉर्मूला या मॉडल या मेथोडोलॉजी यहाँ प्रेजेंट की गई है, ये इन रूल्स की भी मंशा मुझे तो नजर नहीं आती, बट दैट इज फॉर माय लॉर्ड्स टू कंसिडर के क्या है। अगला जो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ सर, इट्स अ हाउस कीपिंग एस्पेक्ट। आइन की, PTI के आइन की एक शिक है
जो कि पेज 171 पे जनाब के सामने आएगी। ये बारीकियों में आपको भी आप ले जा रहे हैं, हम अवॉइड कर रहे हैं चीजें। जी 171 पे क्या है? ये मैं इसलिए गुजारिश कर रहा हूँ कि जनाब ने सवाल पूछे कि पेशावर में पिटीशन क्यों हुई, किसने की, लाहौर में क्यों हुई, किसने की, उसका आप क्या जवाब देते हैं? मैं देता, मैं पहले कहना है कि मैं जा सकता हूँ कहीं भी। I will defer and support the argument presented by मखदूम साहब कि जब उन्होंने एक एल फोरम इलेक्ट कर लिया था लाहौर का तो वहीं पर रहना चाहिए था। ये फोरम शॉपिंग ही है मेरी नाकिस राय में, और दिस प्रैक्टिस शुड नॉट बी कंडोन्ड। ये जो पिटीशन इन्हें फाइल की पेशावर में, इन्हें डिस्क्लोज किया कि एक लाहौर में भी पेंडिंग है? नहीं सर, मुझे नहीं नजर आया, बट मैं डबल चेक कर लेता हूं। बट मैं उससे भी एक प्रायर फंडामेंटल पॉइंट, हाउस कीपिंग अगर इसको लाइटली लेना चाहते हैं और मोर सीरियस अगर इसको अथॉरिटी की बेस देखना चाहते हैं, वो ये है कि ये कौन है आपके साथ जो खड़े? my colleague Badr, he's been very kind and helpful and also he's not neither kind nor helpful because he would be checking when we asked a question कि इन्होंने इलेक्शन पिटीशन जो पेशावर हाई कोर्ट में फाइल की उसमें ये उन्होंने डिस्क्लोज किया कि लाहौर में भी मैंने पिटीशन फाइल की। वो एक्चुअली tells me, वो पर उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उनको दे दें और चेक तो कर लें। जी बदर जस्ट मेंशन कि मैंने चेक किया, सर्टिफिकेट में उन्होंने ऐसा नहीं लिखा, उनका फर्स्ट पिटीशन है, बट नहीं वो पिटीशन पेशावर में फर्स्ट है। उन्होंने जिक्र किया कि भाई लाहौर में भी एक पिटीशन है, बेशक उसकी वजह बता दें कि जी दूसरा मसला है, इधर दूसरा मसला है। नहीं जी ऐसा नहीं। जो मैं वो जरा ऑन अ लाइटर नोट था। आई होप यू डोंट माइंड। नॉट एट ऑल। आई होप ही डजंट माइंड। I would not be able to read all these documents without them. Just point out, नहीं कह रहे हैं, but actually पैरा 20 में जिक्र किया। सर्टिफिकेट में नहीं है, 20 सर्टिफिकेट में, पैराग्राफ 20 में एक सेकंड नहीं, पेज बता दें पिटीशन का पहले। पेज 38 कैंसिलेशन मेंबरशिप का भी बताएं। पैराग्राफ 20 में पढ़ें। That however no written order was provided for longer than expected, therefore the petitions filed several applications for copy of the order, saying that an order had already been announced and written order may be passed. The applications were filed on so-and-so, but no avail. Finally, an order was announced by ECP on 23/11/23, completely changing its earlier order announced on so-and-so, whereby ECP declared that petitioner had failed to hold intra-party elections in accordance with prevailing Constitution 2019, and directed the petitioner to hold intra-party elections in accordance with the Constitution prior to the amendment of June 2022 within 20 days positively, and also resubmit its result along with all required documents including Form so-and-so within 7 days. This order of ECP dated 23/11/23 has been challenged in writ petition which is pending in the Lahore High Court. Lahore. But इसमें आपने नंबर नहीं दिया और इसमें आप इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर रहे हैं कि ये रेलिवेंट नहीं है। मेरे ख्याल अगर या क्या वो बता दें, वो वाला पोर्शन बताएं कि ये अलग कंट्रोवर्सी है। वो I mentioned it, that was the question. I mentioned किया। पेज 50 पे देखेंगे जनाब सर्टिफिकेट। Lordship, I've just received page 50. Page 50 पे जो सर्टिफिकेट है, certified as per instructions of the client that this is the first petition before this court against the impugned order. This court. वो तो बात सही है उनकी। Earlier writ petition so and so was disposed of with the direction to ECP to decide the matter of IP. ये कौन सी petition है 5791? जिसमें डायरेक्शन दी थी कि जी आप नहीं पता, आप तो ऐसे कह रहे हैं पता है, किसी ने इसकी निशानदेही नहीं की अभी तक। मैं अभी बता देता हूँ जी। एंड पेज 602 पे जनाब फैसला है इसका, इसकी पिटीशन लिखी है। वॉल्यूम 3 वॉल्यूम 3 602 पे फैसला है जी। And the petition starts at page 585. The order in the petition and the petition starts at page 585. ये जरा पढ़ें, ये किसी ने आज तक जिक्र नहीं किया, तो ये क्या चीज है? 602 पेज पढ़ता हूँ जी। Petitioners through the instant petition have asked for the issuance of an appropriate writ seeking directions to the respondent to display published certificate of the PTI on website of the Election Commission of Pakistan in terms of section 2093 of the Elections Act.
2070 without any delay. During the course of arguments, we have been informed that subject matter of instant petition dispute over the intra-party elections of the Pakistan Tehreek-e-Insaf conducted on 2/12/23 has already been heard in detail by the Election Commission of Pakistan, and judgment has been reserved due to restraining orders of this court dated 11/12/23 and 15/12/23 passed in the instant petition. Being so, notwithstanding the arguments so advanced and hard-pressed by the learned counsel for the parties at the bar, keeping in view the peculiar facts and circumstances of the case, and in the larger interest of justice, rather than passing in any order or observation qua publication of the certificate of the PTI on the website and its publication in the official gazette, under the provisions of... ये स्टेक ऑर्डर दिखाई 11, 12 और 15, 12 ये क्या है? जी, मैं लगाया इसमें मैं देखता हूँ सर इसमें। और ये पिटीशन भी बता दें किस पेज पे है? ये पिटीशन वाज 585 सर। जो नहीं, इसका ये जो 11 इसमें आर यू श्योर? अच्छा, अब ये स्टे बता दें, ये स्टे कैसा है? ये मैं वो देख रहा हूँ, मुझे सर वो 11 और 15 का ऑर्डर मखदूम साहब है कहीं या नहीं है? Please see page 602. The last line on the page refers to orders, interim orders passed on 11th and 15th of December 2023. Are they on the record? My lord, they are not. Do you have them? My lord, I'll just check. Okay. ये इस पिटीशन में ने क्या मांगा था? प्रेयर क्या थी इसमें? जी मैं इसका प्रेयर है जनाब। On page 5, starts with 590, hold and declare that delay on part of the ECP to publish the certificate of PTI on the website of ECP, especially in view of upcoming general elections. Again, it's missing language, sir. B, direct the Election Commission of Pakistan to forthwith publish the certificate of PTI on website of ECP as required by section 2093 in the interest of justice. Hold and declare that proceedings by ECP in this regard are without jurisdiction, without lawful authority and illegal, and no action can be taken by ECP in pursuance thereof. Hold and declare that ECP cannot question the validity of the IPEs, which is intra-party elections, on the basis of any objections filed by any person. In the meanwhile, restrain the ECP. Can you go back to page 602? In paragraph 2, this is the dispute. G. Any other point? Actually, the point that I wanted to make with reference to the Constitution was, my lord, that if Your Honours, when you use the word Constitution, just clarify. PTI or Pakistan? PTI Constitution. My apologies. Page 171. यहाँ पर जनाब देखेंगे कि जो शिक है 1.3.7, this is second from the bottom. SG, which is the Secretary General, shall represent party in all judicial and legal matters. So while the questions were being asked by the court, I observed that the Peshawar petition was not authorized by the Secretary General, but the Chairman. So this was just a point I wanted to bring to the court's notice. Umar Ayub Khan is a petitioner. In Lahore, in Peshawar. He's a petitioner, but he's one of the petitioners here. But the authority that is appended, अगर उसको मैं उसका सफा भी बताता हूँ, that has been not given by the Secretary General himself, but by the Chairman. But like I said, sorry. Apologies. I think there's a last 2 points, sir. प्राइवेट क्लब नहीं है, अभी हमने सुना है कि पॉलिटिकल भी है, इट्स अ मोर. और आखिरी सेक्शन 66 का हवाला देना चाहता हूं, बिकॉज 104 सेक्शन ऑफ द इलेक्शंस एक्ट का जिक्र किया गया. सेक्शन 66 इज क्वाइट इंस्ट्रक्टिव टू दैट डिबेट. आई जस्ट वांट टू आइडेंटिफाई दैट. 66 says a contesting candidate before seeking allotment of a prescribed symbol shall file a declaration before the returning officer about his affiliation with a particular political party.
if any, along with a certificate from the political party showing that he is the party's candidate from the constituency. So ये जो तासुर दिया गया कि सिंबल, ये जो आपने लिस्ट देनी है या अफिलिएशन एसोसिएट करनी है, सिंबल मिलने से पहले करनी है, तो कोई अमर माने नहीं है किसी भी कैंडिडेट को अपने कागज जमा करा के इलेक्शन लड़ने के लिए. ये जो 1666 is it attending to general elections or intra-party elections? So I'm now coming to the general elections. नहीं, ये 66 जो पढ़ रहे हैं. जी, general elections. I've not understood the point. Sorry, it was argued that the election commission perhaps wants to deprive the party from the symbol and in the process disenfranchise lakhs of people and also its members. So यहाँ पर वाज़े है कि कानून की मंशा ये है कि अगर कोई इलेक्शन लड़ना चाहता है तो वो जब अपने कागज जमा कराएगा तो उसने एक अपना एफिलिएशन लेटर और अपनी कागज प्रायर टू अलॉटमेंट ऑफ सिंबल करना है. तो जो एप्रीहेंशन है कि जी सिंबल नहीं मिला हम इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, ऐसा कोई नहीं है. पार्टी के बेस के ऊपर पार्टी ये कह सकती है जी कि मैं इस पार्टी का नुमाइंदगी से ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ. सिंबल की डिबेट बाद में शुरू होती है. जिस तरह मैंने कल गुजारिश की थी, 3 कॉन्सिक्वेंसेस थे, मैं वो दोबारा रिपीट नहीं करता. That is it, my lord. I have nothing further to add unless there is a question that I need to respond to. What is war of attrition? You should ask a question. I've asked a question. On the, I cannot answer that. लेकिन मैं एक और सवाल में जब Badr was kind to mention, जब ये कहा गया कि जिस तरह इलेक्शन पिटिशंस के हवाले से बड़ी वाज़े प्रोविजंस है कानून में कि कौन चीज कब होनी है, क्या प्रोसीजर है, सेक्शन 3(1) और सेक्शन 4(3) का जिक्र नहीं किया गया 3(1) ऑफ द इलेक्शंस एक्ट, जो ये कहता है कि जहां पर, ये मैं पढ़ देता हूं सर, ये नए पॉइंट्स हैं तो हम जरा पढ़ तो लेना. जी, ये सिर्फ वजाहत में करना चाहता हूं क्योंकि ये पॉइंट रेज हुआ. सेक्शन 31 नो सर, सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 of the Elections Act 2017. In the performance of its functions and duties and exercise of its powers, the Commission shall regulate its own procedure. So अगर कोई ऐसी बात थी जो कह रहे हैं तो मेरी कंप्लेंट गई इंट्रा पार्टी के हवाले से. खैर ये तो ओके. और इसी तरह सेक्शन 4 में जनाब सबसेक्शन 3 जो है, it follows the complete justice power vesting in the commission under subsection 1, and it says, मैं 1 भी पढ़ देता हूँ, the commission shall have the power to issue such directions or orders as may be necessary for the performance of its functions and duties, including an order for doing complete justice in any matter before it. बाकी अटेंडेंस. और इसी तरह से सबसेक्शन 3, anything required to be done for carrying out the purposes of this act for which no provision or no sufficient provision exists shall be done by such authority and in such manner as the commission may direct. So वो जो challenge to the complaints and all है, उसके context में मैंने ये निशानदेही की है कि ये provisions भी exist करती हैं. The commission is not wholly deprived of power and authority. It is an independent body as the court has observed, and it needs to be empowered. Thank you, coach. Thank you. किधर हैं? जी सर, आई एम इन्फॉर्म्ड कि पहले चिराग होता था बैट से. पहले चिराग होता था सिंबल बैट से पहले. किसका? 2002 में PTI का सिंबल की जो बात हो रही है. ओके. जिन्हें आपने एक सवाल पूछा था क्योंकि और सिंबल तो नहीं था, तो उसका मुझे उन्होंने बताया कि चिराग था. So he's earned his keep. Always. More than grateful. Thank you. Need anything? My lord, I just want to right of reply is restricted to the points other side is raised. strictly, my lord. Including the reasons assigned by the bishop. My lord, that would be my main burden because that has been the main plank of the argument of the other side. My lord, very, very briefly, may I just hand over a few notes of chronology first? My lord, this is a chronology which has just been given. This is just to save your lordship's time. Ansab ko bhi dijiye. Ji. I will not read it. This just gives, my lord, the event and the timeline and the page number to facilitate your lordships.
اچھا ایک ان کا یہ پوائنٹ ہے کہ آپ ڈفرینٹ سٹینڈرڈز اپلائی کر رہے ہیں, کسی کو آپ فائن لگا رہے ہیں, کسی کو کہہ رہے ہیں بعد میں الیکشن کر دو, اور صرف انہی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. یہ پوائنٹ پہلے آپ ایڈریس کر لیں. My lord, with your lordship's leave, as of yesterday, the enlistment of about 13 political parties. 13 or 30? 13. جی. They have been. آج کتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان میں؟ وہ میں آپ کو چیک کر کے بتاتا ہوں, بٹ 13. ثبوت ہے 13 کی. 13 کا سر there is an order. There is an order. 13 کا. نہیں, ایک تو ہم نے خود دیکھا تھا آل مسلم لیگ والا جو تھا, آل پاکستان مسلم لیگ. Just place a copy of the order before your lordship. Where they are all being done by one order or 13 order? By one order. یہ آرڈر ہمیں دکھا دیں. جی سر. So 13 plus 1, all Pakistan Muslim League was separate to this, so it is included in the 13. My lord, this is not a case of all Pakistan Muslim League. وہ تو ہمیں پتا ہے کیونکہ وہ ہم نے خود ہی لکھا ہے پرسوں. اسی کے لکھا. Sorry, this is 12 plus 1 is that. These are the 12 parties. Your lordship will see they're all listed on page 1. Page 1? The very first page. This is the order dated. نام تو کسی کا نظر نہیں آ رہا ہے مجھے. If your lordship will see after the name of the parties, your lordship will see on commission's notice, Dr. Paul Jacob Bhatti, President Chairperson, All Pakistan. کچھ اور آپ نے ہمیں دے دیا, اس پہ کہاں لکھا ہے یہ باتیں؟ کیا دیا ہے؟ یہ کس چیز, یہ آرڈر کی بات کر رہے ہیں؟ جی سر, they order dated 4th of January 2024. ادھر کتنے پارٹیز کے نام؟ Sir, if your lordship see the heading on commission's notice, and then your lordship will see serial number 1 to 12. اچھا نہیں, یہ اچھا ابھی یہ کچھ اور گیا تھا. اچھا یہ والا ہے. اچھا اوکے, گاٹ اٹ. آل پاکستان تحریک, عوامی پارٹی, بہاولپور نیشنل پارٹی, سب کا پاکستان پارٹی, ان کو آپ نے اڑا دیا ہے. Yes, the discussion is in paragraph 24. نہیں ٹھیک ہے, وہ ہم آرڈر وہ ہم نہیں دیکھنا چاہتے کیونکہ کل کو ہو سکتا ہے ہمارے سامنے چیلنج ہو جائے. جی سر. ہم صرف یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ آپ نے وہ کیا اس کو کہتے ہیں ڈسکریمنیٹری ٹریٹمنٹ تو نہیں کیا ہے. جی, این پی کو پرابلم کی جو ڈیٹیل ججمنٹ ہمیں پرووائڈ کی گئی بیکاز آف دی لائر نوٹس سچویشن ان کے پی. The time was extended up to 10th of May of this year. انہوں نے ریفرنس کے لیے دے دیے ہمیں ابھی ججمنٹ. عوامی نیشنل پارٹی کو آپ نے ٹائم دے دیا کہ الیکشن بعد میں کرا لو. Sir, that order I have also just taken a look at. It was handed over, a copy was handed over to me. In that particular case, the outer limit of the statute to hold elections is 5 years. Those 5 years had not expired in their case, and they wanted an extension. اچھا, ان کا 5 سال نہیں ہوئے تھے. 5 سال جو سر اسٹیچوٹ میں آؤٹر لمٹ ہے وہ 5 سال نہیں ہوئے تھے. اس 5 سال کے اندر کی ان کو ایکسٹینشن دی گئی ہے. کاپی دے دوں. اچھا اوکے ٹھیک ہے, گاٹ اٹ. مائی لارڈ. Okay, what else do you want to say? My lord, a preliminary objection was raised by one of the learned counsel. Maintainability. Our respectful submission is that if this objection, first your lordship may see, file kitne koi file? Election Commission, please order it. If that in a number of cases the Election Commission has come before this honorable court, and we have prepared the list to show recently the number of cases which I have to move it. The Election Commission has come before this honorable court, and this honorable court has dealt with their matters. Your lordship saw that this has been happening way back since the case of Javed Hashmi. And your lordship will see these are all petitions of 2023 and 2022 which have been disposed of by your lordship's. Election Commission's petitions have been entertained under Article 185. 2 quick points on that. These are not reported judgments. No, my lords, insofar as we are aware, they are not. اور آپ نے ایک reported judgment بھی تو دیا تھا. جی سر, دو دیے تھے. کل دیے تھے نا آپ نے. جی سر. وہ تو لگے ہوئے آپ کی بک میں. جی سر. ہاں, وہ بھی لگے ہوئے ہیں. 2 unreported بھی دیے تھے, وہ علیحدہ سے دیے تھے, جس میں سے ایک اسی بینچ کا ججمنٹ ہے. سر, the short point to be made in that respect is
that this would mean, if this interpretation is accepted, it would mean that any declaration by the High Court with respect to the powers of the ECP would virtually be the final, and this honorable court would have no jurisdiction under Article 185. I'm not really persuaded by that argument, so you want to move on to something My lord, I will immediately then move on to the next one. The next argument was made with reference to the Tirmizi case. Our respectful submission is we had read out that passage of the judgment before your lordship. I need not read it again. That's in the bundle. They relied on Tirmizi. My lord, they have said that there is, once they had gone to Peshawar High Court, they did not have to go to Peshawar High Court again because the second order was a new cause of action which gave them the right to go to any court. Our submission based on Tirmizi is that in Tirmizi, this honorable court was dealing also with two orders, and this honorable court held that generally the principle of concurrent jurisdiction applied, but where you had elected... You read out that portion. Yes, my lord. The citation ki dobara batane. Yes, sir. This is, my lord, PLD 2008 Supreme Court 735. It is in volume 1 of your lordship's bundle. And relevant page was? Relevant page was, my lord, 760 to 761. And this is by what? How many judges? My lord, this is by 5 judges of this honorable court. PLD is a citation? PLD 2008 Supreme Court 735. At 760 and 1. The relevant 760, 761. This is tab number 6 of volume 1 of the bundle that I handed over, and the relevant portion is highlighted. My lord, from that, and we rely on that, and that's it, the rule of propriety applies, and therefore the High Court should not have gone into this matter without first attending to it and dealing with it. My lord, from there, we immediately, I have already given your lordship a chronology. We immediately move to the... What is the significance of the chronology? My lord, the chronology is just to facilitate your lordships to show what event took place on what date and where it is mentioned in these 3 paper books of your lordship. So that's just a facilitation. Agar if you don't agree with any item here, please let us know. ये जो दिया है document. जी, we have given. वो mark कर दीजिएगा. I don't agree. जी. So this is the chronology. My lord, insofar as the judgment of the Peshawar High Court is concerned, the argument now gets focused. Now we know the reasons. Yes, my lord. Your lordship knows the reason. You want to launch an attack, or you withdrawing the attack? No, my lord. My submission is based on this, that the submissions which your lordship have heard, in order to save your lordship's time, the portions that I am going to identify, I have already highlighted in yellow in this photocopy of the judgment and placed before your lordship. The controversy significantly narrows down. If your lordship will see, the findings of the court are there from page 6 onwards. If your lordship turns to page 7, at paragraph 9, the learned division bench of the High Court reproduces the facts in one paragraph, and paragraph 10 is important. The lordship said the petitioners have questioned the impugned orders on legal as well as factual premise. Page 7, my lord. The portions are highlighted. The facts are in paragraph 9. 7. The finding is in paragraph 10, and I just read out the highlighted portion in paragraph 10. We've read it. What do you want to say? My lord, I want to say that the High Court is saying that if so far as the facts before the commission are concerned, we will not go into that facts. So if ECP had jurisdiction in the matter, then we had no mandate to interfere in the said findings. So they are saying we'll accept the findings of fact as they are. We will not interfere. मुझे थोड़ा contradictory लग रहा है. My lord, is it my imagination or what is it? My lord,
in a sense it is, and I'll show to your lordship in a moment why it is, but may I say what they're saying over here, they are not engaging with any of the facts which were stated in the impugned order on the basis of which it was declared that they are not eligible to assemble. The High Court does not engage with any of the facts. They accept those as correct, and they say if the commission had jurisdiction, that's the end of the matter. My lord, your lordship may turn the page. Paragraph 11 on page 8, I have highlighted the relevant portion, and I move on, if your lordship may then move on to the next relevant paragraph, which appears on page 13. In the middle of the paragraph, they say that the case of Salahuddin Tirmizi is not applicable. I have shown to your lordship that it is, and how it is. What is the reason given? My lord, the reason they give is that the petition filed by Mr. Umar Aftab Dillo and others in the Lahore High Court, they do not at all engage with WP 81171, which was with respect to the first round. However, as shown by your lordship, that was a fact which was before them. जवाद हसन साहब की जो ऑर्डर है वो पिटीशन का क्या नंबर है? 287. That's the one they engage with. 287 पहले फाइल हुई थी या 287 is subsequent. What was earlier was 81171. They don't mention that at all. क्योंकि उन्होंने डिस्क्लोज तो किया अपनी पिटीशन. जी बिल्कुल डिस्क्लोज किया है, but under your according to your lordship's judgment in the Salahuddin Tirmizi's case, they were obliged to deal with that petition. नहीं तो वो समझे शायद एक ही पिटीशन थी लाहौर वाली, क्योंकि यहाँ अर्लियर इन टाइम था तो ये कंटिन्यूटी हो रही है. मगर अगर वो अपने ऑर्डर में तस्करा करते कि जी नहीं इससे भी पहले एक पिटीशन थी तो शायद उनका फैसला बदल जाता. Absolutely correct, my lord, and that was pointed out to them in oral submissions, and that was okay. वो अब आप देखिए ना, अगर आप ये कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट हुआ कि अगर आप पिटिशनर के वो जो ने पैराग्राफ 33 पढ़ा था उसमें रेट पिटिशन का उन्होंने नंबर नहीं दिया. That's correct, my lord. जज साहब सोच रहे होंगे कि ये एक ही पिटिशन है. Maybe. उनको ये नहीं पता था कि 3 पिटिशन थी लाहौर में. That's correct, my lord. That's correct. क्योंकि अगर वो नंबर दे देते तो फिर तो बात फिर कॉन्शियस डिसीजन हो गया. If I was a judge, I could have also committed the same mistake. ये तो हो गया क्योंकि ये पहले वाली इधर आए थे ये. I don't know, number उधर नहीं लिखा उधर. My lord, so far as my instructions are concerned, the counsel appearing for the Election Commission of Pakistan in his submissions had provided the number, but the record over here in terms of the judgment doesn't disclose it. My lord, if your lordship turns to page 18 now, the question is identified. In paragraph 19, the question is identified, and that's highlighted. The moot question whether the ECP has any jurisdiction to question, probe, and adjudicate the intra-party election dispute of procedural impropriety in the matter in the election process of a political party. Then the last 3 lines, the verbiage of section 208 does not authorize the ECP either to supervise the intra-party election or entertain any complaint regarding any irregularity in the said election. However, it is the command of the section 209 of the Election Act that a political party shall within 7 days from the completion of intra-party election submit a certificate signed by office. On submission of the aforesaid documents, it is the statutory duty of commission to publish the certificate. That's it. So they say we do not need to go. आपका कहना है कि certificate is a culmination of things. Yes. In fact, even things follow. उनका कहना है ये नहीं सर्टिफिकेट आ गया, आप हमारी इंटरनल मामलों में झांके मत. जी सर. Sir, if that were the case, then the ECP really has no power under 215(5) to take any action in any case at all, because all that is required is a certificate signed by the party that we have held an election and following are our office bearers. Whether the election has been held validly, constitutionally, in accordance with their constitution. एक सवाल रह गया. Sir. ये जो कंप्लेंट आपके पास आई 14 कंप्लेंट्स, My lord.
पहली दफा जो आपने नोटिस दिया था 2021 में, वो भी कंप्लेंट्स आई थी या वो आपने भेजा था कि इलेक्शन का टाइम हो गया है? Sir, we had very initially, we had वो 2021, very initially we had ourselves written to them without any complaints. Without any complaint. We had written. इस दफा कंप्लेंट्स आई? जी sir. We had डिफरेंट नेचर ऑफ कंप्लेंट्स आई हैं, वो कह रहे हैं कि हमें मौका नहीं दे रहे हैं. Sir, that's correct, sir. ठीक. So can you say there's a different list than the Lahore High Court, because the list in Lahore High Court pertained to not holding of elections and the list in Peshawar High Court pertains to not holding of proper elections. My lord, can you distinguish them or no? My lord, on the 2021 show cause notice, there was no list. They said, give us time, give us 1 year, we gave them 1 year. The list started with the order of the Election Commission of 23rd June, where on the basis of complaints and on its own findings, the Commission said that this 23rd June का order उन्होंने कहाँ challenge किया? उन्होंने वो order जो है वो लाहौर में challenge किया. That's WP 81171. जो 5 मेंबर बेंच सुनेगी, जो 5 मेंबर बेंच सुनेगी, पेंडिंग है अभी, वो पेंडिंग है. तो मुझे अगर कल वो अगर उसको मान लेते हैं, इनकी बात रिट अलाउ कर देते हैं, तो वो वाले जो लोग जीते थे कौन से इलेक्शन में 8 जून या 10 जून के जीते, जी तो फिर वो बन जाएंगे. जी सर, 10 June के, there is a confusion about dates, but 8 to 10 June. That's absolutely correct, because then the second order. 8 जून है, 10 जून है. 10 June. कभी 10 जून का है, कभी 8 जून. 8 जून का है. ये that's one of the discrepancies which the Election Commission also points out. नहीं, इनका आपका क्या है? 10 जून है, 8 जून, क्या मौके है? अली जफर साहब, वो वाला इलेक्शन 8 जून का है, 10 जून का है? 8 जून. मान लेते हैं 8 जून या नहीं? Sir, let's accept 8 June. That's correct. But if that election is held to be valid, then the second order of the Election Commission, which is now impugned before the Peshawar, which was impugned before the Peshawar High Court, cannot stand. If the Lahore High Court accepts that writ, this second order will fall. Either you take away the possibility, that possibility is a possibility. Yes, it is. Maybe not a probability, but it's a possibility. Yes, my lord. Yes, it is. So it is amounts to the same. Whether that's the test, I would imagine. I don't know. My lord, that's exactly the test, and that's the test as laid down in Tirmizi and as then the court said कि भाई अब तो ये infractions हो गया, अब इसको withdraw कर लो, तो उन्होंने कहा नहीं, आप इसको हम सुनेंगे 5 मेंबर बेंच प्लीज लगा दें. जी. क्योंकि वो लर्नर सिंगल जज सेड कि भाई इलेक्शन हो गए भाई, खत्म हो गया अब ये, या कर रहे हैं आप इलेक्शन जो भी, I don't know whatever the thing is. So they kept it pending. They kept it pending and they said, no, please send it to a bench or of 5 let's put it judges. the other way around. Suppose yes. Peshawar dismissed it. So Lahore allowed it. ये भी हो सकता है? Yes, my lord. अच्छा. In either event, the submission is that on the basis of Tirmizi, the Peshawar High Court, with great respect, had no jurisdiction. If your lordship will see page. अगर हम समझे कुछ आप हमें ज्यादा बातें बताएंगे जमहूरियत के मुतालिक. My lord, may I just finish my engagement with this particular judgment? The combined read, page 20, the combined reading of section 208, 209 and 215 does not give any impression that the ECP has any jurisdiction to question or adjudicate the intra-party election of a political party. My lord had observed that this is a judgment in rem. Yes. Or is it not? It is, my lord, because it is under Article 201 of the Constitution, it will bind the Election Commission because it is now declaring a finding of the High Court on a question of law. So it will act as a precedent. In view of this, the Election Commission now cannot go against this finding in any case at all. It will apply in every case. This effectively, elections are over. If we uphold the judgment. Yes, my lord. So they don't need to hold then 215 is redundant. Because, my lord, if the power under paragraph subsection 5 of 215 is taken away, then the Election Commission's authority to insist that intra-party elections be held and be held in accordance with the Constitution. That's the statutory language. In accordance with the Constitution of the political party. That is the language which is repeatedly used in 209,
208, 215. Next point. My lord, if your lordship may then please graciously look at page 25, and that's the last portion I am identifying. It has the right to contest election under a common symbol. This constitutional right cannot be denied to it on the basis of absurd provision of law. My lord, if Find that word very offensive. my lord, this honorable court and the High Court can either hold a law to be valid or a law to be invalid, being in violation of the Constitution. It cannot, without holding a law to be invalid, hold that the law is absurd. That means If it was striking it down, it could be held. yes, Maybe. yes, my lord, yes. Not very legal language, but okay, acceptable. So when they are not striking it down, not to follow it on the basis that it is absurd means that they have not found it in violation of the Constitution, because if they did, then they should have struck it down. Yes. But if they did not, then they have to follow it. The High Court has to apply the law then. It can't simply walk away from the law saying it's absurd. ठीक है, ये आप वो कह रहे हैं कि जो डिक्लेरेशन हमने नहीं मांगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो तो एक इनबिल्ट implied term है, उसका क्या कहेंगे आप? My lord, the submission is that even if they have not sought a declaration, in view of this reasoning of the Peshawar High Court now, what is left in subsection 5 of section 215? Can subsection 5 of 215 be applied in any case from now on till any time in the future? What's the answer? The answer is no. If the party has given a certificate that elections have been held, the Election Commission has no authority to examine whether the elections were in accordance with the constitution of the party or the law. The certificate of the chairman of the party or secretary general of party, whoever is the competent authority, will suffice. That will be the end. That would be the end of the authority of the Election Commission. The only way in which the Election Commission will be able to invalidate an election is if such a certificate is not given. एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही है, एक तो होता बाद में इलेक्शन शेड्यूल के बाद आप जल्दी जल्दी चीजें कर रहे थे, ये वो आपको ऑर्डर मिला और इंटरिम इंजंक्शन का उन्होंने ऑर्डर लिया या नहीं मिला? वो जो पेशावर वाली हाई कोर्ट का एक वो बता दें। और दूसरी बात ये है कि ये इतने अरसे से आप इनसे कह रहे हैं कि इलेक्शन करवा लें, तो क्या वजूहात हो सकती हैं कि इलेक्शन नहीं हो रहे थे? My lord, I mean, I know it's a realm of speculation. If you don't want to speculate, fine. My lord, I would hesitate from speculating. I would move away. Fine. My lord, our respectful submission in respect of these. ये साहब ये रोमन 3 में इन्होंने जाके फिर उसका इफेक्ट दे दिया खुद ही 215 का, ये क्या है फिर? Sir, our submission with respect is that is the inherent contradiction which my lord the Chief Justice was pointing out as well on page 26. If 215(5) is an absurd law, then how can a writ be issued strictly is entitled to the election symbol strictly in terms of sections 215 and 217 read with any other enabling provision of the Election Act? So if this is an absurd piece of legislation, if no action can be taken on the basis of this legislation by the ECP, what is the basis of the honorable judges of the High Court to issue a writ on the basis of that same absurd provision of law? Unless subsection 5 is struck down. Unless the provision has been. My lord, if subsection 5 had been struck down, then the scope of controversy before this honorable court and submissions would have been entirely different. But over here, the situation is that it is not struck down. It remains on the statute book. It remains as a valid piece of legislation on the statute book, but for all effects and purposes, it is made redundant. It is your lordship's consistent jurisprudence that no piece of legislation would be regarded as redundant. Your lordship can declare it as unconstitutional and therefore void, but your lordship cannot declare it as absurd and redundant.
That's the respectful submission. That's the line of distinction I draw between a provision of the law which is in violation of the Constitution and therefore for all practical purposes doesn't exist. Noted. And the one which exists, which has been made redundant. My Lord, those were all the submissions that we had to make. Did you find those orders or no? 11, 12, My Lord, one of the orders, it is page 302, part 2. जी My Lord, that is at page 302. Your Lordship will say interim relief notice for 19th. Meanwhile, the respondent ECP is directed to continue. Yes. Continue. The earlier petition continue with the proceedings pursuant to the impugned notice. However, no final order shall be passed against the petitioners. Then, if Your Lordship will see page 308. As the main case has already been fixed for hearing on 19th of December, therefore notice of CM be given to respondents for the date fixed. In the meanwhile, the petitioners are directed to appear before the Election Commission of Pakistan pursuant to the notice dated 8th of December 2023. However, the respondent shall not pass any adverse order against the petitioners. What were they required to appear for then? My Lord, just to attend the proceedings. So hear them out, don't pass any order. Okay. And if Your Lordship may turn to the next page, 309. ये challenge पे क्या किया था उन्होंने उसमें? Sir, this was the time with the show cause notice had been notice challenge की. Yes. There was no order of the commission. No, my Lord. At that, yes. So simple show was notice challenge की है. Your Lordship will see the notice is dated 12/12/2023. That is at page 576. Part 3. If Your Lordship has the chronology, it's on page 4 of the chronology. नहीं, हम actually देखना चाहते हैं. जी sir. It's at page 576, part 3. Sir, the page निकालो 596. ये चैलेंज की थी. जी सर. ये दिखा दें प्रेयर से कि यही चैलेंज किया था कुछ और. If Your Lordship may turn to the petition, that my Lord is there at page 585. The prayer clause at page 590. And the proceedings are being called into question. If Your Lordship will see. इस शोकॉज का तस्करा कहाँ है? ये तो कह रहे हमारा सर्टिफिकेट पब्लिश करें. My Lord, yes, and they are mentioning the proceedings before the ECP, and Your Lordship will see the first page of the petition. No, I don't think so, because if you see the date of the petition, this is 9/12/2023. My Lord, yes. Your notice is 12/12/2023. My Lord, yes. So I don't think this was under challenge. My Lord, this was 14/12/2023, page 585. Huh? 585. Ji. 585 में क्या दिखा रहे हैं? That is not the notice under. Yes, sir. That's not. The prayers are all there. 9th of December को इन्होंने फाइल की ना petition. If Your Lordship may, उन्होंने कहा कि आप हमें हमारा ये symbol दे दीजिए. If Your Lordship will see, they have thereafter filed a CMA, page 592. They have filed a CMA, which is at page 592. Application for interim relief. And Your Lordship will then see at page 594, page paragraph 5. ये इंडेक्स में लिखा हुआ है नोटिस इशूड बाय ईसीपी. यस माय लॉर्ड, यस इंडेक्स में भी है और फिर पेज 594 में पैराग्राफ 5 में भी अच्छा, ये इन्होंने अमेंड नहीं किया मगर they brought it on record. They brought it on record. Got it. And if Your Lordship will see 595, their prayer, they're asking for it to be suspended.
and impugned notice be suspended. That is added by hand. अमेंड नहीं करना चाहिए थी. My lord, it ought to have been, but that's- application 151. Yes, my lord. And it's mentioned in paragraph 5, the notice is mentioned in paragraph 8 again. Got it. My lord. So it's mentioned in 2 paragraphs. कुछ वो जो स्टे ऑर्डर्स वाले बेसिस मैंने देखा हाँ वो स्टे ऑर्डर्स में सीएम नंबर भी ऊपर लिखा हुआ है. ठीक. गुड सर. जस्ट फाइन. ये पहली पिटीशन किसने फाइल की थी? ये पेशावर में 5791. शख्स कौन था? दिखाना है फाइल. My lord, I'll just give it to your lordship in a minute. This is page 585. कौन बंदा था? Sir, it is page 585, Pakistan Tehreek Insaf. नहीं, वो शख्स कौन है? Muhammad, through its authorized person. वो कौन है authorized person? My lord, if your lordship will see, there is an affidavit with the application at page. Malik Anwar Taj. Malik Anwar Taj, unka affidavit laga hai 596, and he is also the petitioner number 3. इधर ना वो हैं क्या नाम है? उमर सेक्रेटरी जनरल इनके कौन है? उमर अयूब सर. इस वक्त तो उनके सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब थे या ये थे? नहीं सर, ये नहीं. मलिक अनवर ताज थे. No, Malik Anwar Taj, my lord, doesn't. He is, as your lordship will see, is vice president PTI KPK. ठीक. बस. My lord, that's it. Thank you very much. Anybody else? Everybody over. और बात तो नहीं है? Khan Saab, Ali, sorry, I think compliment goes to, first of all, Ali Zafar Saab and then Khan Saab and Mahdum Ali Khan Saab and Ahmed Hassan, we all argued very well. I wish you had not argued so well. Our job would have been easier. When the cases are very argued well, both sides, the job of the judge becomes more difficult. So now let us breathe and absorb and let's see. We'll have a discussion. Let's see what we come up with. Can't say anything yet. I have to have discussion with my colleagues. Thank you very much.